Hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. Or yes, it is back-to-back streams for people who by chance have missed a crazy stream we did. Yes, it was fun trivia session. Apna who am I? But for people out there, yes, we always do. We always do. So I'm hoping by everyone joins in. क्योंकि भाई दिस इज चेल्सी का मैच डे लाइव है. तो भाई सब लोग आ जाइए. जो लोग भी है, अगर कोई भी देख रहा है अभी, प्लीज लाइक द स्ट्रीम. अगर हो सके तो प्लीज शेयर इट so that more people come और हम ज्यादा मजे करें, because hoping that is a positive day for Chelsea. But it is not just a Chelsea match day live, it is a crazy day in football calendar. और यार जो fixtures बनाए हैं, कैसे बनाए हैं साथ में at the same time, it is not like the last day of the season. तो ऐसा क्यों किया है? They have Chelsea away to Aston Villa है ही, but Manchester United playing Newcastle, Arsenal playing Leeds away, as well as El Clasico होने वाला है शुरू just what within an hour. तो भाई this is crazy. हम discuss करेंगे literally everything as much as possible, but again I cannot thank everyone who's there right now, because that tells me भाई you are part of the almighty family. लेकिन more अगर आए तो भाई और भी मजा करेंगे absolutely. Okay, यहाँ पे let me see. Hello गौरव, कैसे हो? Nice to see you always. Okay, yeah, गौरव मतलब जम करते रहिए is what I would suggest. But again, मतलब much love to everyone, आप जानते ही हो. लेकिन यार सुपर संडे है, तो everyone wants to cover as much as possible content, because at the end of the day we all are running our channels. As much as I love everyone, absolutely भाई, आप जानते ही हो. तो आप शिफ्ट करिए. मे बी यार हम फॉर इंस्टेंस हम शुरू कर रहे हैं अभी चेल्सी के टॉक्स के साथ, लेकिन विल बी मूविंग ऑन टू द लाइनअप्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल. हम तो बेसिकली इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल, वी डिस्कस लिटरली एवरीथिंग. आप जानते ही हो गौरव. लेकिन बिग अप टू अंशुल एज वेल. हेलो अंकित, व्हाट फॉर्मेशन डू यू मेक ऑफ दिस लाइनअप? एब्सोल्युटली हम आएंगे. लेकिन भाई सबसे पहले प्लीज लाइक द स्ट्रीम. मैं देख रहा हूँ कि यार नोटिफिकेशन होपफुली आई होगी वापस से, क्योंकि आई नो आई एम गॉन फॉर लिटरली बैक टू बैक स्ट्रीम्स. इतना नहीं होता है रेगुलरली. जनरली आई गो वन ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस, लेकिन बिकॉज इट हैज अ चेल्सी गेम इंक्लूडेड इन द सुपर संडे, भाई आना ही था इस चैनल में. नहीं, डू यू एग्री एवरीवन? तो इसलिए हम आते हैं, बिकॉज एवरी मैच डे हम आते हैं. तो आई एम होपिंग दैट एवरीवन कम्स एंड जॉइन्स अस राइट नाउ. लेकिन हाँ, लेट मी जस्ट गेट मी अ सेकंड, और मैं यहाँ पे लाइनअप दिखाने वाला हूँ टू यू ऑल. ओके, लेट्स सी. ओके, चलो आ जाओ भाई सब लोग. यहाँ पर मैं शेयर करो लाइनअप चेल्सी की. ओ भाई साहब, दिस इज क्रेजी ब्रो. भाई पॉटर, इज ही द नेक्स्ट रनियरी छोड़े है प्रीमियर लीग, और टू गिव उसका अवतार टू पॉटर. आई डोंट नो व्हाट इज दिस, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस लाइनअप? यस, इट्स अ गुड क्वेश्चन. दिस इज द लाइनअप अगेन. मैंने शायद करेक्ट लाइनअप नहीं डाला है. हाँ, करेक्ट नहीं डाला है. और ऑफ कोर्स हम आएंगे दूसरे लाइनअप में, लेकिन लेट्स फोकस ऑन द चेल्सी लाइनअप एंड ऑफ कोर्स एस्टन विला लाइनअप अभी के लिए. बट वी हैड क्वेश्चनड कि भाई इन रीस जेम्स एब्सेंस कौन खेलेगा वो राइट विंग बैक या राइट बैक पोजीशन और राइट सेंटर बैक पोजीशन. यहां पर चालोबा हैज केप्ट हिज पोजीशन, और बहुत ही खुश हूं मैं. सच में आई एम रियली हैप्पी, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, एज मच एज चालोबा ही डज हैव अ मिस्टेक इन हिम, यू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स. और वो दिखाया है ही इज अ फॉरवर्ड प्लेइंग कैरेक्टर, और मुझे लगता है दैट इज एसेंशियल एज मच एज एस्पिलिक्वेटा आई लव एज वेल. तो आप लोग बोलिए वेदर दैट्स द राइट चॉइस, कंसीडरिंग कि यार रीस जेम्स नहीं है, एस्पिलिक्वेटा नॉट देयर इन द लाइनअप एट ऑल. वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, मैं सच में बोलूंगा. लेकिन लॉफ्टस चीक, दैट इज द आंसर. लॉफ्टस चीक जो, एंड ही हैज टू थैंक टूकल. अगर टूकल नहीं होते तो मे बी लॉफ्टस चीक आज के दिन में वुडंट हैव बीन प्लेड दैट पोजीशन. हु नोज दैट, राइट? आप लोग बताइए विद यू एग्री और नॉट. अंकित, नो नोटिफिकेशन. ओके जैक, अगेन आई डोंट नो व्हाई इट इज, बिकॉज आई डोंट नो, मे बी आई जस्ट वेंट literally, I went by back-to-back live streams, guy, no, Jack. Maybe that is why I think YouTube thought that okay, fine, it might be a mistake. But no, YouTube, please हमारे नोटिफिकेशन से क्यों बंद कर देते हैं यार सडन से? भाई सब लोग प्लीज, इफ एनीवन इन द चैट, एनीवन, इट वुड मीन अ लॉट. अगर इफ यू कैन जस्ट प्लीज गो एंड रीट्वीट. मैंने ट्वीट किया है बाय डिफॉल्ट, और उससे पहले भी ट्वीट किया विद द लिंक एंड एवरीथिंग. इफ यू कैन जस्ट रीट्वीट एंड आस्क पीपल टू कम, और शेयर इन योर स्टोरीज, शेयर इन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स. भाई सब लोग आ जाइए, स्पेशली चेल्सी फैंस. तो भाई कम ऑन, चेल्सी फैंस तो आना ही है यार, कम ऑन. आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ व्हाइल नाउ. तो एवरीवन, आई होप दे नो दैट हम करते हैं, प्री मैच करते हैं एज वेल एज वॉच अलोंग करते हैं. बट होपफुली यू गाइस कैन शेयर इट एज वेल. एंड यस, मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला है अभी मैंने इंस्टाग्राम में भी डाला है पोस्ट. इफ यू कैन गो एंड लाइक दैट, भाई ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम्स बताएंगे उन लोगों को, ठीक है? उतना कर दीजिए. और ये स्ट्रीम सबसे पहले लाइक करिए, सबसे पहले वो इस माउंट एंड कोवा टुगेदर. हाँ, ये वाला इंटरेस्टिंग पार्ट लगेगा मुझे, हाउ दे काइंड ऑफ फीचर. मुझे क्या लगता है ना, मतलब अगेन आई माइट बी रॉन्ग,
लेकिन मुझे लगता है इट ऑलमोस्ट माइट बी अ 3-3-3-1। मुझे लगता है 3 banks of 3। तो बहुत ही फ्लोटिंग फुटबॉल होने वाला है, फ्लूइड फुटबॉल होने वाला है। बट मैं बोलूंगा दैट इट माइट जस्ट बी अ 3-3-3-1। दैट माइट बी वन फॉर्मेशन। ठीक है, एक और आप सोच सकते हो, मे बी चालोबा इज राइट बैक। और हाँ, फॉर पीपल वंडरिंग कि मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, चालोबा ने ड्यूरिंग हिज एकेडमी डेज हैज प्लेड राइट बैक एज वेल। आई हैव लिटरली वॉच्ड एकेडमी गेम्स, अ लॉट ऑफ देम। उनका पोजीशन नहीं है राइट बैक, बट ही हैज प्लेड देयर। तो हु नोज दैट ट्रेनिंग में ही प्रॉब्ली पुट हिज हैंड अप कि नहीं भाई मैं खेलूंगा। नोइंग चालोबा आई वुडंट बी सरप्राइज्ड। और ऑफ कोर्स ही इज अ यंगस्टर, सो व्हाई नॉट यूज हिम एज वेल, जो होता है इन लॉट ऑफ टीम्स, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो भाई चिलवेल माइट बी योर लेफ्ट बैक, कुकुरिया माइट बी योर लेफ्ट सेंटर बैक। हाँ, इन अ बैक फोर कुकुरिया लेफ्ट सेंटर बैक क्वेश्चन मार्क है, तो इट कैन बी एन ऑप्शन। अब देखना पड़ेगा, मे बी इट इज लाइक हम अटैक जब करेंगे हम बैक फोर में जाएंगे, जब हम डिफेंड करेंगे हम बैक थ्री में जाएंगे। दैट माइट बी अ पॉसिबिलिटी। लेकिन अगेन टू स्टार्ट हम डिफेंसिव फॉर्मेशन डाले हैं, लुक्स लाइक अ 3-3-3-1 फॉर मी, विद माउंट प्लेइंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ कोवाचिच और he'll ट्रैक बैक जब भी when there's need, and same with Havertz। ठीक है, तो इट कैन बिकम अ 3-5-2 और अ 3-3-3-1, ये वाला फॉर्मेशन। आप लोग बताइए। एंड यस, Aston Villa is playing the tried and tested 4-3-3, but okay, options to the bench. Aston Villa के पास है Bundia on the bench, which is a good option. Dendonker is also a good option. Coutinho is on the bench, interesting है वो काफी। लेकिन हाँ, he's not been playing well after that permanent contract। लेकिन Armando Broja डिसअपॉइंटेड कि उसको स्टार्ट नहीं मिल रहा है, कंसिडरिंग मिडवीक गेम भी है। और वुड यू से नहीं यार, मे बी मिडवीक में उसको स्टार्ट मिले फाइनली। आई थिंक, सच में बोलूं, हैवर्ड शुरू करते आ रहे फॉर मी, इट्स प्रोबेबली नॉट ऑन मेरिट। सच में बोल रहा हूं मैं। I really feel Havertz, yes, he scored recently, लेकिन I don't think वो performance आ रही है उनसे। In fact, even Pulisic is doing better than Havertz in terms of performance, मैं बोलूंगा। Gallagher मेरे ख्याल से अनलकी आज नहीं शुरू कर रहे। Gallagher should have been in the pitch। I think ये काफी ज्यादा अटैकिंग हो जाएगी at times अगर Havertz cannot do his defensive work। Again, आप लोग बताइए। And again, people, okay, we have Shrey in the house। I don't know for how long Shrey is waiting। Let me get Shrey। अरे Shrey कैसे हो भाई? मतलब I don't know if I'm late। वेट कर रहे हो जब जस्ट 1 मिनट हुआ है वेटिंग करते हुए, एंड बिग अप टू द चैट एज वेल। लाइनअप में ज्यादा शॉक कर दिया है, बट ओवरऑल एक्साइटेड, बट अगर काम ना करे तो रैंट विल बी देयर एज वेल। Yeah. Acha, again, people, I would request everyone, including Shrey bhai, मतलब मैंने again a tweet has gone out. If you can just retweet that, or you can Yeah, like sure, the I'll do that. stream. I know it's a super Sunday, and I know that भाई हम तो basically गिनती में आते नहीं है कभी कभी, and that's a fact, that's the reality। लेकिन भाई reality ये भी है भाई, literally it's a fan channel for all to see, and I mean it, I don't just say it for the sake of it। और हम cover करने वाले हैं as much as possible everything, of course। When it especially comes to Chelsea, bhai, Shrey is in the house। MyKyle will be joining us as well, not for the pre-match, लेकिन at least for the watch-along। भाई वहां पर hopefully यार we can get the love that we probably I think we deserve। And yes, we are going to discuss other teams as well, don't worry about that everyone। भाई सब लोग like कर दीजिए, share कर दीजिए। Again, मैं shout out देना चाहूंगा Shrey FC को। Let's get him as well to 1,000 subscribers very soon। He deserves it more than me as well। चलो, यहाँ पे ICRSE राइट विंग बैक, एब्सोल्युटली भाई, स्टर्लिंग इज विंग बैक अकॉर्डिंग टू एडम न्यूसन। वही है, काफी ज्यादा थियरीज है, मतलब ही माइट बी विंग बैक, और इट माइट बी बेसिकली या एज इन हु नोज दैट हो सकता है दैट मुझे चिलवेल सरप्राइजिंगली 3-1-4-2 शेप लग रही है आज, 3-1-4-2। वही वापस से दिखाने वाला हूं मैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। देखिए, वी कैन से दैट इज 3-1-4-2, लेकिन मुझे क्या लगता है ना श्रेय, मैं यहाँ पे अपना 2 सेंस ऐड करता हूँ वापस। देखिए, Sterling as wing back, I doubt it। The reason I'm saying I doubt it is because we cannot have a Chilwell and a Kukurea both playing as center backs। ठीक है, वो इट बी टोटली आउट ऑफ प्लेस, तो वो तो नहीं लग रहा मुझे। और अगेन यू कैन से दैट चिलवेल माइट टक इन, ही माइट बिकम लेफ्ट सेंट्रल मिडफील्डर, हु नोस। बट लेकिन अगेन इन मिडल 4 or 5 आई डोंट सी हिम सेंट्रल मिडफील्ड। आई सी हिम एट बेस्ट इज अ 4-3-3 वाला सेंट्रल मिडफील्डर, जहां पर बर्ट्रेंड खेले थे इन द चैंपियंस लीग फाइनल। आई एम जस्ट सेइंग, अगर वर्स्ट केस में वाइल्ड आप सोचे तो दैट माइट बी अ थिंग। लेकिन सच में मुझे क्या लग रहा है श्रेय, देखिए, सिल्वा, कुकुरेया, चालोबा, दिस इज हाउ द लाइनअप इज गोइंग टू बी टू बिगिन विद। लेकिन आई थिंक जब हम अटैक करेंगे ना, तो आई फील वी माइट एक्चुअली गो विद चालोबा प्लेइंग एज समवन हु डिस्ट्रीब्यूट्स, क्योंकि चालोबा का एक्चुअली पास अच्छा है, फॉरवर्ड पासिंग। तो मे बी ही इज दैट गाय, दैट फ्री मैन ऑन द राइट हैंड साइड। तो हो सकता है ही माइट इन वेल अटैकिंग, ही माइट बी राइट बैक, और लॉफ्टस चीक माइट टक इन, तो थोड़ा सा, और दैट माइट बी द आउटलेट जो हम चाहते थे इन रीस जेम्स फॉर्मेट, आई नो। तो वी कैन गो फॉर द बैक विद कुकुरिया स्लॉटिंग इट एज सेंटर बैक व्हेन वी आर अटैकिंग। लेकिन डिफेंसिव फॉर्मेशन में आई थिंक दिस विल बी इट। हाँ, माउंट
Havertz दोनों will be right in front of Kovacic, and Sterling will be with Aubameyang is what I would suggest. So it's, you're right, as in a strange way it is I would say 3-3-2-2. क्या करेक्ट बोल रहा हूँ क्या? बहुत ज्यादा I wouldn't be कॉम्प्लिकेटेड. surprised where Ankit bhai, we have three at the back and Kovacic is playing as a DM type and Mount and Havertz are just playing beside him because I cannot see Havertz on wings because Havertz in wings में बहुत ineffective है. Like Havertz ज़्यादा run नहीं कर पाता, pace नहीं है इतनी Havertz की, मतलब pace है वो wings में नहीं दिखा पाता, वो explosiveness नहीं है एकदम जो wingers में चाहिए. मुझे इसलिए लग रहा है कहीं ना कहीं ये या तो वो भी हो सकती है जैसे आपने जो बोला, जो याद नहीं फर्स्ट मैच में थी सैल्जबर्ग के खिलाफ 3-3-3-1, जब जॉर्जिनियो ने सेट करा था, कोवाचिच लेफ्ट सेंटर मिडफील्डर था, माउंट राइट सेंटर मिडफील्डर था. यहाँ कुछ ऐसे भी हो सकता है कि माउंट लेफ्ट सेंटर मिडफील्डर हो, हावर्स राइट सेंटर मिडफील्डर हो और स्टर्लिंग ओबामेंग अप टॉप हो. तो इंटरेस्टिंग शेप है, मैच में मजा आएगा देखने में. ग्रैम पॉटर से यही हो रहा है, किसी मैच में 4 एट द बैक है, किसी में 3 एट द बैक है, किसी में 4 है, किसी में 3 है. और 3-3-3-1 जो वही मैंने बोला, मानव ने बोला और आपने भी एक्चुअली सेकंड किया है. आई बिलीव वो ब्राइटन में हम देख चुके हैं, ऐसा नहीं कि हमने नहीं देखा है, मतलब यू हैव सीन दैट इन ब्राइटन. तो आई वुड नॉट से इट्स टोटली आउट ऑफ द बुक. लेकिन अगेन मे बी यार जो एस्टन विला है 4-3-3 खेल रही है अपना ट्रेडिशनल, तो एक सरप्राइज वेपन लेकर आ रहे हैं तो ग्राम पॉटर अगेन येट अगेन. एंड कार्नी चुकुमे का डाबी, बिल्कुल भाई, ये तो हम बोल ही गए थे. थैंक्स डेरेन भाई, डेरेन को बिग अप, मानव को बिग अप भाई, सब लोग भी जुड़े, सब लोग को बिग अप एब्सोल्युटली. हेलो श्रेय, एब्सोल्युटली अंशुल भी, प्राइम मिनिस्टर हालैंड एंड एम्बापे और करंट रोनाल्डो. यहाँ पर मैं 4 करो, आप स्पैम मत करिए, बस इतना मैं बोल रहा हूँ. Much love to you again, bhai. Do not forget to like the stream. Do not forget to subscribe to both our channels as well as Shrey FC. Ankit bhai, I'm the only fan who wouldn't watch El Clasico because of Chelsea match. Yeah, bhai, therein आप अकेले नहीं हो. Trust me, I was always like that. लेकिन वही as a content creator sometimes you have to know, especially जब मैं claim करता हूँ it's a fan channel for all to see, मैं नाम के लिए नहीं कर सकता. तो I will be having an eye on it. लेकिन सच्चा यही है कि भाई चेल्सी में मेरी जान रहेगी, एंड श्रेय नोज इट एज वेल, एंड देयर इज नो टू वे अबाउट इट. टाइमिंग्स का ना, लाइक पहली बार प्रीमियर लीग के 6:30 बजे 4 मैच हो रहे लाइक लगातार, ये एक बहुत स्ट्रेंज चीज है. आई थिंक टाइमिंग एल क्लासिको के बेटर हो सकते थे. सिटी लिवरपूल 9 बजे है तो तब भी लोग लाइक एक लिवरपूल सिटी चल रहा है, एक एल क्लासिको चल रहा है. अगर एल क्लासिको 11:30 होती तो आई थिंक और भी ज्यादा मजा आता क्योंकि सारे सीक्वेंस में हो जाते. बट आपको सरप्राइज नहीं हो शेड्यूलिंग का कि 4 मैच संडे को लगातार? मैंने अरे ऐसे नहीं बेवकूफ देखा. शेड्यूलिंग है यार, बेवकूफ है लोग. मैं बोलूं द ओनली वर्ड फॉर आई थिंक प्रीमियर लीग एज वेल एज ला लीगा इज बेवकूफिज्म. यहाँ पर आपने सुना है एक नया वर्ड भाई, ये है. क्यों भाई लास्ट डे ऑफ द प्रीमियर लीग में क्यों होता है सब मैचेस? क्योंकि वो चीटिंग हो जाएगी ना, कि अगर एक टीम को पता है कि दूसरा मैच में क्या हो रहा है, एडवांटेज मिल जाएगा, इसलिए साथ में होता है. दैट इज द रीजन. आज के लिए या भाई इनको इनको पैसे चाहिए नहीं क्या? इनको टीवी व्यूअरशिप चाहिए नहीं? इट्स काइंड ऑफ वेरी वियर्ड फॉर मी, स्पेशली एल क्लासिको यार. मतलब आप, हाँ डेफिनेटली प्रीमियर लीग विल नॉट सी ला लीगा विल नॉट सी प्रीमियर लीग, लेकिन समवेयर डाउन द लाइन एल क्लासिको कैन नॉट बी इग्नोर्ड. इट कैन नॉट And बी. Ankit bhai, United Newcastle cannot be included. I've seen the lineup of both the या sides. It is a very good match. बहुत अच्छा मैच है. या अच्छा, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन. लेकिन श्रेय, आई हैव नो आंसर टू बी ऑनेस्ट. बेंच पर है, हमने देखा है एस्पिलिक्वेटा के लिए भी, जॉर्जिनियो के लिए भी. इज इट प्योर रोटेशन? दैट्स द ओनली आर्गुमेंट आई हैव, इफ एट ऑल एनी. बट लेकिन कुलीबाली खेला भी कितना है यार, क्यों चाहिए रोटेशन? आई थिंक मैं एक तरीके से समझ पाता अगर बैक 4 होती, क्योंकि बैक 4 में आप सिल्वा कुलीबाली को साथ में नहीं खिला सकते. बैक 3 में मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ अंकित भाई, लेकिन हमने सीजन के स्टार्ट में भी कहा था, शायद इसी चैट में कहा था कि अगर आपके पास एक 38 ईयर ओल्ड है और एक 32 ईयर ओल्ड है कुलीबाली में, आप सारे मैच नहीं खिला सकते. शायद सिल्वा ये मैच खेल रही है, पर ब्रेंटफोर्ड का मैच मुझे लगता है शायद कुलीबाली खेले. ये भी रोटेशन चल रही है क्योंकि हमारा संडे को मैच है, वेडनेसडे को मैच है, फिर शायद अंकित भाई मेरे को लगता है सैटरडे को मैच है, फिर ट्यूसडे को मैच है. तो सिल्वा अभी खेल रही है, मेरे ख्याल से वेडनेसडे को शायद वापस आ जाएंगे कूली वाले और सिल्वा रेस्ट करेंगे. तो रोटेशन चल रही है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सारों का खेलना पॉसिबल नहीं था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से. I don't know, हाँ, you can argue that, but at the same time, श्रेय, मतलब I know it's early in the season and it pains me to say it, और हम क्यों डिस्कस करें इतना? हाँ, पहले हम किक ऑफ के लिए टाइम है, इसलिए हम आराम से डिस्कस करें. अगेन पीपल जो भी ज्वाइन करें भाई, डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड. वील बी टॉकिंग अबाउट एल क्लासिको एज मच एज पॉसिबल, बट इवन मैनचेस्टर यूनाइटेड एज वेल एज आर्सेनल के गेम्स, तो बिल्कुल बने रहना. ऑफ कोर्स चेल्सी के और भी फैंस हैं तो और भी मजा आएगा, लेकिन एवरीवन इज वेलकम. यहाँ पर मैं एक चीज मैं देख रहा हूँ, यस, यहाँ पर मैं डेरेन का कमेंट देखा हूँ. बाय द वे, बिग अप टू हसीब भी, गौरव भी, थैंक्स अ लॉट. यस बिल्कुल, कुछ भी दीपक कोटवा इन द हाउस एज वेल. अरे थैंक्स यार, बहुत थैंक्स यार. लोन वुल्फ ऑलवेज, मतलब आई ऑलवेज वांट टू डू इट. Is changing the formation just a tactic to surprise the opponents, or does this tactic actually impact does this tactic, मैं सोचा dose दे रहे, impact the game at a much deeper level?
it's a bit of both, right, Shrey? Would you say with Potter, he's trying, मतलब knowing Potter, Brighton के साथ, as you said, he always had a very fluid system. ऐसा नहीं कोई fixed, मतलब if you ask me, Brighton played 3 at the back, 4 at the back, मुझे पता नहीं. It's a bit of both. और पता नहीं आपने सुना है कि स्पलेटी ने बोला है नापोली इज डूइंग मैडनेस ना यूरोप में, कि आज के दिन में ना फॉर्मेशंस आपके मन में, आपके दिमाग में बस. टुकल भी सेम चीज बोला करते थे, क्लॉप भी सेम चीज बोलते हैं हमेशा, दैट इट्स अबाउट नोइंग वेयर द स्पेसेस एंड नोइंग व्हेन टू अटैक दो स्पेसेस. और गेम हो गया ज्यादा फिजिकलिटी का आज के दिन में. स्किल्स इन द प्रीमियर लीग, यू नो दैट इज सेकेंडरी, फर्स्ट हो द फिजिकलिटी एंड द स्पेसेस. और वहां पर मे बी अ टीमो वनर फॉर इंस्टेंस यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ स्पेस, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे जब वो अटैक करे द राइट मोमेंट इन द प्रीमियर लीग. और वुड यू से इट्स लाइक द फैक्ट दैट मे बी एस्टन विला फॉर्म में नहीं है, इसलिए मे बी पॉटर ने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया आज. वुड दैट बी अ बिट टू मच ऑफ एन एरोगेंस? अंकल भाई कमेंट आई नीचे, ये बस मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा ब्रूनो गिमारेस का. तो आई थिंक मैंने अभी अपडेट देखी थी, वहां वो लाइनअप में थे, तो एक बार चेक करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है, अच्छा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है. पर लाइनअप ओके में थे ओके, तो मैं श्योर नहीं हूँ, या तो मैंने कहीं गलत सोर्स से देखा हो, तो है यार, उसका मैं लाइनअप में श्योर है, नहीं हूँ. लाइनअप में है. मैं वही कह रहा हूँ, लाइनअप में है ब्रूनो गिमारेस. Yeah. Anyway, we'll come to that. Just give me a second. लेकिन again, भाई, again, please like the stream. By the way, मिकाइल आप देख रहे हो तो मिकाइल का चैट था, मिकाइल को भी बिग अप यार, absolutely almighty, कोच अपना, कोच इन द हाउस. अरे आदरी, ये पता नहीं यार, कुछ लोग बोल रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं आ रही. श्रेय, आपको नहीं आ रहा है मेरे क्या पे आया था, नोटिफिकेशन? मेरे पे आया था आज का. हाँ, मतलब भाई आपने बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाया नहीं होगा, तो बेल नोटिफिकेशन आइकॉन फॉर एक बार करिए वापस से, बेल नोटिफिकेशन दबाइए आदरी, और उस पर सेलेक्ट फॉर ऑल नोटिफिकेशंस. वहां पर 3 ऑप्शंस आते हैं जहां तक मुझे याद है. यू गॉट टू सेलेक्ट फॉर ऑल नोटिफिकेशंस एंड सेम थिंग, प्लीज go for Shrey FCB. It will mean a lot if you can do that. Kepa starting more matches. Do you think Mendy is now number 2? 100%. Shrey, अभी तो डाउट नहीं है ना, हो so आई we थिंक can be कोई clear. डाउट नहीं अंकित भाई, बिकॉज आई थिंक शायद मंडी को इंजरी भी रॉन्ग टाइम पे आई. आई थिंक उसके बाद केपा बिकेम अ स्टार्टर, एंड आई थिंक केपा ने आपको दिया भी नहीं कुछ करने के लिए कि यू ड्रॉप हिम, स्पेशली जिस तरह मंडी की परफॉर्मेंसेस थी बिफोर ब्रेक. लाइक हम हर वक्त इस चैट पे आ रहे थे, बोल रहे थे मंडी वाई पास, स्वीपिंग एबिलिटीज ये है. यस, आई थिंक बोथ कीपर्स चेल्सी के फ्यूचर के लिए शायद नॉट गुड एनफ है अगर हमें सिटी लिवरपूल से compete करना है. पर राइट नाउ आई थिंक केपा अबव है, एंड ये अच्छी बात है. आई थिंक मंडी विल गेट अ बिट ऑफ रिएक्शन. शायद इसके बाद मंडी सिटी गेम में खेले जो कैराबा कप गेम में है, एंड इंस्टेंट परफॉर्मेंस दे, जिससे हमें और कंपटीशन मिले. बट राइट नाउ अंकित भाई जिस तरह ग्रैम पॉटर खिला रहे हैं, हर हर पोजीशन रोटेट करी है विजय गोलकीपर की. ही हैज रोटेटेड मोस्टली एवरी प्लेयर. गैलेगर खेले, प्यूलिसिच खेले, ब्रूहा खेले, ओबामेयांग खेले, स्टर्लिंग खेली है, लॉफ्टस चीक को चांस मिली है, मेंडी को चांस नहीं मिल रही. तो इट मींस दैट कहीं ना कहीं केपा इज द प्रेफर्ड वन फॉर ग्रैम पॉटर. या दैट्स द रियलिटी. और बाय द वे यार, मुझे कोई लोग ने डीएम भी किया था कि मैच कहाँ पे आ रहा है आज. लिटरली भाई कोई भी चैनल लगाओ, कोई ना कोई मैच आ रहा है. ये पहले बोलता हूँ, तो आपको बताना पड़ेगा चेल्सी वाला मैच जो आ रहा है. ये सब हम बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल और एल क्लासिको की, बट चेल्सी वाला मैच इंडिया में अगर आप हो तो स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट HD2. आई होप आई गॉट दैट राइट. स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट HD2. रिमेंबर दैट इज द चैनल आप बोल रहे हो. ऑफ कोर्स स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट HD SD में अलग है और HD में अलग है, तो आई थिंक वहां पर डिफरेंस है. आई थिंक SD में आर्सेनल आ रहा है और HD हाई डेफिनेशन में आ रहा है चेल्सी का मैच. ओके, इंटरेस्टिंग आदरी. बट अगेन आदरी, कोई कुछ लोग आ रहा है तो आई वुड सजेस्ट अगेन इफ यू कैन हिट दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन अगेन, और अगेन ऑल नोटिफिकेशन के लिए सिलेक्ट करिए. कोई नहीं, होता है कभी कभी. व्हेन यू प्लेड अगेंस्ट सिटी अवे लास्ट सीजन इन केपा वाज ऑसम दैट मोमेंट. अगेन माय ट्रस्ट ऑन केपा. ओके, लेकिन ये देखिए, डेरेन हैज अ पॉइंट, बट श्रेय, वुड इट आल्सो बी फेयर टू से, क्या चेल्सी लकी रही है इन पॉटर्स अर्ली स्टिंट विद अस प्लेइंग वोल्स, with us playing Crystal Palace? I know Milan, you can argue, but Milan जो इतने सारे इंजरीज के साथ थी, मतलब has Kepa been tested? In other words, enough. आई थिंक जितना मुझे याद है पैलेस के मैच में ही मेड अ वेरी गुड सेव, आई बिलीव. Yeah. पैलेस के मैच में ज्यादा टेस्ट नहीं हुए थे. उसके बाद हमने मिलान के साथ खेला. आई डोंट थिंक ही वाज टेस्टेड इन द फर्स्ट लेग. There was one moment जहाँ पर But लियाओ बीट it कर was an लिए easy थे save. It चालोबा was a को. pathetic miss by Krunic. It was a very easy save. And after that, Wolves, I think he only had to make one save, but that was not like acrobatic save. And then in Milan, he wasn't tested. Like that was like ease. But I think sometimes Ankit bhai, जो मैंने उसमें notice करी है केपा में, the things that I'm liking is the way he's commanding the box and the way he's sweeping ability. Wolves के साथ 2-3 बार हुआ था कि Wolves ने बॉल चेल्सी के डिफेंस के ऊपर मारी, like 40 यार्ड दूर था गोल से, केपा ने आके बॉल कलेक्ट कर ली,
2 टच लिए बॉल के और सीधा लेफ्ट बैक को दी। वहीं पे शायद मेंडी होते वो कहने के नर्व्स होके बॉल को ऊपर ही उछाल देते। तो ये भी एक डिफरेंस है जो केपा में दिखा है। कई बार सेव की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऐसे एडिसन भी है, अब जैसे एडिसन है, एडिसन शॉर्ट स्टॉपिंग में नॉट वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन उनकी जो स्वीपिंग एबिलिटी है वो मिडफील्डर से भी अच्छी होगी जो उनकी एबिलिटीज है। आई थिंक केपा की स्वीपिंग एबिलिटी मुझे दिखी अंकित भाई, जिससे मुझे लग रहा है कि वही कारण है कि शायद वो ऊपर है ऑन मेंडी, बिकॉज शॉर्ट स्टॉपिंग में तो मेंडी का मुकाबला नहीं है इन कंपैरिजन टू केपा। Yep, fair enough. अच्छा, बाय द वे मैं देख रहा हूँ अगेन यार, पीपल ड्रॉपिंग अगेन। मैं वापस से बोलना चाहूंगा, यस इट माइट नॉट साउंड राइट, लेकिन वही है, पता है हम बेसिकली वी आर अ स्मॉल प्लेयर, बट यार कोई नहीं। मच लव टू एवरीवन हु इज देयर, एवरी इंडिविजुअल हु इज देयर राइट नाउ। आई कैन नॉट थैंक यू नाउ बिकॉज आई नो दैट भाई देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट फॉर यू ऑल आउट देयर, और वो अच्छी बात है। मतलब लेट्स ग्रो द कम्युनिटी, और टॉकिंग अबाउट ग्रोइंग द कम्युनिटी, डू नॉट फॉरगेट द लाइक द बट स्ट्रीम, और डू सब्सक्राइब टू श्रेय एज वेल। लेकिन अगेन फॉर पीपल बीइंग देयर यार, भाई जो आते हैं 1 सेकंड के लिए आते हो चल जाते हैं, मुझे पता नहीं आप लोग आते क्यों। तो दैट इज वन थिंग आई वुड से, यस इट माइट साउंड रूड। तो भाई आइए, तो भाई आराम से बात करिए। वी आर अ फैन चैनल फॉर ऑलरेडी, जहां पर हम बातें करते हैं सब्सक्राइबर्स के साथ, एंड आई लिटरली टेक मोस्ट ऑफ द चैट्स फॉर अ रीजन। अगर मैं चाहूँ तो नहीं लूँ, आई कैन जस्ट वेट फॉर सुपर चैट, लेकिन नहीं करते ना, तो देयर इज अ रीजन फॉर इट। तो एवरीवन, आई होप वी कैन रेस्पेक्ट दैट फैक्ट, एंड यूर ऑल पार्ट ऑफ द ऑलमाइटी फैमिली। यहाँ पर ओके एक्चुअली जैसे गौरव बोल रहे हैं, जस्ट वायला इन द चैट एज वेल, ऑलवेज गुड टू सी जस्ट वायला। एंड अगेन यहाँ पर क्विक शाउट आउट देना चाहूंगा, ऑफ कोर्स very very sad news about Strip Bear. She has been with the channel from a long time, but unfortunately she lost her life. So I hope she rests in peace, and as in, I have no word for that. But again, great to always see Chelsea fans. I hope things don't go that way. But again, we'll talk about cricket as well on Almighty Sports Plus. We know that. अभी के लिए बहुत सारी बातें करने हैं यार, डेरेन कोई नहीं, टेंशन नहीं है। Okay, do you think we should give Silva contract? गौरव एक दो बार पूछ सके हैं। Meanwhile, I'll put the Manchester United वाला lineup and we'll come back to Chelsea. लेकिन श्रेय, please answer this question for me. I think we should, Ankit bhai, but also the thing is that I think 1 year contract is more than good enough. Like 1 year extension is more than good enough. 2-3 years की तो नहीं, because sadly as much as I love Silva and age matter नहीं करती है, लेकिन 1-2 years में it will start showing. Sadly 40 years में I don't think he will play at the level that he is now. As a leader we can keep him. I think that's the best thing. So I'll give him 1 year extension, but I think 2-3 years I don't think so that's right. 1 year I think will be fine for transition under Potter. Yep. अच्छा, we'll come back to Chelsea in just a couple of seconds, people. भाई यहाँ पे quickly again, मैंने आई थिंक डेरेन ने बोला था, किसने बोला था that we don't have Bruno Guimaraes. यार ये लाइनअप तो दिखा रही है Bruno Guimaraes. तो I'm assuming there was some misinformation somewhere in one of the websites आपने पढ़ा होगा, और मे बी ये वेबसाइट रॉन्ग है, आप बता दीजिए। लेकिन इंटरेस्टिंग यहाँ पर है, लॉन्ग स्टाफ खेल रहे हैं, तो आई थिंक अगेन देयर हैज बीन सम रोटेशन, यू कैन से, आई डोंट नो, लेकिन प्रीटी मच श्योर विलॉक नहीं न्यूकासल। खेल रहे, लॉन्ग स्टाफ खेलते हैं। मर्फी सरप्राइज है मेरे ख्याल से ना, मर्फी इंस्टेड ऑफ विलॉक। विलोक नहीं खेले, सॉरी, यस करेक्ट। तो लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड आल्सो नाउ प्लेइंग सैंचो नाउ, आर यू सरप्राइज रैशफोर्ड नहीं खेल रहा? आई एम सरप्राइज Man, क्योंकि सैंचो मोर राइट पे ज्यादा खेलता है, लाइक डॉर्टमंड डेज में भी। तो एक तो वो सरप्राइज करिए मुझे ना थोड़ा। अंकित भाई की जो लाइनअप है ना, लेफ्ट बैक पे से शॉ अच्छा तो खेल रही है, बट मलाशिया क्यों ड्रॉप है वो भी नहीं मुझे पता। लाइक मलाशिया क्यों वही नहीं खेल रही रोटेशन। है। भाई रोनाल्डो स्टार्टिंग, आई एम वेरी सरप्राइज। हाँ, बाय द वे आई मस्ट से, रोनाल्डो का कमबैक जब हुआ था मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, वी ऑल रिमेंबर ही स्कोर्ड दोस गोल्स अगेंस्ट न्यूकासल यूनाइटेड। सो देयर इज मे बी समथिंग कॉन्फिडेंस लेवल, जाकर बोले होंगे रोनाल्डो भाई कि लास्ट सीजन ऐसे ही मेरा सीजन पिकअप हुआ था, तो व्हाई नॉट टुडे। आई एम गेसिंग, आई एम जस्ट से डेविल्स एडवोकेट खेल रहा हूं उनके यहाँ पे। ऑप्शन भी नहीं थे। लाइक द प्रॉब्लम इज उनके मार्शल इंजर्ड है एंड रैशफोर्ड, आई थिंक चैट में कोई कह रहा है कि ही वाज अंडर द वेदर। तो अब वो भी नहीं पता, रैशफोर्ड फिट है, मार्शल की ओके, इंजरी प्रॉब्लम्स है। तो आई थिंक टू बी ऑनेस्ट ऑप्शन था उनके पास कोई स्ट्राइकर में और कोई खिलाने का। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता नहीं और कोई ऑप्शन था अंकित भाई। अच्छा, Eriksen is there as well. Acha, maybe that is why. That's interesting. But again, yeah, big up to Emma Hayes as well. Yeah, people like again, people when we are talking about a certain lineup, I hope that makes sense to kind of go with that. But big up to her again. मैंने इसके बारे में social post किया यार काफी। डेरेन आप पता नहीं, आप I'm not sure if you're on Twitter. Maybe that's why, maybe you don't know. But मैंने बहुत डिटेल में किया है. But big up to her. Hopefully she gets well soon, and that's we pray for that absolutely. Abhishek, 100% thanks Jaren for bringing it up. Thanks Ankit for the उम्मीद। भाई उम्मीद से ही कायम है यार दुनिया। हमें हमेशा याद रखना यार, हमें भी इस चैनल में उम्मीद है कि भाई बाकी जो 5000 500 लोग हैं आ जाए अभी साथ में, देखिए अपन चेल्सी का मजा आ जाएगा, बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। और वो कैसे होगा, आप लोग लाइक करिए तब होगा। और मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, सो दैट वी आर हैविंग मोर पीपल। यहाँ पर बत्ती चले गई मेरी, तो अब डरिए मत,
इट्स जस्ट अबाउट, यहाँ पर इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, जो बोलते हैं ना, प्रॉपर बाढ़ पड़ रही है. तो आई होप इंटरनेट इज स्टिल फाइन, और आप लोग सुन पा रहे हो ना श्रेय? इट्स फाइन. Yeah, absolutely, भाई, fully audible. ठीक है, परफेक्ट. तो आ जाएगा यार, आई हैव बैकअप, डोंट वरी अबाउट दैट पीपल. आई होप कि भाई मैच आ जाए, बस मैच नहीं मिस होनी चाहिए मेरी, दैट्स द मेन थिंग. लेकिन हाँ, हेलो टू मटाडा यूनाइटेड जस्ट वाला अभिषेक भाई, सब लोग लेट मी नो, जो भी लोग हैं अभी ज्वाइन किए हैं, लेट मी नो दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द चेल्सी लाइनअप. लेट्स गेट बैक टू दैट, बिकॉज मुझे लग रहा है ज्यादातर चेल्सी है चैट में. अगेन अगर न्यूट्रल्स आए तो वील टॉक अबाउट आर्सेनल एज वेल, इफ यू वुड लाइक अस टू. 100% हम आएंगे. लेकिन कमिंग बैक टू चेल्सी, यहाँ पर ऑपोजिशन की बात थोड़ी हो जाए यार श्रेय. हमने ऑपोजिशन वॉच थोड़ा नहीं किया है इन द प्रीव्यू. सो what do you think about this Aston Villa side? Like, you know, I know Gerrard is under tremendous pressure, but would you say that this is the game which might decide his future? Is it that difficult or nahi? Not yet. I think Ankit bhai, जिस तरह प्रीमियर लीग के फिक्चर्स ऑन द राउंड आ रहे हैं लाइक एवरी 3 डे, आई थिंक देयर इज नो बेनिफिट ऑफ सैकिंग हिम राइट नाउ. रिप्लेसमेंट भी विच इज अवेलेबल. आई थिंक कहीं ना कहीं कंटेक्स्ट भी चाहिए. द लाइनअप इज गुड, बट लुकस डीन भी इंजर्ड हो गए, डीगो कार्लोस भी इंजर्ड हो गए, तो उससे भी इनकी ऑलरेडी बैक फोर में प्रॉब्लम्स है. एशली यंग लेफ्ट पे खेल रहे हैं. इवन इफ वो कंपेटिबल है, एशली यंग इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट ही इज नॉट अ नेचुरल लेफ्ट बैक. लाइनअप अंकित में मैं ये कहूंगा, आई थिंक जेरार्ड के साथ वही हो रहा है जैसे मैंने उम्मीद करी थी. आप उनको ये नहीं समझ आ रहा मैं वॉटकिंस को खिलाऊं, मैं दुल्लो को साथ में खिलाऊं, मैं किसको बेंच पे रखूं. तो अटैकिंगली मिस बैलेंस इनकी टीम का सारा. तो आज अगर मैं देख रहा हूं, थोड़ा सा मैं सरप्राइज हूं अंकित भाई, क्योंकि कोटिन्यो नहीं है आज. या कुटिन्यो, देखिए मतलब कुटिन्यो यू कैन आर्ग्यू, लेकिन उसका फॉर्म एक्चुअली इतना बढ़िया भी नहीं रहा है ना आफ्टर ही साइन द परमानेंट डील. इनफैक्ट वो वॉटकिंस को ना बहुत फ्लोटिंग रोल में यूज कर रहे हैं, जहां तक मुझे मालूम है. इनफैक्ट मैं तो बोलना चाहूंगा दैट वॉटकिंस इन दैट फ्लोटिंग रोल माइट रियली यू नो मेक चालोबा और लॉफ्टस चीक सफर, अगर वो चाहे तो. क्योंकि अगेन जेकब रैमजे इज अ पर्सन जो आपको पता है बहुत ही स्ट्रीम्स में मैंने प्रशंसा की है. ऑनेस्ट डे ही कैन बी गुड. अगेन डगलस लुइस ने साइन किया है, याद रखिए कॉन्ट्रैक्ट, यू नो ही हैज एक्सटेंडेड. So that is something that maybe is in their minds कि यार they'll play everything through Douglas Lewis. Very underrated bowler as well in my opinion. तो honest day he can do. McGinn in form is different level. Bailey again बहुत ही bowler है. तो I think that front six cannot be taken lightly at all. But honestly speaking, they had options. Again उनके पास थे, ऐसा नहीं है. Bundia might come on, Dendonker might come on, Coutinho as Shrey बोल रहे. तो I think these are obviously options. लेकिन I think they've just gone with form. I think Leon Bailey looked sharper in recent matches compared to basically the other ones. लेकिन मिंग्स यार, हाँ आरवी, मतलब ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, मैं सोचा नहीं था ऐसा बोलूंगा. आर वी मिसिंग, मैं बोलने जा रहा हूँ, पीपल डोंट हेट मी फॉर इट. आर यू गोइंग टू मिस अ लुकाकू काइंड ऑफ अ फिगर अगेंस्ट एस्टन विला दैट वी हैड लास्ट सीजन? ओ माय गॉड, आई सेड इट. लास्ट सीजन याद है क्या था लुकाकू ने? I think Lukaku साइमन had मिंग्स को. 3 goals against Villa in 2 games. So Villa बहुत अच्छी opponent है Lukaku के लिए. But Ankit, I think we won't miss him because I think we have Aubameyang and Aubameyang can do the job as well. The only thing is I'm just surprised at the shape because if Havertz plays in number 10, I could be excited to see Havertz linking up the play. But overall, seeing Aston Villa's defense, I like if we go with the shape right now, I think you can say that it could be Havertz versus Ashley Young and the way the shape we are doing. So it's exciting the way we go. I still think that Havertz, Mount, Sterling, Aubameyang, the moment they will make inside the box, I think that could be not be enough for Aston Villa defense to handle. मुझे नहीं लगता Aston Villa की defense handle कर पाएगी. Havertz, Mount behind the runs कर रहे, Aubameyang अपनी movement कर रहे है, Sterling की dribbling. I think we should have enough to beat them. And seeing this defense, Ashley Young जो natural नहीं है, Matty Cash, Tyrone Mings and Konsa, I think we should be beating them comfortably. And if we don't, again negative start होने में time नहीं लगता. अच्छा, यहाँ पर ना बहुत लोग बोल रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं आया, तो आई हैव टू टेक दैट एज इट इज कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आई ओनली अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ यूट्यूब. वो घंटा अपोलोजाइज करेंगे, वो अलग बात है. तो यहाँ पर एक लर्निंग मेरी ये हुई है कि बैक टू बैक स्ट्रीम सेम चैनल में नहीं करने का. तो दैट इज द लर्निंग दैट आई हैव गॉट, क्योंकि आई हैव 2 चैनल्स. आई कुड हैव इजीली डन दिस ऑन अदर चैनल, लेकिन वही ऑलमाइटी ब्लूज में हम चेल्सी का नहीं करेंगे तो भाई लोग मुझे गाली देंगे. दैट्स द ओनली थिंग. लेकिन यहाँ पर हाउ एवरीवन कैन कम, आप लोग हेल्प कर सकते हो मेरा. कैसे कर सकते हो? इसलिए देखिए, नोटिफिकेशन एक जरिया है, वैसे 5 और जरिए है. तो आई हैव पोस्टेड इट, मैं हर एक स्ट्रीम का करता हूँ. श्रेय नोज इट एज वेल, श्रेय हेल्प्स मी एज वेल. भाई सब लोग, every particular stream, whenever I go live, I do a tweet automatically. If you can copy paste that link, ये link जो है just copy paste करिए और retweet करिए with that link as well added to it. So that will be absolutely brilliant. अगर आप ट्विटर में हो, that is Almighty Blues FC on Twitter.
I have posted it the link as it is on my community page on Almighty Blues FC. Community tab है, वहां पर जाकर लाइक कर दीजिए, 1 सेकंड लगेगा, प्लीज प्लीज इफ यू कैन डू दिस फॉर मी भाई। कम्युनिटी टैब में जो मैंने पोस्ट किया, श्रेय आप भी कर दीजिए अगर हो सके तो। इन यूट्यूब यू कैन सी माय कम्युनिटी टैब ऑन ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, वहां पर मैंने ऊपर ऊपर ये पोस्ट किया है। इफ यू कैन गो एंड लाइक दैट पर्टिकुलर पोस्ट, जितना ज्यादा लाइक होगा यूट्यूब बताएगा कि हम लाइक है ऑटोमेटिकली फॉर अदर्स। एंड आप अगर स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए और इंस्टाग्राम का भी पोस्ट लाइक कर दीजिए, टेक्स लिटरली 5 सेकंड्स फॉर दिस। तो ये यस, यूट्यूब हैज प्रॉब्लम्स, और आज का स्पेशली आई डोंट वांट टू मिस बिकॉज इट्स सुपर संडे, सो आई एम होपिंग टू बी फेयर टू मी एंड टू श्रेय एज वेल। भाई सब लोग आ जाइए, और वो आएगा भाई, ऑल योर हेल्प, इट्स अ टीम वर्क, कम ऑन भाई। बिग शाउट आउट एब्सोल्युटली टू एवरीवन हु इज इन अगेन। मैं बोल रहा हूं, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ। सिड इन द हाउस, नाइस टू सी सिड एज वेल। Sid, Just Viola, Darren, Football Creeks, Abhishek, Lone Wolf, Paritosh, Sudarshan, Matata United, भाई लूमैन, अनिकेत, भाई सब लोग को बिग शाउट आउट एब्सोल्युटली। डेरेन को शायद मैंने दी है ना, आदरी एज वेल, गौरव एज वेल। तो भाई सब लोग प्लीज प्लीज, जो मैंने रिक्वेस्ट किया इन द लास्ट 2 मिनट्स, अगर कर सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा। प्लस प्लीज सपोर्ट श्रेय। लेकिन यहाँ पर यस, देयर आर अ कपल ऑफ बार्सिलोना रियल मैड्रिड फैंस इन द चैट, हम उस पर भी आएंगे यार। उसका लाइनअप आ गया क्या एनीवन? लेट मी मैं जस्ट टाइम में 7:45 है ना मैच, आई थिंक आई एक थिंक आध नहीं, पहले है। रियल मैड्रिड हैव अ टेंडेंसी टू अनाउंस द लाइनअप अर्ली। अच्छा, ओके, अभी तक वेबसाइट पे तो नहीं आया है, बट होपफुली इन इंस्टा में आ गया होगा। कोई नहीं, विल वहां पर हम ज्यादा गेम को रिएक्ट करेंगे द सेकंड हाफ, प्लस विल लुक एट द लाइनअप अगर टाइम मिले पहले। ड्रेक हैज प्लेस्ड बेट ऑन बार्सा एंड लीड्स व्हिच मींस लीड्स एंड मैड्रिड विन। ओह माय गॉड भाई, लेकिन आज पता है श्रेय, आज बेसिकली स्पॉटिफाई ने जो ड्रेक का सिंबल है ना, वो डाला आज, बार्सा वो वाला जर्सी पहनने वाली आज। तो द हाँ आई फैक्ट थिंक इज, वो स्पॉटिफाई का। हाँ इसीलिए लोग बोल रहे हैं ना, वो थोड़ा कर्स हो गया, ड्रेक कर्स। भाई लेट मी टेल यू, टॉकिंग अबाउट ड्रेक, सो he if I'm not wrong, he is a Canadian, and he used to actually be in Toronto, and I've actually, not met him, but I've seen him in person. So I've got the opportunity to do that. Of course, he's a huge basketball fan as well. तो वहां पर मैंने आई वेंट वंस राइट टू वॉच द NBA. सो आज गेम लंबा चलेगा, मैन सिटी लिवरपूल का मैच खत्म होने तक। बिल्कुल, अगेन हम वॉच अलोंग तब तक करें न करें, डिपेंड्स ऑन यू गाइस। तो सब लोग भाई, ज्यादा लोग आएंगे तो मजा आएगा और साथ में देखेंगे। चलो, मैड्रिड लाइनअप इज आउट, मैं देखता हूँ एक सेकंड में, आई थिंक इंस्टा में आता है उनका, राइट गौरव? आई थिंक यस्टरडे प्राइम टाइम शुड हैव बीन न्यूकासल। हाँ यार श्रेय, नहीं, इसके वो हो बारे नहीं में सकता था, बताइए। वो हो नहीं सकता था क्योंकि सैडली यूनाइटेड का थर्सडे को यूरोपा लीग मैच था, बट चेल्सी विला का रख सकते थे। अच्छा, दे कुड हैव केप्ट चेल्सी विला, क्योंकि हमने आई थिंक अंकित भाई हमारा ट्यूसडे को था ना मिलान के साथ। हाँ मतलब वी कुड हैव, तो समझ नहीं आई मुझे, हमें और सिटी का नेक्स्ट वीक मैच नहीं है, लाइक हाँ सिटी लेकिन का। अवे अवे था ना भाई, अवे था ना, तो अवे में ट्रैवलिंग वो सब होता है, तो आई गेस पर मे अंकित बी भाई दैट्स जैसे व्हाई। सिटी है, लिवरपूल सिटी है, सिटी का नेक्स्ट वीक जो आर्सेनल के साथ मैच है वो पोस्टपोन हो गया क्योंकि आर्सेनल को पीएसवी के साथ मैच खेलना है यूरोपा लीग का। तो सिटी के पास नेक्स्ट वीक पूरी फ्री है, सो व्हाई हैव दे गॉट संडे, 4 दिन का रेस्ट मिला एंड देन नेक्स्ट वीक। सो शेड्यूलिंग तो मेरे दिमाग के ऊपर से निकलते हैं प्रीमियर लीग की। या आई डोंट नो यार, सच में बोलूं, मतलब ये कोई दो राय नहीं है। अगेन भाई, टॉटनम फैन हो तो भाई सॉरी भाई, टॉटनम घंटा जीती भाई इतने सालों में That प्रीमियर was लीग a में, bad इनको क्यों match, इतना देते हैं very bad इनको? match. बट व्हाई डू दे गिव प्रीमियर लीग एंड द मीडिया इतना इतना फुटेज क्यों देते हैं भाई टॉटनम को? एक चैंपियंस लीग फाइनल क्या पहुंच गई है, क्या उखाड़ लिया यार टॉटनम ने? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू केन, सॉन, यस वेरी गुड प्लेयर्स, लेकिन व्हाट हैव दे डन एज अ टीम? आई ऑलवेज, मैंने इतना गाली दिया होगा इतने सालों में, दैट जब भी अभी तो फिर भी चलो इंडिया में काफी डेवलपमेंट हो गई, देयर लॉट ऑफ चैनल्स यू कैन वॉच। देयर यूज्ड टू बी टाइम जहां पर एक ही मैच आता था, याद है श्रेय? और हम कोसते थे भाई, चेल्सी आर, मतलब you can argue in the last decade along with Man City, we are the, argue भी नहीं, we are the most successful side in the last एक टाइम decade. होता था जहाँ पे चेल्सी यूनाइटेड का 7:30 का स्लॉट रहता था इंडिया टाइम में और सिर्फ यूनाइटेड का मैच चल रहा होता था। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। श्रेय पुट द एकदम प्रॉपर आंसर दिया श्रेय ने। अरे श्रेय कैसे हो भाई? श्रेय सिंह, हाय टू श्रेय। भाई श्रेय भाई कहाँ हो यार? आप, आपसे बात करनी है श्रेय पाटिल भाई, आपसे बात करनी है। अगेन श्रेय, आप फ्री हो तो बताइए यार, अभी आ जाइए। विल बी ग्रेट टू हैव यू एज वेल ऑफ कोर्स। भाई बिग शाउट आउट आपको, एब्सोल्युटली। बारसा वर्सेस रियल, अंकित भैया, हाला मैड्रिड। चलो अंकित भाई कहने उसके क्या आपको लग नहीं रहा कि सबसे अच्छा मैच शायद लीज आर्सेनल का हो, सबसे एंटरटेनिंग? एंटरटेनिंग, या आई एग्री, आई एग्री। नहीं मुझे पता नहीं एक्चुअली क्यों लग रहा है चेल्सी 2-4 बोलूंगा यार मैं तो। 3-3 हो सकता है, लाइक लीड्स 2 आर्सेनल 4 3-3 ड्रॉ। लेकिन लीड्स का लास्ट गेम में क्या हुआ था, याद है? आई थिंक लास्ट गेम हारी थी, पर पहले से ये था, मेरे को जितना लग रहा है सिनिस्टर रेड कार्ड हो गया था ना, आई बिलीव शायद उस मैच में। हाँ लेकिन उनको मोर रिसेंटली इतना गोल्स नहीं स्कोर कर रहे लीड्स, अंदर दैट्स अ में चांस प्रॉब्लम। बहुत क्रिएट करते हैं, लाइक उस मैच में बैमफोर्ड ने चांस पोस्ट क्रिएट हिट करते करा हैं। था, देयर वाज अ इजी चांस, शुड हैव बीन 2-0 लीड्स और वहीं से मैच बदल जाता।
या हाँ भाई, लाइनअप आ गया यहाँ पे एल क्लासिको का भी। तो भाई वी हैव 15 मिनट अभी, विल कम बैक टू चेल्सी इन जस्ट अ मिनट। माउंट शुड हैव बीन देयर फॉर हैवर्ट्स, भाई गैलेगर शुड हैव बीन देयर। अभिषेक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? हाँ, बिफोर गोइंग टू द एल क्लासिको, भाई हमने गैलेगर की बात नहीं करी। श्रेय, व्हाट इज योर ओपिनियन? I know Jorginho playing week in week out is not possible. I understand Koulibaly playing week in week out versus Silva. Maybe he's given preference to Silva in the Premier League. But what about Gallagher? जो परफॉर्मेंस रही है उनकी लास्ट वीकेंड, वुड इट बी फेयर टू से नॉट स्टार्टिंग इन मिडवीक एज वेल एज नॉट स्टार्टिंग टुडे? आई थिंक इट्स प्रोबेबली सेइंग दैट गैलेगर, भाई रियलिटी ये है कि आप स्टार्ट नहीं कर रहे मैचेस में। आई थिंक अंकल भाई, बट यही है कि गैलेगर को फिर भी ज्यादा स्टार्ट्स मिले मेरे से सब्स्टिट्यूट अपीयरेंसेस मिला के इन कंपैरिजन टू पुलिसिच। मुझे ये लग रहा है अंकल भाई कहीं ना कहीं गैलेगर एंड शायद कंपटीशन है माउंट के बीच में, क्योंकि गैलेगर जो हमें प्रोवाइड करता है वो मेसन माउंट प्रोवाइड करता है एट अ मच बेटर लेवल। आई थिंक प्रॉब्लम है कि आपको ओबामेंग टीम में चाहिए, आपको स्टर्लिंग टीम में चाहिए, तो ऑलरेडी वन पोजीशन बचती है। आज जिस तरह हम फॉर्मेशन खिला रहे हैं, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हावर्स एक नंबर 10 की तरह रोल की तरह भी अपना निभा सकते हैं, क्रिएटिविटी प्ले बिटवीन द स्ट्राइकर एंड द मिडफील्ड। तो गैलेगर का मुझे लगता है कि शायद हम ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ देखें, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ओबामेयांग ने मिडवीक भी खेला है, स्टर्लिंग ने मिडवीक भी खेला है, तो शायद ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ हम शायद कोई स्टर्लिंग ओबामे को ना देखे, शायद हम ब्रोहा और गैलेगर को देखे। तो ये भी पॉसिबल है, बिकॉज ग्राहम पॉटर सरप्राइज पे सरप्राइज थ्रो कर रही है। एंड मुझे ये भी लग रहा है, अंकित भाई को याद है शायद मिलान में उनको फिर भी 45 मिनट्स मिले है, लाइक माउंट को सब्स्टिट्यूट किया गया था, तो हाँ हाँ, 45 मिनट्स एग्जैक्टली, मिले मे थे। बी वो ये 45 मिनट्स खेले। लेकिन मेरा पॉइंट अगेन, चैट आप भी बताइए। आई नो हम एल क्लासिको का मैं ओपन ही रखा हूँ यार, पीपल बारसा रियल फैंस डोंट मूव अवे, यहाँ ओनली बीच कॉन्वर्सेशन में थे ना। देखिए चैट, व्हाट आई वुड से क्विकली इज यहाँ पर आई टोटली डोंट अग्री विद पॉटर यहाँ पे। आई अग्री दैट 45 मिनट्स खेला है मिडवीक में, लास्ट वीकेंड भी आई थिंक ही प्लेड अ लॉट, ही स्टार्टेड। लेकिन भाई जो प्रीमियर लीग में लास्ट गेम में शुरू किए थे दोनों साथ में, गैलेगर और माउंट, इन माय ओपिनियन दैट वाज बेसिकली सेइंग समथिंग, दैट वाज वाव वाव वाला फैक्टर था कि मतलब ऑपोजिशन को एक भनक भी नहीं देनी थी यार। मतलब दैट इज व्हाट गैलेगर एंड माउंट टुगेदर डू। और मुझे थोड़ा सा सरप्राइज है। ओके, ये क्या है, माउंट फुली फाई? पता नहीं क्या बोल रहे इन। फुली माउंट शुड फिट हैव कह बीन रहे हैं वो देयर मेरे ख्याल फॉर। से, फुली फिट। ओके, इज माउंट फुली फिट? हाँ, नहीं नहीं तो नहीं खेलते यार। आई थिंक इट वाज अ प्रिकॉशनरी स्कैन बस। तो आई थिंक उनका रिपोर्ट्स नहीं आया, तो मतलब इट्स फुली फिट। पॉसिबल स्टार्ट फॉर जकारिया अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, स्टार्ट आई डाउट, बट लेट्स सी, विल टॉक अबाउट दैट परसों। अभिषेक, डेफिनेटली हम बात करेंगे। बट मीनवाइल लेट्स मूव जस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स टू द एल क्लासिको, क्योंकि ये इंटरेस्टिंगली एज ऑलवेज कार्लो एंचेलोटी, भाई डॉन कार्लो, अगेन चेल्सी फैंस है तो भाई थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आप बता सकते हो, तो डॉन कार्लो। लेकिन नॉट जस्ट दैट, वी नो रूडिगर इज देयर, और इज ही देयर ऑन द बेंच? यस, रूडिगर ऑन द बेंच। भाई श्रेय, आपने पता नहीं देखा कि नहीं, द वे रूडिगर गॉट इंजर्ड ब्रो, आई मस्ट टेल यू दिस गाय इज मेड ऑफ स्टील ब्रो, मतलब अलग ही लेवल है भाई। डिस्पाइट दैट ही वाज लाइक, क्या बोला मालूम है उसने कि यार आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल ugly, this is my face, is just a cut, nothing else. Big deal bro, as in that is what Rudiger said, and that is why you love Rudiger. But anyway, talking about the lineup, of course Courtois missing, which was expected. लेकिन लोनेन, I believe his distribution वो better है slightly than Courtois. Other things obviously Courtois is better, much better in fact. Carvajal, Militao, Alaba, and basically Mendy is what the back four will be look like. And then they have a Cruz, Modric, and Chouameni in a middle three. And ऊपर obviously they have a Valverde, Vinicius Junior, and Benzema. तो literally tried and tested ही गए वो लोग। Only थोड़ा सा सरप्राइज, यू कैन आर्ग्यू दैट मे बी रोड्रिगो डिजर्व अ चांस, लेकिन वैल्वर्डे भाई अलग ही टर्बो वैल्वर्डे में बोला हूँ। क्या लगता है यार, मतलब बेंजेमा इज नॉट लुकिंग एब्सोल्युटली मैच फिट, अब यू कैन आर्ग्यू दैट, बट विद बैलन डोर बीइंग टुमारो, क्या आज बेंजेमा स्कोर करेगा? दैट्स अ बिग क्वेश्चन यार, लेवेंडोव्स्की। आनंद भाई, ये स्टोरी हमेशा लिखी होती है जब बड़ी स्टोरीज को कल अवार्ड मिलने वाला है, स्कोरिंग इन द एल क्लासिको बेस्ट वे है अपनी बिफोर द गेटिंग द बिगेस्ट ट्रॉफी, आप एक ऑनर के वे में भाषण में गोल मारो और वर्ल्ड के खिलाफ स्टेटमेंट डालो। एंड वी नो बेंजेमा ने जैसे लास्ट ईयर का बड़ी गेम्स के लिए इज मेड अप ऑफ, वो शायद ऑन द मोस्ट नॉन इंपॉर्टेंट डेज पे शायद ना इतना स्टेप अप करे, पर बिग डेज पे स्टेप अप करेगा। एंड आई एम सॉरी बारसा फैंस अगर चैट में, लेकिन जो मैंने पीके और गार्शिया की डिफेंडिंग देखी अगेंस्ट इंटर मिलान, जहाँ पे लाउटूरो थे, आई थिंक द इंटर अटैक व्हिच इज गुड, जेको। बट अब आप बेंजेमा, विनीसियस जूनियर को खेल रहे हो और जेरार्ड और गार्श ने जिस तरह डिफेंडिंग करी, इफ यू इवन डू 50% ऑफ दैट डिफेंडिंग टुडे,
दिस कुड बी अ मैसेकर। तो डिफेंडिंग का मुझे अंकित भाई बहुत ज्यादा डर है लाइक बार्सिलोना का, इसलिए मुझे लगता है बेंजेमा विल हिट अ गोल। नहीं नहीं, आई वेट फॉर द बारसा लाइनअप। और यस बाय द वे, किसी को पता है कि बारसा लाइनअप इज आउट तो बता दीजिएगा। आई थिंक वो लोग भी ट्विटर में शेयर करते हैं जल्दी, फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर। बट हाँ, अभिषेक बोल रहे थे हाइप फॉर एल क्लासिको हैज डिक्लाइंड ड्रास्टिकली ओवर द इयर्स। I don't know, Abhishek. Matlab, if you are comparing it with maybe the Ronaldinho times when Messi has just burst out of the scene, matlab, हाँ, you can say that. If you're comparing, अगर जो Figo moved to Real Madrid, जो ड्रामा हुआ था, that particular first El Clasico में, then I agree with you. Of course, Messi versus Ronaldo also you can agree, but I think Lewandowski versus Benzema इज अ ह्यूज बैटल यार। मतलब आप सोचो, मतलब आज के दिन में वर्ल्ड फुटबॉल में इफ यू वांट टू पिक टू स्ट्राइकर्स इन द एंटायर वर्ल्ड, आई थिंक आई वुड आर्ग्यू दैट आई वुड रादर पिक दीज टू बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस देन हालैंड एंड केन, as much as Haaland will be the next big thing already, but I think Benzema or Lewandowski have proven more at the largest, the highest level. Would you agree, disagree, Shrey? I think right now, Ankit, I do agree with you because Benzema and Lewandowski have proven this at a higher level. लेकिन जैसे there is like 1 or 2 की जगह एज आएगी, आई थिंक कहीं ना कहीं आप कह सकते हो हालैंड राइट नाउ सबसे ज्यादा डेडली फिनिशर और आपको मोर कंसिस्टेंसी देगा। एंड हैरी केन इज अ पैकेज इन टू, क्रिएटिविटी भी है एंड फिनिशिंग भी है। बट आई एग्री विद यू, आई थिंक बड़े स्टेजेस पे जैसे हमने इंटर मिलान के खिलाफ देखा, लेवेंडोस्की स्कोरिंग द 2 goals, दैट इज व्हाट वी कॉल अ बिग गेम प्लेयर। लाइक वहीं पे स्टेप अप करना, लाइक हैरी केन का हमें एविडेंस नहीं है बड़ी गेम्स में, ही इज ऑलवेज गॉन मी एंड अगर हम जाए हालैंड पे, हालैंड की अभी तक सबसे बड़ी गेम थी अगेंस्ट यूनाइटेड टीम दैट इज फाइटिंग फॉर टॉप 4। हम अगर ऑनेस्टली बोले, ही हैज नॉट प्लेड एनी बिग गेम। इवन आज अगर उन्होंने गोल भी मारा, दैट इज अगेंस्ट लिवरपूल टीम जो टूटी पड़ी है एंड जहां पे थोड़ा चल रहा है, फैंस आर नॉट हैप्पी विद द मैनेजर, मैनेजर इज रियली एंग्री ऑन लेजेंड्स, तो कहने के वो सही नहीं चल रहा। तो हालैंड का मैं चैंपियंस लीग में देखूंगा अंकित भाई से, कैन लाइक बेंजेमा लास्ट ईयर जितवा सकता है सिटी को चैंपियंस लीग। तो मैं एग्री करता हूँ बेंजेमा लेवेंडोस्की के लेवल का अंकित भाई बिग गेम पे स्ट्राइकर कोई नहीं है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोगों को याद ही है भाई, लेवेंडोस्की ने बोला है बेंजेमा इज डेफिनेटली फेवरेट फॉर बैलन डोर, लेकिन अगर बैलन डोर कैंसिल नहीं किया जाए, व्हिच ऑब्वियसली इज अ पन बिग टाइम। लेकिन अभिषेक यार पूछ रहे वैल्वर्डे इज ही द बेस्ट मिडफील्डर राइट नाउ एज अ सेंट्रल मिडफील्डर। अभिषेक मैं लेना चाहूंगा श्रेय का ओपिनियन, उससे पहले मैं इफ आई कैन जस्ट ऐड 1 सेंट श्रेय यहाँ पर। देखिए वैल्वर्डे इज ब्रिलियंट एज अ सेंट्रल मिडफील्डर और वो खेलते भी है, लेकिन द फैक्ट दैट ही प्लेज almost like a pseudo winger when he kind of comes moves into spaces, he's that engine जो cover करते हैं for a lot of people, plus जो he's at the end of things। तो मैं नहीं बोलूंगा he plays like a central midfielder proper, और of course that is because of Real Madrid having a lot of options वहां पर। लेकिन I don't know, Shrey, मतलब would you say that Valverde, yeah, brilliant player, brilliant। मतलब मैं तो he reminds me of, कैसे मैं बोलूँ यार, मतलब he reminds me almost of a prime Michael Essien, bro, almost a prime Michael Essien। Again, मतलब I would still go with Michael Essien, not a bias, but he was like different level जब एकदम prime में थे, जब fit थे। But Valverde, the fact is he can play as a right winger who is capable of scoring goals, प्लस एक इंजन है। तो वुड यू सी कार्लो एंचेलोटी की भाई ही इवेंचुअली मूव हिम बैक टू मिडफील्ड और जस्ट लेट इट गो द वे इट इज गोइंग? आई थिंक कार्लो एंचेलोटी अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करते हैं स्टेज नेक्स्ट ईयर, तो उनके पास इससे भी बड़ी प्रॉब्लम होनी है, क्योंकि कामाविंगा, चुनेमी आपके साथ वेल्वर्डे और बेलिंगम ना, बेलिंगम एक है मैं कहूंगा अभी भी वेल्वर्डे से ऊपर है। लाइक वेल्वर्डे बहुत अच्छा खेले, आई एम टेकिंग नथिंग अवे, वेल्वर्डे हैज प्लेड सो वेल दिस ईयर, मजा है वेल्वर्डे को देख के। लाइक हिज डिफेंसिव क्वालिटी, हिज अवेयरनेस, लाइक he knows when to make a foul in the final area, उसकी finishing, even in the final we saw that cross। I think Valverde is a fantastic player who Ancelotti is taken to another level। हमने चेल्सी में देखा हुआ है कि कई बार एंचेलोटी के ऐसे प्लेयर्स को ऊपर लेके जाता है जिसको आप ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। सो बिग अप टू एंचेलोटी एज वेल, एंड वेल्वर्डे इज अ वेरी गुड यंग प्लेयर। लेकिन अगर बेलिंगम आएगा, एंड बेलिंगम जिस तरह मैंने खेलते हुए देखा, कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी एबिलिटीज है जो बेलिंगम के पास, वो शायद वेल्वर्डे के पास नहीं है। एंड अभी भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट मिडफील्डर जो अभी वर्ल्ड का यंग मैं कहूंगा एज के अकॉर्डिंग दैट इज बेलिंगम। लेकिन रियाल की प्रॉब्लम बढ़ेगी अंकित भाई, क्योंकि बेलिंगम शायद नेक्स्ट ईयर रियाल ही आ रही है। मैं एक और मुसियारा भी डाल दूंगा वहां पर एक्स चेल्सी मैन। लेकिन हाँ डेफिनेटली ऑल्दो पुष्पा हिट टीयर्स, ओह माय गॉड, आई एम श्योर, डोंट वरी, यू विल हैव अ गुड मैच। बारसा फैन भाई, क्विकली यहाँ पर आई नो जस्ट 5 मिनट्स लेफ्ट लिटरली श्रे, तो उससे पहले कि यार आई एम टू लेट, आई एम जस्ट वांटिंग टू शेयर आर्सेनल अवे टू लीड्स एज वेल। भाई एवरीवन गेट इन योर प्रेडिक्शंस। भाई हमने दिखाया है लाइनअप्स ऑफ एस्टन विला चेल्सी, तो एस्टन विला चेल्सी प्रेडिक्शंस
Manchester United, Newcastle, we have shown the lineup as well as the El Clasico, Real Madrid lineup. So let me know your predictions in the chat. लेकिन ये वाला श्रेय, what do you think leads Arsenal? अंकित मेरे को सरप्राइज करा है क्योंकि जब मैं लीज हासिल का प्रीव्यू बना रहा था वहां ये लिखा रहा था न्यूज आउटलेट से सिनिस्टर सस्पेंडेड है या उनका कार रिसेंड किया गया, मुझे नहीं पता, तो दैट्स अ सरप्राइज। बट ओवरऑल इट्स अ गुड लाइनअप एंड थोड़ा मैं दुखी हूँ बैमफोर्ड को ना देख के, बिकॉज एक टाइम पे बैमफोर्ड वाज एट अ वेरी गुड हाइट और बैमफोर्ड लीज के लिए स्टार्ट भी नहीं कर रहे, सो दैट्स अ बिट ऑफ सैडनेस। बट सिनिस्टर बहुत अच्छा खेले जब कोई लीज के लिए खेले है। हैरिसन, अंकित भाई, मैं अभी भी आर्सेनल फैंस के चैट में उनको यही बोलूंगा, हम पे लीज के मैच में यही सोच के गए थे लीज ओपन होगी, विल बीट देम 3 और 4-0। जिस तरह लीज उस दिन खेली थी, जो इंटेंसिटी थी, चेल्सी वर डिस्ट्रॉयड। वो 3-0 था, दैट कुड हैव बीन 7-0, 8-0। आप लाइटली नहीं ले सकते लीज को। अंकित भाई, अगर आपको याद होगा, एरनसन, हैरिसन, उस टाइम पे शायद रॉड्रिगो थे, और उस टाइम मेरे को याद नहीं एक और कौन सा प्लेयर था, जिस तरह उन्होंने इंटेंसिटी से हमें प्रेस करा, उन्होंने हमें बॉक्स से नहीं बाहर निकलने दिया। दे वर इंटेंसिटी एंड टायलर एडम्स ने उस दिन जो एनर्जी दिखाई मिडफील्ड पे, ही वाज एवरीवेयर ऑन द पिच। डैन जेम्स ही थे उस समय शायद। हाँ, डैन जेम्स एंड टाइलर एडम्स इनके डीएम थे। अंकित भाई, व्हाट अ परफॉर्मेंस दैट वाज। एंड अटैकिंगली दे हैव अ लॉट ऑफ पेस, लॉट ऑफ एनर्जी। हैरिसन इज अ फैंटास्टिक प्लेयर जिसको हम नोटिस नहीं करते। ही हैज गॉट अ ग्रेट फिनिश एंड अ ग्रेट क्रिएटिविटी एबिलिटी एज वेल। एंड रॉड्रिगो कुड हैव बीन वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर दिस सीजन अगर इंजर्ड ना होते। ही वाज ऑन दैट फॉर्म। तो अंकित भाई, मैं कहूंगा दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी मैच फॉर आर्सेनल। गोल्स होएंगे, बस ये है कि क्या आर्सेनल आउटस्कोर कर पाएगी लीड्स को, क्योंकि गोल्स तो है इस मैच में। ये 0-0, 1-1 नहीं होने वाला। अच्छा, तो चलो भाई, सब लोग आप भी प्रेडिक्ट कर लीजिए। एंड यस, बाय द वे, मेसी इज गुड इन द चैट। भाई हम एल क्लासिको भी डिस्कस किए थे फॉर फ्यू मिनट्स, विल कम बैक टू इट। वही आज बेसिकली सुपर संडे, भाई जो भी ऑर्गेनाइजर्स है उन्होंने बेसिकली पता नहीं क्या तो खा पी के किया था। तो वॉट एवर इट इज, हम ट्राई करेंगे टू काइंड ऑफ लुक एंड फील एवरीवेयर, लेकिन फोकस रहेगा चेल्सी पे। वी विल डेफिनेटली नॉट फॉरगेट एल क्लासिको, विल डेफिनेटली नॉट फॉरगेट मैनचेस्टर यूनाइटेड, न्यूकासल एंड लीड्स आर्सेनल भी। भाई मैं 2 मैच लगाने वाला हूँ। दूसरा मैच अभी तक शुरू नहीं है एल क्लासिको का, तो आई एम प्रीटी श्योर मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला लगाने वाला हूँ, बट चेल्सी का मेन रहेगा। एवरीवन जो भी इंडिया में देख रहे हैं, रिमेंबर भाई ये लाइनअप है, और सब लोग अपने प्रेडिक्शन बता दीजिए। एस्टन विला, चेल्सी, बेस्ड ऑन दिस लाइनअप। ऑल्सो इंडिया में देख रहे हैं उनके लिए ये बता रहा हूँ दैट द मैच इज कमिंग, आई थिंक स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट 1 में आ रहा है अपना मैनचेस्टर यूनाइटेड न्यूकासल, लेकिन मेन अपना जो एक्चुअल अपना है चेल्सी वाला अवे टू एस्टन विला, वो आ रहा है स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट 2 HD में, जो मैंने सब्सक्राइब होपफुली किया है। लेट मी जस्ट चेक। हाँ, कर दिया, चलो आ गया भाई। यस, दे आर एक्चुअली गोइंग टू द पिच। तो एवरीवन, स्कोर प्रेडिक्शंस, कम ऑन, गो फॉर इट। श्रेय, एस्टन विला चेल्सी। आई थिंक प्रॉब्लम ये है, चेल्सी गोल ज्यादा मारते नहीं है, बट आई कैन सी अस विनिंग दिस गेम 2-0। तो आई एम सेइंग एस्टन विला 0, चेल्सी 2, गोल्स फ्रॉम ओबामा, ब्लड एंड हावर्स। आई थिंक दैट्स गोना बी द वे हम आज खेलेंगे, एंड मुझे ये लगता है कि ओबामा एंड हावर्स गोल मारेंगे। आई थिंक एस्टन विला 0, चेल्सी 2 फॉर मी। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा, यहाँ पे फॉर वॉट एवर रीजन मैंने अपना टाइमर वाला बंद कर दिया है। भाई श्रेय, आप थोड़ा हैंडल करेंगे क्या चैट को? जस्ट अ सेकंड श्योर, पीपल, आई माइट हैव टू रिफ्रेश एंड कम बैक, तो गिव श्रेय सम सपोर्ट अगेन। भाई डू नॉट फॉरगेट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। लेकिन मैंने आई विल ट्राई दिस वे, अगर होता है तो ग्रेट है, अगर नहीं होता तो क्या कर सकते हैं। ओके, आई बिलीव मुझे करना पड़ेगा, आई हैव टू गो एंड कम बैक श्रेय। तो योर हियर राइट, मैं एंड नहीं कर रहा हूँ या स्ट्रीम, आई विल कम बैक, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो So I think for me it's going to be Aston Villa 0, Chelsea 2. A very exciting match. Please, people in the chat, do put your prediction in the comment section below. And Abhishek Bhai says goals from Mount and Cucurella, debut goal. Abhishek Bhai, Cucurella scores, that's going to be a big party, क्योंकि Cucurella ज्यादा गोल्स मारता नहीं है। ब्राइटन में Cucurella ने सिर्फ 1 गोल मारा है, तो ये एक्साइटिंग होगा। माउंट का मैं बिलीव कर सकता हूँ, लेकिन माउंट का यही है कि रिपोर्ट्स ये आई थी कि माउंट शायद नॉक कैरी कर रहे हैं, तो हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूट हो जाए, दैट वोंट बी अ सरप्राइज। तो दिस इज वाई माउंट को मैं शायद ना पिन अप करूं टू स्कोर द गोल, एंड कुकुरेला रेयरली स्कोर करते हैं, बट आई कैन सी कुकुरेला असिस्ट फ्रॉम द कॉर्नर। एंड डेरिन भाई सेज एस्टन विला 1, Chelsea 2. I hope it's not Villa 2, Chelsea 1. So Derin भाई says 2-1 to Chelsea. People do put a prediction in below the chat of United Newcastle as well, and Leeds Arsenal. For me today, sadly, if United fan in the chat, मुझे लगता है शायद न्यूकासल जीतेगी, तो वो एक एक्साइटिंग पार्ट है। एंड मुझे लगता है लीज आर्सेनल का 3-2 ड्रॉ होगा। अंकित भाई, आप बताइए उन दोनों मैच में आपकी क्या प्रेडिक्शन है? कौन से वाले में? यूनाइटेड न्यूकासल और लीज आर्सेनल। अरे आई जस्ट वांट यूनाइटेड टू लूज एंड आर्सेनल टू लूज, लेकिन एज ए न्यूट्रल, एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं बोल रहा हूँ, पुटिंग न्यूट्रल हैट्स ऑन। आई थिंक यूनाइटेड हैज न्यूकासल नंबर, एज मच एज न्यूकासल काफी इंप्रूव की है, लेकिन सीइंग द लाइनअप्स नाउ, मुझे लगता है देयर कैन बी अ ड्रॉ, इट विल बी अ स्कोर ड्रॉ इज व्हाट आई एम गोइंग विद।
और Leeds Arsenal, I would, as much as I hate to say it, I think Arsenal will get it. Leeds इतना goals नहीं score कर रही, and I think Arsenal will win it just about. लेकिन हाँ, Chelsea का I am going with Darren score as well. Absolutely, यहाँ पे is मतलब where आपको I'm लग रहा है going. विला गोल मारेगी आज? विला, हाँ, द रीजन बीइंग वही ना, अपना जो राइट फ्लैंक है ना, वहां पर इश्यू है मेरे लिए. आई स्टिल फील मैं कि यार एग्री करता जो हूँ। जेकब रैमजे और इंग्स और और वॉटकिंस जो फ्लोटिंग रोल। हाँ, फ्लोटिंग रोल है, वहां पर थोड़ा सा इश्यू होने वाला है, व्हाट आई वुड सजेस्ट. लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेट अभिषेक अप भाई सेइंग दिस. लीड्स विल विन टुडे। ओह, इंटरेस्टिंग. मतलब गुड गुड फॉर अस. हम चाहेंगे गैप कम होते जाए यार, लेकिन लग नहीं रहा है सच में बोलूं तो. अगेन, मैं रॉन्ग हूं तो ब्रिलियंट रहेगा. नथिंग लाइक इट. ओके, यहाँ पे कौन सा स्कोर डालू श्रेय? मैं डालने वाला हूँ, तीनों ही डाल एक देता तो हूँ नहीं. एक तो है एस्टन विला चेल्सी हाँ, तो विला विला एंड चेल्सी 0-0. एंड 0-0। देन वी हैव मैन यूनाइटेड जैसे न्यूकासल न्यूकैसल। और लीड्स आर्सेनल. ठीक है. हाँ, एक वैसे एक और मैच है वैसे, पर वो साउथहैम्पटन वेस्ट हैम का, बट टॉप के रिगार्डिंग हाँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। या बहुत आज आज के लिए बहुत हो गया यार. एल क्लासिको हाफ टाइम में बात करेंगे वापस से. विल कम टू दैट बिकॉज बाय द आई थिंक एल क्लासिको कितना 7:30 शुरू हो रहा है ना, किक ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड टाइम. 7:40 आई बिलीव, 45 शायद। ओके ओके. मैं चेक करता हूँ एक बार। 2-5. वाह, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग. चलो भाई सब लोग, मैच शुरू होने वाला है, तो अगेन इफ यू कैन लाइक द स्ट्रीम, हाँ, ब्रिलियंट. अगेन, 7:45 अंकित भाई, रियल अच्छा बारसा अच्छा, का। चलो कोई नहीं, विल कम बैक टू इट. भाई अगेन बिग रिक्वेस्ट है फॉर एवरीवन वाचिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू. सेकेंडली, हम साथ साथ में मस्ती करेंगे, इसलिए साथ साथ में देखते हैं. थर्डली भाई, सब लोग प्लीज प्लीज, इफ यू कैन अगेन गो एंड लाइक माय कम्युनिटी पोस्ट, गो एंड लाइक माय इंस्टाग्राम पोस्ट एज वेल एज माय ट्विटर पोस्ट. तो or do not forget to like the stream and subscribe to our channels as well as Shrey FC. Please do that. It'll take a minute before the game is starting, जो अभी शुरू होने ही वाला है. तो let me actually see if I can start on time. भाई मैंने टाइमर शुरू करना है. They're taking the knee. Shrey, what any comments here? You know what? Tony got it badly, bro. बहुत ही, मतलब ये सब करते फायदा नहीं हो रहा है यार, सच में बोले तो. आई एग्री अंकित भाई, क्योंकि आई थिंक अब थोड़ा, आई थिंक मैं भी एग्री नहीं करता, ज्यादा एक्सेसिव में लाइक बेनिफिट नहीं हो रहा। जैसे टोनी ने कल जो डाला था, वाज वेरी वेरी सैड। जो टोनी ने फ्राइडे को डाला था शायद, आई बिलीव फ्राइडे को मैच था ब्रेंटफोर्ड ब्राइटन Yeah. का। सो दैट वाज वेरी वेरी बैड। पर अंकित भाई, जो मौसम हो रहा है ना विला पार्क में, मुझे उस दिन की याद दिला रहा है जब कोविड टाइम पे चेल्सी ने विला को 2-1 हराया था, प्यूलिसिच और जिरू के टाइम। तो अच्छी फीलिंग आ रही है मौसम देख के। ओहो, ऑलरेडी टैकल कमिंग इन ब्रो. ऑलरेडी भाई. आपका आगे, ओ यार आपका फिर से आगे चल रहा है। हाँ, वो तो होगा यार, थोड़ा करना पड़ता है, क्या करे. लेकिन आई होप दैट ओके यार श्रेय. बिग अप टू यार, कोई नहीं. लेकिन अगेन मैं ट्राई करूंगा होल्ड करने की, अगर कुछ गोल वोल मेजर कुछ होता है. नहीं, लेकिन होल्ड ना करना, दैट इज अ गुड थिंग, लेकिन विला का गोल हो तो होल्ड कर लेना। गॉट इट गॉट इट. लेकिन यहाँ पे पहले ही फ्री किक दे दिया भाई. डगलस लुइस सेट पीसेस में अच्छे, जैसे आई थिंक अभिषेक ने बोला था, जहां तक मुझे याद है. और वी आर गिविंग द बॉल अवे फर्स्ट सेकंड में. क्लियरेंस हुआ यार, व्हाट इज दिस? ऑलमोस्ट अ गोल लाइन क्लियरेंस फ्रॉम चेल्सी. कौन था भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? और केपा विद अ सेव. हु वाज इट? कोवाचिच विद अ क्लियरेंस. ओह मैन, क्या पैनिक स्टार्ट यार. भाई सेट पीसेस में वी हैव नॉट इंप्रूव्ड वन वन ब्रो. एक पॉइंट है. लॉफ्टर-चीक इज नॉट अ लैम्पार्ड राइट के बैक. टाइम, आई थिंक एंथनी बैरो के टाइम हम इंप्रूव करें, पर फिर से हम वापस आ गए जो हम पहले करते थे। हाँ, कौन था यार वो? कोवाचिच लगा मुझे क्लियर क्लियर करने वाला, जो क्लियर किया. लेट मी नो इन द चैट पीपल. आर्सेनल भाई अच्छा खेलेगी. आर्सेनल, दे आर इन फॉर्म. एज मच एज आई हेट टू से इट भाई, आर्सेनल जीतेगी. गोट्स ऑफ फुटबॉल, बिग अप. और अगेन लाइक करना मत भूलना एवरीवन. माय गॉड, व्हाट आर वी डूइंग? कौन किया था वो क्लियरेंस? कोवाचिच मतलब क्लियरेंस नहीं थी, सीधा उनके प्लेयर के पास जा रही थी। टैपिंग था मेरे ख्याल से वॉटकिंस के लिए। ओ मैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरसेप्शन भाई कोवाचिच. इवन केपा यार, मतलब ही सेव नहीं बोलोगे, लेकिन आई थिंक वो भी एक चांस बोल सकते हो, दो रिबाउंड. ओके भाई, बैक थ्री है. बैक थ्री है। बैक थ्री है, लेकिन लॉफ्टर चिक टक कर रहे हैं. और आई थिंक न्यूसन करेक्ट है यार. स्टर्लिंग प्लेइंग एज द राइट विंग बैक. हो. स्टर्लिंग प्लेइंग द राइट साइडेड आज ट्रोसार्ड. आई थिंक मैं ग्रैहम पॉटर की एक बात बोलूंगा, लाइक जैसे एफपीएल ओनर्स है ना, दे हेट पेप गार्डियोला। दे स्टर्लिंग गोना टेकिंग हेट थ्रो ग्रैहम इन्स. पॉटर। स्टर्लिंग टेकिंग थ्रो इन्स. इज इट फॉर रियल? भाई ये क्या हो रहा है? ये मैं डिसएग्री करता हूँ यार भाई. स्टर्लिंग
और भी मौका पड़ जाएगा ऑपोजिशन को बोलते हुए, क्योंकि वो लोग देखेंगे है नहीं चेल्सी का मैच, अब बोल देंगे भाई स्टर्लिंग क्या कर रहा है चेल्सी में, गोल्स ही स्कोर कर रहा है। आप थ्रो इन्स लोगे तो आप स्कोर करोगे गोल्स? सीरियसली, ही शुड बी द एंड ऑफ थिंग्स ब्रो। I don't agree with that. People like let me know. I know as much as Potter try कर रहे हैं, good that we are flexible, rigid नहीं है, बहुत अच्छा लगता है वो। वो एक मेन क्रिटिसिज्म थी अबाउट टूकल टुवर्ड्स द एंड। लेकिन भाई मिंग्स विद अ हॉलीवुड पास, भाई बिल्कुल ही ज्यादा हॉलीवुड हो गया, क्योंकि यहाँ पे केपा वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। यार ये ऑलरेडी यार विन परसेंटेज, ड्रॉप परसेंटेज और विन परसेंटेज क्यों दिखा रहे यार स्क्रीन पे? समझ मतलब नहीं आ रही जबरदस्ती ये क्यों दिखा रहे? कैलकुलेट कैसे करते हैं? वो अभी लिटरली 1 मिनट हुआ, अभी कहाँ कहाँ से करेंगे? कोई नहीं, कोई नहीं, होता है। अरे लेट मी सी इफ ओके, मैं तो मिकाइल को मैसेज कर रहा हूँ, मिकाइल माइट बी एबल टू जॉइन अस मिडवे थ्रू होपफुली। लेकिन एनीवे हम तो मैच देखेंगे भाई सब लोग। क्या लग रहा है यार जो सिस्टम खेल रहे हैं ना, व्हाट डू यू अग्री और डिसअग्री? डू लेट मी नो इन द चैट व्हेन यू गेट अ टाइम। स्टर्लिंग डूइंग मोर डिफेंसिव वर्क ऑलरेडी बट केपा हैड डन along with वेरी वेल Loftus। देयर अंकित भाई, स्केरी सिचुएशन थी थोड़ी, अगर थोड़ा उल्टा नीचे हो जाता रेड कार्ड कुड बीन हैपेंड, तो अच्छा करा केपा ने, आई बिलीव दैट। हाँ केपा ने अच्छा किया। वो है मतलब कॉन्फिडेंस आ गया वापस, यू कैन से, आई नो। पर वैसे एक चीज मैं बोलूंगा अंकित भाई, वैसे प्लेयर्स की जिसमें बात करता हूँ, रिस्क क्यों लेते हैं? लाइक अपनी बॉडी लेके आना, क्लियर ही कर दो, वैसे जस्ट रिस्क क्यों लेना वहां पे उस सिचुएशन में? जब हम नहीं वो फुटबॉल देखते थे ना 10 साल पहले, प्लेयर क्लियर कर देते फिलॉसफी थे, ऑफ द जब हम, हाँ। फिलॉसफी होता है ना, टोटल ओवरऑल फिलॉसफी। तो देखो इधर, अरे मिकाइल कैसे हो यार? बिग अप। Morning, boys. Morning. Trey, Ankit. अब द चेल्स पिकअप। अर्ली गुड, वेरी अर्ली भाई, मतलब एवरीवन मिकाइल ओपी हो जाए इन द चैट भाई। सुबह सुबह है, आई नो हम वहां भी, मैं भी हमेशा था तो मैं उठता तो था ही मैच के लिए, लेकिन कमिंग लाइव ऑन इन एट दैट अर्ली आवर, तो हैट्स ऑफ टू मिकाइल, एब्सोल्युटली। तो मच अप्रिशिएटेड ब्रो। Up the Chels, up the Chels. What's the match clock, boys? The Sterling is playing right wing back. We thought it would be Loftus Cheek, but it's a combination of Loftus Cheek and Sterling. Like Sterling खेल रहा है right wing back, Loftus Cheek खेल रहा है right central midfielder. So they are kind of wanting to cover that Watkins area जो एक free role है. लेकिन already I think पहले ही minutes में I believe Kovacic had an interception which was going to a goal and Kepa ने एक अच्छा save नहीं बोलोगे, लेकिन एक अच्छा kind of decision make किया, otherwise we would have been in trouble. So what's our there midfield is then? It's Kova, Loftus-Cheek. Loftus Cheek It's a and four. Kovacic basically. It's a four in midfield. हाँ वो three, it's a 3-4-3 3-4-3 looks like. तो माउंट हैवर्ट्स एंड अपने माउंट अभी तक दिखे ही नहीं गेम में, वो अलग चीज है। Mount Havas and Obama, but Mount, Ankit, Mount is really going through the middle, like in some situations. हाँ तो अरे माउंट गोल! He has scored. Talk about Mount, he scored bro, sorry I No know way. that भाई आप लोग लाइक कर रहे हो, man what a goal। and टायरन मिंग्स करता है हगना बोलते हैं टायरन मिंग्स को, और वापस से मिस्टेक हुआ, एयर बॉल खेला भाई, कहीं छक्का मारे थे लेकिन छक्का गया नहीं, it came directly to Mount who was aware, who was alert। and yes, we just spoke about Mount ki Mount hasn't been seen। I have to take my words back, man। Chilwell, beautiful play by Chilwell, beautiful। मतलब he played almost like an Ashley Cole of the yesteryears bro in that moment। I hope Aubameyang wasn't involved anyway, अगर offside भी हो तो भाई definitely goal है। Tyrone Mings, thank you for that Yeah. back pass, trying Oh the my header। God, Tyrone Mings, my God. वापस से but you have to give it to Mount यार, alert, वो बोलते हैं ना, fox in the box, Love it. you have to give it to। Love it, love, बहुत, like Mount was fantastic, but Tyrone Mings, thank you so much. What is it with Tyrone Mings and Chelsea? I don't know। मतलब hopefully he doesn't come back and he screws up। लेकिन कोई नहीं। अरे शाम को बिग अप एब्सोल्युटली। मेरी टीम कितने गोल खाएंगे यार शाम? मैंने तो प्रेडिक्ट किया है कि यार आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बारसा will come back stronger, or I have predicted like it might be a score draw, but I would not be surprised going by what Madrid is भाई to get that win yet again। लेकिन हाँ सैंटियागो बने पे हमें लास्ट टाइम अपने को याद ही है शाम, so I would say that it might be closer than ever because it's for me it's a 6 pointer। Big. मिंग्स भाई ऑलरेडी जीब मुंह से बाहर निकलते वो मींस it's not his day, it's not मिंग्स डे। पता लग गया। Yeah, 18-year-old, oh wow, 18 years ago today Messi had made his Barca debut today, okay,
important for Barca fans, I suppose. But कोई नहीं यार, everyone, भाई क्या लग रहा है? Did I criticize too early about Sterling playing right wing back? I don't know, man. I'm seeing a back and forth end to end. ठीक है, हमने गोल कर लिया, लेकिन we have to stay alert on the other side. अच्छा, और एक और चीज मैंने ऑलरेडी नोटिस कर दिया मिकाइल और श्रेय कि when we are defending, we are going a back four. I can see that Chalobah playing almost like a right back when you're defending. अच्छा, तो Chilwell is coming back or he's coming as a back four. लेकिन oh my god, terrible news. ना Looks कर like भाई टायरन मिंग्स को दे दो रेड, भाई रेड दे दो प्लीज. टायरन What has मिंग्स इज happened? प्लेइंग, आई डोंट नो क्या खेल रहा है भाई, वो अखाड़े में आया है क्या? ज्यादा बोल दिया नो रेड, लेकिन माउंट को लगा Terrible यार news क्या? चेहरे Injury पे. है कोई? You were आई saying होप, terrible news. हाँ इंजरी लगी मुझे, रुका हुआ है मैच अभी. भाई चिलवेल मैन, people let me know, people in the chat, सब लोग भाई, सब लोग, why does Chilwell not get the kind of praise he deserves attacking wise? I understand defensive wise Kukurea is better, lekin Mikhail, don't you think when we want to attack Chilwell, especially with Reece James being out, I would say he's almost like a surety in the team. Yeah, you have to love it. Everybody brings something different. Chilwell, I think, still isn't 100% back from his injury. Yeah. So going forward is a little better for him compared to his Correct. own defending effort right now. But Cucurella is a different energy completely. So it's not almost like not a fair comparison in that sense. But Chilwell, Yeah. I think defensively will ramp up his game in the weeks to come. Absolutely, but कोई नहीं. Meanwhile बाकी गेम्स में मैं I'll just keep a check on the score. मैंने एक्चुअली एक्साइटमेंट में एज ऑलवेज नथिंग न्यू, व्हेन चेल्सी मैच कम्स मैं पूरी दुनिया भूल जाता हूँ. आई फॉरगॉट दैट आई एम एक्चुअली क्रिएटिंग कंटेंट एज वेल साथ साथ में. तो मैं आई विल जस्ट स्टार्ट द मैनचेस्टर मैच ऑन माय डिवाइस. मैंने स्कोर लगा के दे रखा था, बट कोई नहीं, वहाँ हुआ नहीं कुछ लकीली. तो लेट मी एक्चुअली पुट इट, होपफुली आज चले. And there are certain days when my mobile goes for a toss only when I live stream. I don't know why. But okay, so let me see. Okay, यहाँ पे Chalobah had also, I think, moment. Was it a tackle? Why are they showing it again and again? I think it's fine. Watkins getting injured, but no, not really. Just about. कोई नहीं. यार वो मिंग को काट भी नहीं दिया इन्होंने, वो काफी रफ चैलेंज था. हाँ, I'm very surprised. Maybe because Mason Mount उड़ गया ना बाद में. He should have just, like, you can imagine, Mikhail, if David Luiz was there in the situation, he would have made the most of it. Yeah. See, that's one thing that maybe, I know it's not something where we should encourage. Lekin fact is, वो होता है भाई. Gamesmanship is the thing. So Chelsea actually used to be very good at. I don't know, man. That wasn't really a foul. They were both going for the ball, I think. Yeah, वो accidentally जो ये बोल रहे हो ना, Watkins वाला. Watkins वाला. Yeah, Watkins wala, I don't think it's a foul. But I'm as surprised as you are that the Mason Mount Mings wala. I'm very यार वो तो surprised. उसने पकड़ के उसको नीचे जमीन पे मारा है, मतलब कि वो मैं बोल फ्रस्ट्रेशन रहा हूँ ना, में it was almost like वो जैसे कियलिनी ने खींच दिया था उसने साका को. गोल का बदला लिया है उसने, but like come on, it wasn't like out of syllabus था. वो मुझे आउट ऑफ सिलेबस, वो मुझे वो याद आ गया. वो एसपी को नहीं मारा था उसने जमीन पे. वो मैन यूनाइटेड वाले ने, क्या नाम है उसके डिफेंडर का? अच्छा, मैग्वायर ही था जहां तक मुझे याद है. मैग्वायर. हाँ, तो वो मैग्वायर टाइप मैग्वायर सीन वाला. था कि पकड़ के उसको जमीन पे मार दिया बेचारे को. राइट. मिंग्स को प्रेस कर रहे हैं यार, मजा आ रहा है मुझे तो. दैट सीन इज गुड. अरे यहाँ पर लेकिन दे कैन हिट अस ऑन द काउंटर था. द मोमेंट वो होता है ना, ट्रांजिशन में बीट हो जाते हैं हम लोग, वो अभी तक भी दे आर लुकिंग टू ब्रेक, मैन. दे आर लुकिंग टू ब्रेक. वो एकदम आते हैं. ओ हाँ, मैं तो ऑलरेडी आई कॉल्ड इट Mikhail, that the fact that they have a Mings and Watkins channeling their left hand side versus our Chalobah, Sterling and what do you say, Ruben Loftus-Cheek, they are clearly targeting that. Yep, 100%. हमारा मिडफील्ड थोड़ा सा ना सस्पेक्ट है इस वक्त. I don't know. बैक फोर भी है, ऊपर से रूबन इज इन द पिवट, सो आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट.
गोल हो गया बस, वो अच्छी बात है। Arsenal game has been suspended like for 5 VR technology is not working in that match, so a player has been suspended, Ankit, by temporarily. कहाँ पे? In Leeds Arsenal match, they are saying the power loss between the referees VR technology. So they हाँ have वो like होता है कभी कभी, कोई नहीं, टेंशन नहीं है। जनरेटर ऑन कर दो भाई। यार, what do you guys have to say about Sterling starting? I'm as shocked as you are the way that his position has been, set. लेकिन अभी भी देखो ना, Chalobah took that throw. So looks like अभी देखिए, अभी we are in our half, right? When we are in our half and we are defending, Chalobah goes at the right back position. So he लेकिन actually Shrey was there. You were not like there, na? MyKyle, Sterling actually took a throw in the first few minutes. So it was अच्छा, clear that he was playing as a wing back when we were in the other half. सही है, makes sense. Okay. तो आई थिंक या मतलब इट्स नॉट टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन, लेकिन हाँ गुड प्रेसिंग हियर बाय द वे चेल्सी द्वारा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ, लाइक स्टर्लिंग, कम ऑन ब्रो, एज एन ही इज एन आउट एंड आउट काइंड ऑफ अटैकर। आई डोंट सी हिम एज अ डिफेंडर एट एनी पॉइंट। अरे यार, कुकुरेया विद अ ब्लंडर। goal. ब्लंडर नहीं, कुछ हुआ नहीं। Oh, Luckily we had our Thiago Silva, they are clearing it। बिल्कुल। यार मेरी स्ट्रीम कहती है I cannot forward anymore, so you're ahead. same with me. I'm like 1 minute behind Ankit, I believe. ओह माय मेरा भी हमेशा से यही प्रॉब्लम है यार। अंकित भाई की स्ट्रीम जो है वो स्टेडियम से डायरेक्ट आती है। नहीं कोई अंडरग्राउंड कॉन्टैक्ट्स नहीं, पीपल डोंट वरी। भाई आप लोग का रिएक्शन देखना चाहूंगा इस सेकंड में। Oh, Martinez! Oh my God, we could have done better. Oh ओ my यार, God. थियागो सिल्वा ने बचा लिया भाई। ओए अच्छा, ओए इतने पीछे हो गया आप लोग? अरे भाई साहब। भाई, अभी मैं क्या, वो तो कुछ भी नहीं, अभी देखना आप। वो तो कुछ भी नहीं है। अरे कुकुरे ने हक दिया था, उसके बाद में चिलवेल ने भी हक दिया। उफ, बच गए। ऑफ द पोस्ट, ऑफ द या बार। लियोन बेली, trust me, if I was an Aston Villa supporter, I would have said, bhai, Oh my God, 100% that should Chilwell! have been a goal. My God, Chilwell! What has he done? He just missed a header, That is simple। basic defending. See, that is what happens, when you don't have your Koulibaly, a core center half। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, as much as Kukurea is good in the back three, left center back, very good, लेकिन sometimes, because of the height, Chilwell is coming back and wanting to cover that, or he is getting the timing wrong as well। कुलीबाली को क्यों नहीं तो ट्रस्ट कर रही है? क्या मसला है उसका? पिछला गेम तो अच्छा था। पता नहीं यार, मुझे लगता है फिटनेस का इशू जो हुआ है ना टीम में, तो आई थिंक ही इज जस्ट बीइंग अ लिटिल बिट मोर सर्कमस्पेक्ट, और बिकॉज ही ट्रस्ट्स कुकुरिया फ्रॉम द ब्राइटन डेज, ही इज जस्ट गोइंग विद दैट, इज व्हाट मेरा मतलब ओनली थिंकिंग इज दैट फॉर मी, नथिंग एल्स। आई आई थिंक होप 3 बैक टू बैक क्लीन शीट्स ब्रो, आई कुलीबाली। होप माउंट को फिर छोड़ी। आई होप हमारा इंजरी इश्यूज फिर ना शुरू हो जाएं यार। ये वो हमारा मेडिकल टीम थोड़ा अपसेट हुआ हुआ है। One thing I liked about Tuchel was he had restored some sanity to injuries and returned from injuries. वो अपना टाइम लेता था players को to come back. राइट। वो almost to the point where players would complain कि भाई बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। लेकिन उससे हो क्या रहा था कि हमारी इंजरीज कुछ कम हो गई थी compared to previous years. If you remember under Lampard how many injuries we had, and the pressure that the boys were under to come back from injury early. और वो फिर Kante is an example कि वो सारी time say he was playing injured. And he's to this day playing injured. So या I hope the new ownership they don't start pressurizing the medical team to put players back before they're ready. वही मे बी रीस जेम्स का वही है, मतलब ही इज नॉट टेकिंग अ सर्जरी, हु नोज। But That's I think what this is the problem. that's the question in the back of my mind. Sorry, Shay. Yeah, only problem with us is I think we always need to find a backup for Reece James, and I think yahi pe we have done a problem because when Reece James doesn't play, we don't have attacking like from the right side. Loftus-Cheek बिल्कुल has to सही, play, sometimes Aspi has to play, and the side 100%. gets really broken up, and injuries are becoming a concern. And I think again, I think we have enough backups in midfield. I think we have enough backups in defense. We have enough backups in forward areas, but we have no backups on right wing. No backups. यार ऑन पेपर एसपी को हमने रिन्यू कर लिया अब, लेकिन एसपी इज नॉट द सेम लेवल ऑफ हाँ, बैकअप। ही इज अ स्क्वाड प्लेयर, स्क्वाड एसपी प्लेयर इज इज द कैप्टन। not anymore because of his age. He's not what Cucurella is to Chilwell.
So we need somebody that's a Cucurella level of backup at the Reece James side compete of कर it. रहा है basically. हाँ. मतलब he's more like a plan B, safety valve in terms of वो होता है ना last minutes of the यार match है उसको जब we need उसको an नहीं experienced खिलाया player. आज उसको, मतलब he should have started today in my mind as a right back, but नहीं खिलाया उसको because I understand why, because he could be he could be caught out. क्या करें? Yeah. नहीं, I hear you absolutely. Okay. भाई Chaloba, मेरा this is a big test because Chaloba has since his debut been our gap filler. जहां गैप होता है वहां Chaloba डाल दो. Yep. Anyway. रीस जेम्स सॉरी लॉफ्टस चीक को बुरा फाउल किया यार, इन्होंने कोई कार्ड नहीं दिया. Ashley Young, the legend playing. Imagine. यार ये लेकिन एक चीटिंग हो गया ना. आफ्टर एशली यंग बिकेम अ डिफेंडर, अभी एक प्रीमियर लीग का स्टैट चेंज कर दिया, मालूम है क्या? जॉन टेरी इज द हाईएस्ट स्कोरिंग डिफेंडर एवर इन प्रीमियर लीग था. अब बोलते हैं भाई साले एशली यंग इज हाईएस्ट स्कोरिंग. ये कहां से फेयर हुआ यार? एशली यंग वाज नेवर अ डिफेंडर, ही बिकेम डिफेंडर लास्ट 2 साल में. हाँ तो ठीक है. For the people that know, they know, right? So वो Yeah, and anyway we are carefree, right? As we are. Amit, वो it is what it is. Carefree is right. एशले लंग इटली नहीं चला गया था, कहीं चला गया था बीच में. Inter Ashley Milan Young, में हाँ, he went to इंटर Inter मिलान Milan. गया था. है ना? He came back. Since I Conte left, I remember. think he left after Conte. Oh, okay. हाँ वही टुवर्ड्स एंड कॉन्टे का एरा में भी पता लग गया था हिज एंड इज कमिंग क्लोज वहां पर. लेकिन आई रिमेंबर एशली यंग ऑफ वॉटफोर्ड. आई डोंट नो इफ एनीवन रिमेंबर्स इन द चैट यार. वो मतलब वो एक आया था ना बंदा, वाओ मैन, मतलब वो वाला प्लेयर आया था वॉटफोर्ड से. I think ही especially प्लेड the way Ashley विला used भी. to play under Martin O'Neill was wow. Martin O'Neill Aston Villa was one of the best sides at that time. Yeah. Martin O'Neill has done a pretty good job, yeah. I remember he did manage Leicester also. I remember पहले, and he had decent. He won them their first cup or something. यार देखा ना, we almost. Kepa people, भाई Kepa. I would give him this. भाई Kepa के लिए please everyone bow down for Kepa. He made 3 saves. Yes, it was offside a घंटा यार. ये भाई ये ऑफसाइड वाला लाइंसमैन ना इतना लेट जो करते हैं ना, बहुत ही इश्यू है भाई. हार्ट अटैक हो जाता किसी को इस मोमेंट में. अगर वो ऑफसाइड वाला जल्दी करते तो क्या ही तो होता है. बड़े But अंकित प्रॉब्लम ये है ना, if they don't do it then अगर गोल हो जाए and वही है, दोनों उनको गाली पड़नी है भाई दोनों तरफ से. सिंपल. लेकिन भाई डिड यू सी केपा? ही डिडंट नो इट वाज ऑफसाइड. हमारा पीछे चल रहा है अंकित भाई आपसे. आज अभी तक नहीं हुआ क्या? लक खराब था विला का, आई मस्ट से दैट. लेकिन मैन दैट वाज लाइक सम सुपर स्टफ फ्रॉम केपा. आई डोंट नो हाउ ही डिड दैट. पता नहीं क्या किया. First save आसान था, but second and third, wow. Man, that was 5 chances at goal. Offside था वो अलग बात है कहीं पे. Literally लेकिन 4 ये जो saves बॉल in that. दिया ना अंकित, the ball they gave in behind to get in behind our line, this is going to be our problem the whole game long. Absolutely. 100%. और वहां पर ना एसपी एक्चुअली यू हैड अ पॉइंट. एसपी एक चीज में एक और अंडररेटेड है, मैं हमेशा बोलता हूँ. द पास he's a better reader of the game that people give him credit for. ठीक है, एसपी दैट इज. और इन क्रॉसेस I still believe even till this day in just crosses defending wise mein, I think he's even better than Reece James in terms of defending crosses. That's one thing that I really stand out for Aspi. हाँ नहीं, I kind of agree. उसकी गेम रीड जो है वो it's obviously एक्सपीरियंस ज्यादा है, so he does see out the danger. I think cards are going to come here. Aston Villa playing बहुत ही rough game in my opinion. Pressing जो हो रही है बहुत ही contact pressing हो रही है. And I feel that Ranjit, I can हमारा say जो one thing. If the game continues the way it's going, Aston Villa will score 2. We need the early goal. Like we are getting opened up with ease. Midfield is getting bypassed with ease. We need something on the pitch. Yeah. अरे यार चिलवेल. Yeah, I hear you, MyKyle abhi. Chilwell defensively, is still getting back to where he was. Big time.
डिफेंसिवली ये है थोड़ा लाइबिलिटी आज के दिन में, लेकिन हाँ इंद्रानील आपका कमेंट ले रहा हूँ मैं, सॉरी आई नो मैं वेट कर रहा था, बट भाई आर्ग्यूबली यू कैन से दैट ही हैज fitted in even better than what you would have expected Koulibaly to do if Koulibaly would have stayed right now. It's a big compliment, I know it's a big statement, लेकिन I think that's how good he has fitted in, especially Napoli attacking wise बहुत अच्छा कर रही है, that is helping the team also I would say. In which channel the game is live? The game is live on Star Sports Select HD2 in India. अगर आप इंडिया में देख रहे हो तो it's again it's Aston Villa Chelsea is on Star Sports Select 2 HD. Leeds Arsenal is on Star Sports Select 2. Although मुझे लगता है अभी तक it's okay, it's abandoned itself. Game is abandoned, bro. Oh my god, ये क्या हो गया? Good pass, Leeds Arsenal का. good through ball to Aubameyang, but Aubameyang, yeah, he just exactly. couldn't get to it. Yep. Or the third match, which is obviously Manchester United Newcastle, is going on Star Sports Select 1 HD. Kepa OP absolutely big time. और yes, श्रेय भाई आपको निकलना है, तो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग ऑन अगेन. हम लाइव है ही, अब डिपेंड करता है लोगों पर, आप पर कि भाई आप वी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट गेम्स व्हिच इज ऑफ कोर्स एल क्लासिको एंड तीसरा भूल ही गया चेल्सी के एक्साइटमेंट में, लिवरपूल मैन Liverpool सिटी. City. करेक्ट, लेकिन हाँ आई थिंक होपफुली हम जीते, लेकिन क्या लगता है भाई, लुकिंग एट नाउ, क्लोजिंग थॉट्स फॉर यू राइट नाउ? I think my heart says we're going to win this game 3-0, but brain says it could be at 1-2 because I think Villa just easily cutting through our midfield. And again, Chelsea हमें फिर से nervous कर दी गई, and we're just going to be chewing our nails, and that's the way Chelsea goes at Villa Park. So again, big up to MyKyle brother. Thank you so much. It was good to have you, and big up to Ankit bhai. It was absolute pleasure to come on the channel. Thank you so much, and big up to the chat. Thank you everyone. एब्सोल्युटली पीपल भाई, अगेन श्रेय एफसी, Great. बिग अप बिग अप. चलो मिलेंगे श्रेय से जल्दी ही. इज एस्पिलिकुएटा बेस्ट स्पैनिश डिफेंडर इन प्रीमियर लीग एवर? And David Silva, best Spanish player in Premier League ever? Wow, very good question, Indrani. I like these kind of questions. I don't know, Mikhail, Spanish defender ever in Premier League. Who are your options that you're talking about? मुझे तो याद ही नहीं आ रहा यार ज़्यादा defenders from Spain that played in the Premier League. Yeah, Hierro and Bolton, he was good, but PK wasn't really getting too much game time when he was playing yeah, here. मतलब hardly he played, so I would not. वही same चीज about Hierro. Hierro was there, Fernando Hierro, but he was there during his heydays with Bolton, I remember. Oof, Oh, that's what a good. through ball! Oh my God, we are. I like the balls over the top, यार, जो हम करते हैं ना कभी कभी. That's something good on the Potter. But yeah, I would go with that. Then I think Aspi again. अगर हमने मिस कर दिया इंद्रानी, तो please point us out. मुझे नहीं लगता स्पेनिश डिफेंडर टॉप क्लास यार आप है इन. अलोंजो को कोई लिफ्ट नहीं कराते हैं. अलोंसो अलोंसो या बिल्कुल यार, मतलब he has a lot of success, लेकिन यार एसपी आई थिंक, मतलब आई थिंक ही इज प्रोबेबली द मोस्ट, मैंने कहीं तो पढ़ा था ही इज द मोस्ट decorated defender in the Premier League, as thing active defender in the Premier League in terms of Yeah, trophies. like he I think he won all the trophies that were up during his tenure. Yeah, literally, yeah, So exactly. So he is there. तो एसपी को ही देना पड़ेगा यार 100%. Player, I would argue people don't count Cesc Fabregas. मतलब as much as David Silva is superb, he's right up there, of course. लेकिन why do people forget the? मतलब as much as I would not like to remember, लेकिन Fabregas of Arsenal was a leader to the core. बहुत अच्छा था यार, और चेल्सी में तो था ही बहुत अच्छा. yeah, तो I prefer his Chelsea era because we still miss him, yeah, correct, of and course. he still has a soft spot for the What was Blues. that? So, भाई रेफरी एंड वेट मिनट, तियागो सिल्वा को गिरा दिया प्लेयर ने, एंड रेफरी ने कुछ नहीं दिया पेनल्टी बॉक्स में. लकीली दे डिड नॉट टेक एडवांटेज एस्टन विला. दैट इज, ये हो क्या रहा है भाई? आई नीड टू सी दैट रिप्ले अगेन, एंड मिकाइल इफ यू कैन हेल्प मी देयर वंस इट कम्स टू यू. सही है. भाई वी I'm आर सो waiting. लकी दैट वाजंट अ फाउल. केपा सेविंग इट अगेन बाय द वे टेक्निकली, लेकिन नहीं, तियागो सिल्वा. generally I think we're a little too open at the back right now. वो एकदम आ जाते या हैं, then oh my नहीं, हमें goodness. हमें चाहिए जो इन्फेक्शियस एनर्जी ऑफ गैलेगर इज रिक्वायर्ड. आई पर्सनली फील दैट. Of course, not right away, but eventually, I think Gallagher should come in, and he'll be that extra man in midfield who That was can a kind of, clear foul, man. That the two-handed yeah, push foul था किया ना? उसने. Two-handed push Exactly. किया उसने उसको. I don't know, bro. What is it? Well, that Again, tells people me. coming onto the stream. Yeah, मैं यहाँ पे मॉड्स है क्या कोई स्ट्रीम में? गौरव है, चलो. थैंक्स गौरव. भाई स्पैम मत करिए, जो भी स्पैम करने की कोशिश कर रहे. I think these are bots, man. Sometimes these bots come on. I don't know who are they. No idea. Anyway. Chelsea bots हैं?
No idea. No, not the Mbappe ones. Oh my goodness, man. That's crazy, man. Trust me. Imagine PSG leaving bots. Oh my god, what a story, man. सच में मतलब ये बंदा कितना 22-23 साल की उम्र में दुनिया हिला दिया यार. You must give it to the guy. As much as his attitude is utter shit, he's a great player and a manipulator. You would say. यार नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए इस तरह के हाँ, प्लेयर. हमें नहीं हमारे जो चाहिए. नई मैनेजरशिप जो नई ओनरशिप आ रही है ना, मुझे डर लग रहा है इनसे कि दे विल मेक अस इनटू अ क्लब लाइक पीएसजी. Oh my god. Why are Chelsea doing this? And Kepa is literally saving her ass. Why are Chelsea doing this? Why are we overplaying or what, Mikhail? Well, I do think we we need a are. third Zuma in the team? I think we are because they're walking into our box Yeah, every 2 minutes. and you Uh, know what? They're pressing well, but why are और we हमारे even? players are ball watching when they do it. So वो Huh? backline के लिए time after time it's a do or die. Every 2 minutes there's a do or die happening, and कब तक करेंगे? They need. I think Potter needs to make a change, some sort of change. Oh my god. Aubameyang. Now Mikhail is realizing what I'm saying. Oh my god, Aubameyang gifted it almost. Oh my god, that was horrible. And केपा ने you know बचाया what? यार. केपा मेरे ख्याल में तक 3 points या 3 points मिनिमम बचा गया हमें. Three हाँ, three already. goals. In fact, मैं तो इतना बोलूंगा Mikhail. I think Chelsea have been even lucky in the last 2-3 weeks because आप देखिए अब हमारी opposition they have struggled to score. Yeah, It's yeah. not like chances नहीं दिए, हम दिए chances. हाँ नहीं, वो तो बात सही है आपकी. द थिंग इज किसी somebody was saying this कि जनाब केपा जो है वो इतना कोई अच्छा नहीं है, उसको प्रोटेक्शन अच्छी मिल रही है आजकल लकली. तो हाँ, यहाँ उल्टा है. बात ये है कि इट्स द सेम थिंग कि गोलकीपर अच्छे परफॉर्म करते हैं when your defenses perform well, right? So it's not like the goalkeeper can be all over the place all the time, and even if the defense is bad. So आज ये हो रहा है कि defense is actually not working well, and Kepa is keeping us in the game right now. I think यहाँ पे 3 गोल मार चुके होते हैं आराम से ये अब तक. और अभी अभी आपको एक और दिखेगा, ये चौथा भी ऐड कर दीजिए आप. अरे भाई जान, ऑफसाइड है लगता है अभी. हार्ट ओबामेयांग अटैक देखते एफसी हैं. इज बैक हैं. बिग टाइम, बिग टाइम. ऑफसाइड, ऑफसाइड था चलो. लेकिन हाँ, अरे वॉच अलोंग करोगे ना? हाँ भाई, प्लान तो है एब्सोल्युटली कुशाल. लेकिन देखते हैं, लेट मी सी भाई. अभी अभी तो टाइम है ना कुशाल, अभी टाइम है. आई थिंक सेकंड हाफ इज व्हेन आई विल ओपन वन मोर टैब एंड आई विल ओपन दैट एज वेल. प्लान में तो डेफिनेटली है. लेकिन हम कमेंट्री नहीं दे पाएंगे अबाउट व्हाट्स हैपनिंग एवरी मिनट. लेकिन सर्टेनली हम विल रिएक्ट ऑन मेजर मोमेंट्स. I want भाई to बिग see a अप. reaction from Potter this time because I'm not Oh liking what my he's doing. God, Kepa, भाई let's get it right. People, यार पहले भाई तो Kepa Havertz is on the other back. end. Havertz on the other end, like उसने क्या chance miss किया? That was such a weak shot. Havertz has actually looked the Havertz of this season. सच में बोलूंगा, he's not looked the part at all. But Kepa, how did Aston Villa not score a fifth chance? How did they not score? It is a matter of time. जो श्रेय ने बोला था, अगर करेक्ट बोला था. I think Mikhail will be watching it in just a couple of seconds. इसलिए Mikhail react नहीं किया, but he'll be getting it any moment. Oh my goodness, Kepa with a blinder. That was a blinder. That was a blinder. वो वहां पर I Wood. don't think you can criticize Aston Villa, right? You have to give it to Kepa. All Kepa there. Corner. Wow. यार नहीं, वो Chilwell again messed up his guy completely, walked Yeah. around it. Why are we letting the crosses grow, Mikhail? यहाँ पे वो Why don't we learn? तो इस तरह की सिचुएशन में फॉर एग्जांपल अगर इट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द पिच, अगर एसपी खेल रहा हो तो his body positioning is better. Yeah, exactly. Chilwell gets अच्छा, by the turned way, very easily. I believe Southampton have scored against West Ham, in case people might be interested, but just giving a stat there quickly. Yes, Gaurav, 100% agree that we have been extremely lucky. First of all, lucky in Tyrone Mings doing what he did for us to get that opportunity, which Mount made most use of. लेकिन उसके बाद it has been all Aston Villa. हमारी midfield exist ही नहीं कर रही. और we are not able to make 5 passes together, not even 4 passes together, I would say. No, our midfield needs to probably, the whole team needs to play a little more compact. I think we're too stretched. They are passing through us. They're passing through us with no issues. Mikhail, remember कितने बार में हमने बात किया है इस बारे में that what Chelsea have a problem is under Tuchel,
we used to get in a comfort zone very easily. वो comfort zone क्या है? Sideways passing with playing 3 at the back. यहाँ पर येलो कार्ड मिला चिलवेल को. चिलवेल नहीं दिख रहे भाई. चिलवेल is far from where he was, but I know he had a moment in the goal, absolutely. लेकिन चिलवेल has got a yellow card. Unfortunately, I would take one attacker off. I would take Havertz off, and I would put Koulibaly in the back. Okay, you would? अच्छा. यार, won't it invite even more pressure? यार इस वक्त the point is कि midfield is getting run over. या तो आप Gallagher को भी डालो. I think Gallagher might be the solution in my opinion, क्योंकि यार Gallagher is Gallagher- a person जो मतलब he'll get you the fouls. He will not let the ball go. He's that kind of guy, you know. Chilwell मतलब मैं तो I will go in, और एक और option हो सकता है, just go 4 at the back, playing Chalobah as right back. I don't know. Chilwell बच गया. That was a harsh tackle, man. Yellow is easy. He could have gotten red for that. Studs up गया अंदर. And only because of bad positioning, he was again beaten. Yeah, it was a very harsh tackle. लेकिन वही, it was one of those orange cards that you could say, right? Definitely, and that tells you, right, that the team is playing on very fine knife's edge right now. This match momentum can change any second. Momentum तो खैर है ही नहीं हमारा इस वक्त. Since the goal, I don't think we have had any good passage of play. But that was a harsh challenge, man. I don't like that. That means he's struggling. So we need. Yeah. Villa have had now almost 6 shots on target out of 8. Crazy. Yeah, one of them will go in eventually. Bhai Indranil need to remove Sterling from wing back. I think Sterling or Havertz have not been effective at all. सच में बोलूं तो दोनों ही effective नहीं हुए. वो स्टर्लिंग आप बोल रहे थे कि वो राइट साइड पे खेल रहा है, सो मे बी उसको रखो फिल भी, लेकिन हैवर्ट्स का कोई तुक नहीं है सामने. ही इज नॉट ऑफरिंग एनीथिंग, सो टेक हिम आउट. Put an Sterling extra है body तो in सही, midfield. लेकिन Put an extra body in midfield, and I would say if that doesn't work, then also put an extra body in the back, because right now this is not going to work. ये क्या हुआ? इसका जो सेट पीस हुआ है फ्रॉम द चिलवेल फाउल, उस पे क्या हुआ? नहीं अभी वो इंजरी, बेसिकली यू नो दे आर ट्राइंग टू सी व्हाट इज द इंजरी. आई थिंक वाज इट जेकब रामदे. बंदा मार दिया उसने. दैट वाज अ bad tackle. Yeah, bad one, but it's not as bad as it looked. It's okay. Like वो बंदा चल रहा है आराम से. Hopefully he's not injured, and उसका weight नहीं था on that leg, but yeah, it was pretty bad. उसने कसर कोई नहीं छोड़ी थी चिलवेल ने. That wasn't a Chelsea type of tackle. We don't like to play लियोन like बेली छक्का मार दी है अपने फ्री किक से. I think Leon Bailey is one that probably they are expecting more out of. Sachin Bolu. He is a fantastic player in this game. अच्छा, बेली ठीक है. बेली कहाँ पे था पहले? यहाँ से पहले किधर था वो? बेली, if I'm not wrong, he was हाँ जर्मनी में था क्या? बायर लेवरकुसेन. इसका चेल्सी के साथ भी लिंक्स हो रहे थे एक जमाने में. हाँ I remember. I'm pretty sure जर्मनी में था. Leon Bailey, let me just check. हाँ बायर लेवरकुसेन. सही है. तो हाँ लेकिन some players just don't make it in the EPL, man. Especially with German tax जो है ना, Bundesliga tax. नहीं ये बंदा अच्छा है. प्रॉब्लम है he's been injury prone. Yeah. दे दे फ्री किक. रीस जेम्स के बारे में भी मेरा यही अब आउटलुक हो गया कि बंदा चंगा है, लाइक वो बेचारे की लक नहीं है इंजरीज के साथ. लाइक इट्स नॉट कि वो ही इज आई डोंट नो. या सो ये वाला क्वेश्चन लीजिए मिकाइल, क्या बोलते हो? व्हाई डोंट वी ऐड मोर डिफेंडर्स फ्रॉम आवर एकेडमी? इतना इंजरीज है तो वी शुड हैव एडेड बाय नाउ. यार अब वो डिफेंडर्स हैं कौन एकेडमी में? अब इज देयर एनीबॉडी दैट्स फिजिकली लाइक अ चालोबा टाइप फिजिक? हां मे बी दे आर नॉट, लेकिन वो ये ना until you try आप पता नहीं लगेगा एबिलिटी एज वेल एट द टॉप मोस्ट लेवल. मे बी दैट्स द आर्गुमेंट. यार स्क्वाड में एटलीस्ट आपके लिए फिजिकली देयर नीड्स टू बी no, I hear you. Some physicality, right? Because even if you're not up to the pace of the Premier League, and you don't necessarily know the opposition, but if you have some physicality, you can probably get away with it a little bit, right? So I don't know academy mein is profile kya hai. Young players usually are not Chalobah is a unique because he was quite tall and built in that sense compared to other academy players. और वो again Loftus-Cheek losing the ball. अरे क्यों भाई इतना? why are we losing the ball so much today?
I don't know what's happening आज. यार जो मुझे लग रहा है ना वो लाइक जो फ्रेम है मेरा कैमरे का उसमें मुझे एट एनी गिवन टाइम 3-4 से ज्यादा चेल्सी प्लेयर नजर नहीं आते मुझे. So we are playing too far apart. Yeah. अब वो ठीक है, we're trying to stretch them, but then you know that's leaving. The minute we lose the ball, they just walk past everybody. I have one more suggestion, MyKyle. I know it's thoda left field. How about getting Jorginho and just getting some calmness? हाँ जॉर्जिनियो भी तो है वाकई में exactly. Unfortunately, or fortunately, there is an option. Mm-hmm. बिल्कुल सही कह रहे हो. Like at the beginning of the game, I was wondering कि Jorginho injured है, why is he not playing? Because you know I it's a bit agree of with a risk. this, Abhishek. As much as it sounds very rude and whatever, but I think it's true. Yeah. Honestly, he's a clutch player at best. Abhi tak. I know it's young. I know it's early under Potter days. Lekin Havertz. But I still don't know. Please tell me, Michael. Please make me understand why isn't Gallagher or Broya starting over Havertz? ये मेरे को समझ में नहीं है आज. So contractual issues, and I think there must be something in the paperwork. The fact that he's getting paid so much and all that, I guess. Huh? Yeah, वो इस तरह का कोई चक्कर है. Yeah, Broya, Jorginho. Broya is constantly being overlooked, and पता नहीं यार अभिषेक समथिंग्स गॉट टू गिव ब्रो सम वी नीड चेंजेस आई थिंक यहाँ पर आई एम अगेन मैं इफ आई मे क्रिटिसाइज आई नो दैट यू विल से दैट मैं थोड़ा नेगेटिव हूँ लेकिन यार अपने परफॉर्मेंसेस आप देखें ना वी हैव नॉट प्लेड लाइक द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अब वी आर प्लेइंग मैनचेस्टर सिटी इन नवंबर अगर ऐसे चांसेस देना मैनचेस्टर सिटी को पता है हमें क्या होना है इस वक्त 10 गोल हो चुके होते हैं अब तक. हाँ वही बोल रहा हूँ लिटरली दे हैड 7-8 चांसेस ऑन शॉट ऑन टारगेट तो फॉर मी To be fair, you know, we've set up knowing that we're playing Aston Villa, but you know, there's not a lot of options on the bench. मे बी यार नहीं Um, लेकिन देयर देखो अरे माउंट अरे हावर्ट्स अरे मैन हावर्ट्स भाई हमने अभिषेक और गाली दो हावर्ट्स को प्लीज हावर्ट्स डिड अ मैडनेस यू वुड लव इट मिकाइल और स्टर्लिंग हिट द बार और क्रॉस बार अदर लेकिन व्हाट अ मोमेंट फॉर हावर्ट्स इट वाज वन मोमेंट आई नो दैट्स द प्लेयर दैट ही इज द मोमेंट्स प्लेयर but I think that move deserved a goal, bro. Sterling hit the crossbar, or rather the bar. We don't deserve it. वो भी सच है, लेकिन that move, awesome, मजा आ जाएगा वो move देखकर. I know we finally missed the goal. That's a different story. oh my goodness! Tried to curl it to the far post, top bins off the post and the bar. I think both. The game is so open, man. But why is it open? We are closer to अच्छी the रन end of थी the first Havertz की. half. Havertz showed some industry. Yeah, I thought it's a Mount. पहले जब किया ना, जो Mount wins all those second challenges a lot. लेकिन Havertz था. नहीं, it's off the crossbar. Okay. Yeah. मतलब होता है but like to be fair to Aston Villa it would have been unfair to them that we're 2-0 up. यार Mikhail. I need to see us taking our half chances because इस तरह की गेम में तो we're gonna allow goals man. कब तक करेंगे ये इस तरह. देखो फिर they're in our box. वो तो ऐसे आते हैं हमारे बॉक्स में जिस well it is their backyard right. And that again transition Mikhail remember always हम बात किए transition में why are we getting beat like crazy. We need something. I know obviously Kante we cannot get him अभी तो for This is next not 2-3 months. working man. This is tactically like there's big holes in our setup right now. I I need think Potter Granit to is the point. Villa ने हाँ recently I think they picked up on form a little bit. Yes, Gerrard का वो कितना भी criticize करो यहाँ देखिए right back को literally हमारा कोई है ही नहीं. Loftus-Cheek thinking that he's center back और jog कर रहे थे. I don't know what is happening there. They don't know their positions yet. I believe they're confused. होता oh है man कोई. now they're just selling you know trying to get cards for our players like कुछ foul नहीं हुआ जनाब he's उसको मार दिया जिस तरह he's acting like a Aston Villa का player number 4 कौन सा हाँ वो तो और भी हाफ टाइम के बाद fraud तो और भी होगा total fraud. बिकॉज they'll get a मैन तियागो सिल्वा भाई बढ़िया लेकिन यहाँ पर दे दिया फ्री किक रेफरी ने अगेंस्ट चेल्सी अगेंस्ट चालोबा ओके आई थिंक ही प्लेड ऑन दैट्स व्हाई या मोमेंट्स एफसी बोल रहे हैं अभिषेक हैवर्ट्स को यार वो सच है स्पेशली चेल्सी एज वेल एज हैवर्ट्स हैज बीन दैट वो ही है ना मतलब कैन यू रिलाई ऑन सच प्लेयर्स
Actually, Havertz को उन्होंने आगे रखा हुआ just to create space for Aubameyang, but Aubameyang is not getting the ball. So I understand why Havertz is there, but Mm-hmm. I don't know if it's worth Yeah, what he's it. not doing enough. Well, the thing is, we're not getting the ball to both either of them often enough. So ball, the whole game, I think 80%, 90% of the game is अभी तक हमारे हाथ में हुई है. हाँ बे, लेकिन वो है ना मैकाइल, देखिए अभी एक और आपको दिखेगा इन फ्यू सेकंड बिकॉज यूर लैगिंग. देखिए हैवर्ट्स को जब बॉल मिलती है ना, the first thing he tries is that I know it's good that is trying. I know that we like it, both of us especially. That audacious kind of a trickery kind of a thing. यार पहले आप पहले मुंह उठा के देखो तो सही कौन है, then आप you try करो. Then I think he needs to get some calmness as well. At the same time, I feel losing possession, Havertz. Was an apology to Master Kepa. Make your opportunity count, you legend. अरे भाई अभिषेक, absolutely bro. मतलब मतलब मैं मुझे पता है यार, केपा चेल्सी फैंस ट्रोल्ड केपा यार. That's for real. मतलब I don't Today, think I trolled, but huh? today, Yeah, a lot of Chelsea fans trolled Kepa yaar. Not today, like generally when things look bad, no. when things were bad, he was bad. Like he was playing bad, No, and but like मतलब at that when point, it's trolling to justified, the I guess. level of like you know what I'm talking, right? As in social हाँ media. नहीं वो अलग बात है, but the thing is he had some big issues. I think उसका personal life में भी there was some issues which completely distracted him as a player. But I think now he's a little more settled, and that's showing on the pitch as well. Plus, he's playing at a level जो कि I think we haven't seen in many years from him. So I'm here for it. I don't like all I want is our players, playing to their maximum. And right now, today, he's keeping us in the game single-handedly. And I don't know what Potter needs to see to make a change because this is not working. Chilwell though is like almost not even there. They're Yeah, walking. We're walking past him. he was a left winger. सोच के अब चले आज. He's a left winger who's not defending well. Shoots over our goal, header. यार बाकी गेम्स में क्या हुआ यार, मैंने अपडेट नहीं किया स्कोर. हाँ कुछ हुआ नहीं है, चलो. I think Real Madrid Barcelona with 7:45 should have. अभी टाइम है for people wondering that. Oh, El Clasico है आज. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. कौन जीत रहा है? मतलब it's almost a do or die ना, because अच्छा. Barca for me it is. मतलब I know बहुत लोग बोल रहे नहीं it's so early to say. For me it is यार. मतलब I won't expect them to drop points against other teams ना, these two teams. और अभी भी बराबर में पॉइंट्स में, और वहां पर हेड टू हेड मैटर्स इन ला लीगा मोर. It's early days, man. अभी तो बहुत टाइम है. हाँ टाइम है, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यहाँ पर 6 पॉइंट्स इज ह्यूज इन यार दिस वन. क्लासिको में usually Barcelona takes the result. मोर रिसेंटली हाँ, लेकिन आई थिंक बार्सिलोना वो डेस्परेशन पता नहीं दिखेगी पिच में. इंटरेस्टिंग रहेगा, देखते हैं क्या होता है. It's going to be a test for Xavi. Let's see if he's able to या कम बैक. deal with the pressure. And Ancelotti, I don't want to टेरिबल disrespect. ब्रो, व्हेन आवर डिफेंस नीड्स अ प्रॉपर टॉकिंग टू ब्रो. मतलब दैट इज द बॉटम लाइन. गोल होएगा आवर यार. डिफेंस इस तरह खेलेंगे तो गोल तो होएगा. एक ही टेरिबल होगा बल्कि मैन ज्यादा ही होंगे. भाई. मतलब इवन कुकुरिया सिल्वा इवन इंक्लूडेड, मैं बोलता हूँ एवरीवन. भाई वो व्हाई आर दे सो कैजुअल? it starts spreading, right? Because they are getting tired now. इतना भगा रहे हैं बैकलाइन को, और we're trying to play this weird high line with जो कि it's not working. या और व्हाई आर वी क्लियरिंग? मतलब why are we, मतलब वो ज्यादा ही, आई वाज सेइंग अर्लियर ना, वी आर ओवर प्लेइंग अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हिच इवेंचुअली इज नॉट लीडिंग टू एनीथिंग. चलो Chilwell cleared at least. I like that. We didn't try to play it out from the back. Just clear the danger. But I'll be honest, yeah, I miss a Zuma kind of a center back in behind. Someone who is just that person who clears. Even a Gary Cahill to some extent. जहाँ पर आप जो old school defending बोलते थे ना. हाँ यार, वो आपका बात ये है कि अगर आपका आगे कोई टारगेट मैन हो ना तो उसको क्लियर कर दो. तो वो ओबा है. We should be trying that लेकिन I don't know if चलो हाफ टाइम तो हो गया है यहाँ पे. लेट मी पॉज इट द टाइम. और यस पीपल, भाई द गुड न्यूज इज, लेट्स टॉक द पॉजिटिव्स. हाफ टाइम हो गया है.
तो Chelsea 1-0 up away to Aston Villa. It's an away game. Let me try and ढूंढते रहोगे वाला चीज सीन हो जाएगा. और we have got an away lead, but can we come from that half with our heads held high We कि have भाई हमने क्या we कर have दिखाया. hung on to the lead by the skin of our teeth. That's how bad it's been since we scored. I don't know how And we're still in the game. उसके बाद I don't even remember, apart from that Sterling chance which hit the bar, I don't remember even a single opportunity. उसके बाद Havertz, Now, I know Sterling, he the had chance half I chance. think was the only chance. I don't think there was any other chance. वो Havertz ने एक किया था very weak, almost like a pass to the goalie उससे पहले, which was such a waste. Like उधर Gallagher होता तो I would have expected like a full blown strike at goal. पता नहीं क्या करता है Yeah, Havertz. Havertz is like an on and off player, yeah. I don't understand him. Sometimes he's he's a really liability, MyKyle. In other words, let's keep it real. I think he's यार वो great. इंडस्ट्री नहीं दिखाता consistently, right? Some like a Cucurella is giving you 110% energy the whole game long, right? वो Havertz में you don't get that. Havertz is like a momentum kind of player. Like उसको अगर if he's switched on mentally, so then he'll show something. But then he goes to sleep as well. I don't understand his how he paces the 90 minutes. Yep, exactly. Or again, we have actually changed the formation. Looks like it as the game progressed. Because we ended up defending more or what, I don't know why. But looks like we have changed the formation. I think initially हमने देखा था. वो interesting रहेगा, Michael, your thoughts that initially we saw, if I'm not wrong, Sterling taking throw-ins from the right hand side, and it was clear for me that Sterling was playing a right wing back, but maybe the goal came in, or we went a little bit too defensive. Is it the mindset, the formation, or it's simply the fact that we are not good on the ball, Aj? Yeah, it's a bit of everything. I think, but what it comes down to is that whatever we're doing, it's not working. And the only reason we don't have an embarrassing scoreline right now, like I'm talking probably 5 goals for Aston Villa, is Kepa in the goal. He has stopped blinders. Absolutely. Kepa, like अभी तक तो like quite easily the man of the match, यार. मतलब यहाँ तो आप I can't even argue on that. I think that's how many saves he's had. Again, मतलब you can argue that Aston Villa should have finished better as well, but Kepa has been fantastic, especially 6 में से 3 saves तो I think were wow वाला save मैं बोलूंगा. We are playing so awful. Gaurav बोल रहे हैं, I don't know what is happening. We are making Villa look like City. Defense is shaky and midfield getting outrun. Midfield doesn't exist, bro. Mikhail has put it beautifully. Like, basically क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर that is why maybe we shifted the formation midway, क्योंकि क्या हो रहा था, Loftus-Cheek was ending up doing right back job. Sterling कर नहीं रहे थे और हमारी मिडफील्ड एग्जिस्ट कर ही नहीं रही थी, तो वी वेंट काइंड ऑफ लिटिल बिट मोर सेंट्रल. लेकिन वो सेंट्रल होने का फायदा हुआ नहीं, क्योंकि वो बॉल्स ओवर द टॉप आ रहे थे, और वहां पे आई डोंट थिंक चालोबा और चिलवेल ऑन इधर साइड राइट बैक लेफ्ट बैक वाज किसको डूइंग लेके इनफ, आओगे? राइट. अंकित, किसको लेके आओगे हाफ टाइम पे? अगर if you want to bring like let's say one or या two players. ऑनेस्टली मैं जॉर्जिनो को लाऊंगा पहले, बिकॉज एक होता है ना, एक लीडरशिप एलिमेंट, वॉइस ऑन द पिच है, प्लस द फैक्ट दैट एक कामनेस लाता है. तो एज मच एज एस्टन विला डेंजरस साइड काउंटर में, आई नो, लेकिन मुझे लगता है वी माइट पासिंग गेम जहां पर हम 4-5-7 में कर नहीं पा रहे ना, तो जॉर्जिनो इज वेरी क्रूशियल. But गैलेगर ऑल्सो तो टुवर्ड्स एंड. उतारोगे किसको? किस फॉर्मेशन में लेके आओगे? Because I don't हैवर्ट्स want a हैवर्ट्स को हटाएंगे यार, 100%. हैवर्ट्स इज नॉट so बीइंग it's डूइंग इनफ. so 4-5-1 type situation. या गो फॉर इट. मतलब यू वुड से नेगेटिव, लेकिन वही है, ऑन ट्रांजिशन वी कैन अटैक देम. ठीक है, rather than putting 5 at the back. यार I know कोपा ने जो Koulibaly or सेव किए हैं, Aspi. man, even watching in replay, it's blinders. I don't understand how he saved all of those shots. Yeah. Havertz's liability, Kukure and Chilwell having a nightmare. Arguably even Chilwell should be taken off. Maybe you can take off Chilwell, get in Koulibaly, make it a back four with more assurance at the back. Would you do that, Mikhail? It's unfair because he almost had the assist, I think. If not, he did have the Yeah, assist. actually. Fair But enough. but it's unfair because we haven't played on that side of the pitch after that much. So defensively, I think the ratio that they are getting past Chilwell is pretty high today. So Chilwell, thoda sa end mein he had a few good moments where he was able to Mhm. clear the ball, but then we're just clearing the ball and then it's coming back into our half. There's nobody from Chelsea in the other side, in the other half of the pitch. So we have to figure out how we're going to get our midfield back in play, because you're right, absolutely midfield to hai nahi. There is no midfield.
They just walk past our नहीं midfield. नहीं, We have really I think you are even right. through passing. बेसिकली क्या हो रहा है ना, मतलब आई थिंक द आइडिया वाज माउंट माउंट वाज सपोज्ड टू बी प्लेइंग इन मिडफील्ड, लेकिन क्या हो रहा है बिकॉज हैवर्ट्स इज घोस्टिंग ना, तो माउंट इज फोर्स टू गो एंड टेक दो स्पेसेस जब भी हम थोड़ा बहुत अटैक कर रहे हैं, जहां से गोल भी आया। और अभिषेक रियल वो वेबसाइट की गलती है भाई, मैंने नहीं दिया रेटिंग। Howard 7.1 rating. Okay, Abhishek, man, you have a sense of humor, I must say. For England, right back. 1.7, हाँ वो चल जाएगा. 7.1, I don't think so. I've lost it. I've lost it there, भाई साहब. 1.7. But Howard भाई, अभिषेक मुझे मारेंगे पकड़ के. अभिषेक को मेरी हमेशा होती है बात. देखिए हैवर्ड से ना मैं हमेशा प्रोटेक्ट करता हूँ हैवर्ड्स को. आज नहीं कर सकता अभिषेक, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ. Yeah, the एक thing is, मोमेंट था बस, एक मोमेंट. वो तो चलो ठीक है, that's in front of goal. The problem is not really in front of goal. Problem defensively midfield में हमारा जो है, we're playing too apart. We have to go a little more compact. You're right. We have to play somebody like Jorginho maybe, and maybe bring up a Gallagher instead of I don't know, Sterling Sterling also, again. I would say even Sterling has been, Aubameyang को डिलीवरी क्यों नहीं मिली है, क्योंकि Sterling Havertz haven't done the job. जो front three हैं apart from the goal have been non-existent. Yeah. I don't know, front three में Mount आता नहीं, Mount front three में तो आता ही नहीं है. Mount तो midfield में खेल रहा है. हाँ, So he's almost playing in front of goal the Mount middle ने two मारा है. है. वो Mount was fox in the box like you're saying, but Mount is not playing in the front three necessarily by on paper. करेक्ट. जहां पर हैवर्ट्स को होना चाहिए, स्टर्लिंग को होना चाहिए था आफ्टर चेंजिंग ऑफ फॉर्मेशन. दैट इज व्हाई माउंट को देना पड़ेगा थोड़ा क्रेडिट. बट मतलब यू आर राइट, एज इन द वी आर नॉट हैविंग अ फ्रंट थ्री, दे आर घोस्टिंग. अंकित भैया ओबा को बोलो गोल मारेगा भाई, ओबा के पास बॉल ही नहीं जा रही है. एलिमटेन एक बार गई थी और ओबा सोचे भाई मेरा गोल इस साइड है और उन्होंने पास कर दिया. व्हाट वाज दैट? मैं क्या लग क्या था वो, मतलब इतना बोर हुए थे कि भाई कुछ एक्साइटमेंट लाते गेम में. ओबामयांग खुद बोर हो गए ऊपर ऊपर रहकर. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड वहां पर. Oh my God. अच्छा, यहाँ पर पूरा कमेंट आ गया है. We talk about England right back for Trent, Reece James, Kyle Walker, but we have forgotten Mr. Trippier. What a pressing game he shows right back. हाँ, by the way, Manchester and Newcastle is still 0-0 जो आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन पर. So that's interesting. By the way, Leeds Arsenal वापस से शुरू हो गया था. For people who are wondering, वहाँ भी 0-0 है. Pulisic and Aspie warming up. Okay, Gaurav, thanks for sharing that. In case Pulisic comes on, what do you think? We might go and Aspie comes on. Surely a 3-5-2, right? Then Pulisic just up top, or can he come as a right wing back? Oh my God, not again, not again. Imagine Pulisic also playing a right wing back under Potter, MyKyle. How will he feel? Yeah, Pulisic right now just needs to get on with his. I don't care where he plays. The point is, like, I don't think that's what the game is asking for. The game is not asking for Pulisic right now. The game is asking for somebody in midfield to settle the game down and Control, win the balls, pass better. We are not holding on to the ball. It's Aston Villa's ball basically. I don't know possession stat क्या है, but it must be very skewed. Yeah. अरे मानव, कैसे हो भाई? Always good to see you. Shout out जाता है भाई to मानव, Darren, all the members in the house, LM10, Abhishek, as well as all the others जो भी ज्वाइन किए. Thanks भाई. सब लोग लाइक कर दीजिए स्ट्रीम. मैंने बताया नहीं काफी देर से, लेकिन please like the stream. I hope mods, if you can help me out there with the reminders out there. But again, thanks for your comments as always. Yes मानव, भाई हमने किया है basically, क्या बोलोगे, मतलब we have been opportunistic at best, if that's a positive way of putting it. I think positive यही है भाई, Arsenal are still not scored against Leeds. Manchester United not scored against Newcastle United, and the fact that Aston Villa hasn't scored despite having 7 to 8. And मैं MyKyle, am I exaggerating वहां पर? 7 to 8 chances, Easily. proper chances, I would say. We need Gallagher, lung mid, yeah, as in him just running and वो gut जो ना बोलते हैं ना बाहर निकाल देता है अपना, that kind of is great. Abhishek agrees that probably Havertz should get 1.7 with MyKyle. Kai with his body language makes me wonder if he's even a footballer. Boy, yeah, moments player is what you would say. I would not say he's terrible, MyKyle, लेकिन honestly he's almost like an Ozil, yaar, in his latter years. So the thing is the Havertz की game जो है, it's the way he plays these days, especially with the Chelsea setup, वो है कि we have the ball and we're trying to just push their center backs a little bit, just harry them so that one of our other players can maybe nip the ball off and do something with it. We are not playing in their half, so Havertz is basically
it's a waste of space right now. अगर हम उनके half में खेल रहे हो, then that dynamic will start coming in. वो भी है ही नहीं. And I think in Yeah. this situation, I would almost say that Havertz maybe should come off the bench if he's going to try to play like this in the last 10 minutes or something. इस वक्त तो ज़ाया कर रहा है. We need a body that can do It something needs to be different. told, MyKyle, but you're right. As in, maybe there's more to it that we know, because if you're talking about Potter जो नया आया है, वो देख रहा है जो हम लोग देख रहे हैं. I know he's also looking at the training and everything. I agree all that. लेकिन मतलब at the end of the day, what matters is what you do on the pitch. How can anyone say that, yes, if Havertz was playing as a striker, I understand to some extent that Broya is not having the experience of starting week in, week out. I would still disagree with that as well. लेकिन why don't you get Gallagher in the position which Havertz is playing now? It's a no-brainer that Gallagher is far better on form. It's a no-brainer to anyone. तो बोलना I पड़ेगा don't नहीं. understand, man. Question marks about Potter's decisioning for this game. Maybe there's behind the scenes something going on with injuries or fitness or whatever. Okay, you're right, Kate. The certain players that I want to see on the pitch right now that I didn't see. Ya to he's trying to get into the second half where he can maybe sub them on, like Broya, like Gallagher. Defensively, maybe Chilwell has to come off after the yellow, especially. He's struggling a little bit. I don't know if it's going to become a problem in the second half. Yeah. अच्छा, ये वाला बोलिए यार, MyKyle. I know that we had an opinion on that already, लेकिन चिलवेल का टैकल और उससे भी पहले जो मिंग्स ने किया था ऑन मेसन माउंट आफ्टर कंसीडिंग दैट एरर, तो मतलब दैट वाज नॉट गेटिंग अ कार्ड इवन वर्सेस चिलवेल गेटिंग अ येलो कार्ड. Is it the referee is just letting things go, as in from his point of view maybe he has a point here, he's been a little bit lenient on both the decisions, or do you think Chilwell Yeah, was a red? हो ये रहा है कि well, yeah, I guess you could argue that. But Chilwell ka foul was much worse. It was a Yeah, serious foul. Studs up went into the ankle of their player just to stop the attacking movement. ठीक है. I understand why he did it, but it was a horrendous challenge. I wouldn't I have been surprised अगर वो red दे देता वहाँ पे, because it was that bad. अगर हमारे प्लेयर के साथ ऐसा challenge हो, I would ask for a red. So I think Chilwell is struggling, not necessarily because of his own game, but because of the way we've set up. वो उसमें नहीं है इतना अभी agility नहीं है to cover that much space. So he's struggling positionally. और थोड़ा सा हम highline खेलने की कोशिश कर रहे हैं, which is not working because they go overhead and then Chilwell's running towards his own goal every 2 correct. minutes. और वहां पर मे बी ऑल्सो एक ऐड करना चाहूंगा जस्ट ओवर मिकाइल सेड पीपल, आप लोग भी बोलिए. द फैक्ट इज इट्स अ क्लियर टारगेट एरिया फॉर द ऑपोजिशन, और वी हैव कुकुरेया प्लेइंग एट लेफ्ट सेंटर बैक व्हेन वी गो थ्री द बैक, ठीक है. तो वहां पर हाइट इज ऑल्सो क्रिएटिंग एन इश्यू. आई रिमेंबर a couple of headers, I think we just about glanced it back to Kepa for whatever reason. तो वो हुआ था, तो I think Chilwell is Koulibaly is a trying no to brainer. Chilwell is trying to win headers. I don't know what that means. But Cucurella is not much taller either. I think they both, if anything, he might be shorter. So I Yeah, don't he's know how shorter, that. in fact. Yeah, that's correct. और So वो भी लेफ्ट सेंटर बैक that's a खेल रहा है, different something comment like that. about the general height of the Chelsea squad. I think we need to start working on getting taller players in the squad. But left side पे दोनों आपके जो options हैं, like Alonso का saving grace वो कहते थे ये है कि वो we need height in the set pieces, right? But वो करता कुछ नहीं था set pieces में भी. Defensively he was अरे Koulibaly आ non-existent. गया यार. Koulibaly is come on people. Second half I can see Koulibaly is definitely come on. So ये तो no brainer था. Koulibaly coming on because height was a clear issue जो Mikhail has been highlighting as well. But yes, Sterling almost scored Ajinkya, but has he been used rightly in that half? Maybe the second half of the half he's been used a little bit better. फर्स्ट हाफ ऑफ द हाफ भाई वो विंग बैक खेल रहे थे. पता नहीं क्या हो रहा था वहां पर. राइट विंग बैक वो भी इज मोर कंफर्टेबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम व्हाट आई नो. बट एनीवे लेट्स सी. As on the pitch. Aspi is on the pitch. Looks like it, and Koulibaly is on the pitch. ओ हाँ. ये क्या हो गया है, दो चेंजेस. ये एक तो भाई बहुत अलग हो गया सीन. पॉटर हैज मेड अर्ली सब्स्टिट्यूशन पीपल, दैट टू ऑफ देम एंड बोथ डिफेंसिव. जरूरी है भाई, कुछ तो करें, लेकिन the point is I don't think this will solve the midfield issue still. Okay, Silva is still there. So yeah, it's looking like a solid back three with Cucurella Aspi. को उतार लिया. हाँ लग रहा है वो. अच्छा नहीं, हैवर्ट्स को उतारा है. हैवर्ट्स को उतारा एक तो पक्का है. कुलीबाली कमिंग ऑन फॉर हैवर्ट्स.
तो people, what do you think about that? Bike that is much deserved यार. तो Havertz एसपी किसके लिए किसकी जगह आया फिर? एसपी आया है नंबर 32. 32 कौन है यार अपना? मैं भूल पता गया नहीं, यार, एक सेकंड. चलो भाई शायद, आई डोंट नो। 29 तो हैवर्ट्स है. 32 कौन है यार अपना? मैं भूल गया यार, कैसे भूल गया मैं. चेक करने दीजिए. आई बिलीव सो वी हैव चालोबा है 29, क्या? 29 is Havertz, अरे right? कुकरे, यू राइट, कुकरे है ये. कुकरे. वी विल सी कुकरिया मोई. नहीं, कुकरिया हाँ, निकल गया यार. कुकरिया, ही इज नॉट कन्विंस्ड विद कुकरिया फॉर व्हाटएवर रीजन. आई थिंक हाइट ही रीजन हो गया यार, ऑनेस्टली Well, स्पीकिंग. Cucurella at a left back is still viable. Chilwell क्या कर रहा है वहां पे? ऑलरेडी ऑन येलो कार्ड हाँ, है. मैं आई वुड गो विद मिकाइल वहां पे. दैट डिफेंसिवली इफ यू आर, मे बी नहीं. आई थिंक वी नो व्हाट इज हैपनिंग मिकाइल. लेट मी टेल यू. देखिए 1-0 है. तो पॉटर इज लाइक लेट्स सिक्योर द बैक थ्री एंड देन वील प्रॉब्ली अटैक ऑन द विंग्स, जो हैज बीन आवर ट्राइड एंड टेस्टेड अंडर टूकल. So maybe he's looking that way, जहां पर Chilwell gives you more of an option. Already first move here brilliant रहा है. Oh my God, Tyrone Mings with a brilliant interception, almost a goal with the first move, and that was where our wing back play again came into the fore. Why Tuchel is looking like as though 1 minute के लिए how Tuchel is a manager. The way we played that ball, it was basically Loftus Cheek to Aspilicueta and Aspilicueta to Mount. Mount ने ट्राई किया लेकिन मिंग्स ने इंटरसेप्ट कर दिया अच्छा से. Okay, why Chile not replaced? He's on the yellow. Oh, Gaurav, yeah, that's a very important point. Chilwell was also on a yellow. Mikhail, you're right then. That's what I'm saying, right? Between Cucurella and Chilwell, like Chilwell now the rest of the game has to play under pressure. Yeah, I don't know what's happening, bro. Anyway, कोई नहीं. My Mount with an important challenge. It's the same old Chelsea, bro. I'm telling you, by wing play or Mount with our energy in midfield. What has changed? I know it's very early days. I know they can just saying. Uh, थोड़ा सा मुझे okay. लगता है बैकरूम में हायरार्की का मसला चल रहा है. लाइक पॉटर की चॉइसेस मुझे नहीं समझ आ रहे. हाँ, मतलब I think he's probably experimenting, Mikhail. Abhi. It's like jury is out for him also, no? So somewhere down the line. I know it's not a right place to experiment, but like he said, na, is itne matches हो रहे हैं that I don't think they're getting enough time together in midweek and all. Maybe that's जैसा ही also. लग रहा है. हाँ, ये तो प्रॉब्लम है. फिक्सचर कंजेशन इतनी ज्यादा है. तो लिटरली बीच में गेम सिचुएशन के हिसाब से ही जस्ट वांटिंग टू ट्राई समथिंग. अरे भाई कुलीबाली विद अ वेरी डेंजरस पास ऑलरेडी. बट कोई नहीं. पीपल, आई हैव जस्ट रीस्टार्टेड माय टाइम यहाँ पे. होपफुली टुडे इट्स नॉट एज बैक एज वी हैड अर्लियर, लेकिन लुक लाइक एस्पिलिक्वेटा इज प्लेइंग लाइक अ ट्रेडिशनल विंग बैक और स्टर्लिंग आ गए हैं इन मोर अटैकिंग रोल. So that's good to see. That's really good to see. कुछ पॉजिटिव आया है. चैरिटी एफसी कमिंग. अजिंक्य क्या बोल रहे हैं भाई? लग रहा है दैट वी हैव गॉन टू अ ट्राइड एंड टेस्टेड. सो आई फील या मिडफील्ड अभी भी ओपन लग रही है, लेकिन मिकाइल थोड़ा. Yeah, man. Let's see. थोड़ा सा वो they're not pressing as much right now, so that's helping us. Yeah, but देखिए बैकलाइन में why I'm still positive is, see we have a Chaloba, Silva and a Koulibaly. तो वहां पे I am little bit more secure, in terms of headers, in terms of just defense. But हाँ, wings में we are attacking and हाँ, नहीं, it's better. It's better. I think we in the opening sequences we've kept the ball more than we did in the entire first half. ओके भाई. लॉफ्टस चीक वेल डन देयर. यहाँ पे I think Kovacic was fouled, but the referee plays on, goes to Sterling on the right wing. Sterling gives it back for whatever reason to Aspilicueta. The game slows down. Same old Chelsea. वही है, मतलब अब हम ट्रेडिशनल बैक थ्री खेलते हैं ना with attacking wing backs. We go back to the sideways passing of midfield. That's our. I think right now as a tactic we probably, I don't mind it because we need to hang on to the ball for a little bit. हमारे पास Yeah. ball. नहीं, Ooh, that's a fair point. you're right. Loftus Cheek with some good hustle there. I think his height, his body is to use more. यार, as much as I love the guy, यार, that is maybe something जो Tuchel हमेशा चाहते थे under him, which he didn't do consistently. मतलब for his height and his structure, he should do more in
यार प्रॉब्लम use ये है that. कि he's an attacking midfielder, उसको वो defensively because of his physique खिलाना चाह रहे हैं, तो उसकी he doesn't read the game from that mindset. तो उसकी नहीं नहीं, मैं he's out of position too much. तो ठीक है, if he throws his body around, that's good. करेक्ट. I think generally speaking, the oppositions tend not to mark him or close him down as much, press him as much as they do Jorginho. So in that sense, I kind of don't mind him being played in the middle, in the sixes. But it depends. Like, is he able to then control the game? It's not always a given. Jorginho sometimes on his day obviously can control a game. He controls the tempo of the game when he's playing well. So it's one of those things. Right now, I think Aston Villa जिस तरह खेल रहे हैं, I don't mind Loftus-Cheek being on the pitch. I just hope that we are able to control possession a little better this time, this which we are right now. I fear, मतलब again, I hope मैं जिंक्स नहीं कर रहा और मुझे गाली नहीं पड़े, but the fact is I fear a Chilwell red card. मुझे लगता है Chilwell, I don't know, might not carry on without making one of those tackles. यार, the way he's getting beaten again. I think that's a mistake already. Potter ने जो half time पे कर दिया, he took the wrong man off in that position. It should have been Cucurella should have stayed on. जो भी ऑफर करता है Chilwell, I'm not disrespecting Chilwell. I just think tactically right now with him on a yellow, he should have come off. Yep. Thiago Silva heading to balls away. Why are we even letting those crosses in? That's my main. Now, this is something that we've been talking for. I know it's easy for us to speak. Like, in reality is that why does that cross even come back? I think back from the day of Conte second season as well. आपको याद है जो टॉटनम के साथ हार झेलनी पड़ी थी? I remember that game. वहाँ पर I think Eriksen used to deliver. Or I'm like always from those days. Why are we not closing them down when they made the crosses? बच गया यार. Kepa for once looked shaky. बच गया कॉर्नर से. या इंद्रानील देखिए, मतलब to some extent I will not totally disagree that he shined more because of the chances, but also his finishing is not like absolute मतलब world class finishing तो नहीं है, but I feel he's told a little bit more than what he deserves. And coming from City fans, and I've seen a lot of City fans do that. Again, मुझे पता है इंद्रानील आप City fan भी हो, लेकिन for me ये बहुत surprising है यार. मतलब having the stats like he has for City and then you troll him, it doesn't make sense to me. But again, that's City fans. Again, मैं generalize नहीं करना चाहता, but maybe they might not have seen the earlier days of City. इसलिए बोलो, with all due respect, भाई City ने जो improve की है ना as a club, man, I am envious. I must be honest. I am envious. बाकी गेम में क्या हो रहा है अब तक? अभी तक वही है, 0-0 ही है. Nothing is happening much. I think El Clasico is going to start any moment. So that is going to be interesting कि क्या होगा वहाँ पे. Certainly. लिवरपूल मैन सिटी की क्या प्रेडिक्शन है? Yeah, Liverpool just like us, they are losing defenders ना. मतलब they are having Matip out. आज reports है जी Konate is out आज के लिए at least. He had a problem in training or something like that. फिर they are having Trent obviously out. Not that he's defending well anyways. Plus Haaland scoring like he is. तो मुझे लगता है as much as Liverpool had a great midweek result, I think it will be a City win. मैं चाहता हूँ फॉर अ चेंज, आई वांट लिवरपूल टू विन बिकॉज लीग थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए भाई. फार्मर्स लीग मत बनाओ इसको. वो दैट्स ओनली थिंग. यार वो सिचुएशन जो उन्होंने कर दी है ना, वो विद दैट एडिशन ऑफ हालैंड, वो आई डोंट थिंक अब हालैंड जाएगा, लीग छोड़ के जाएगा तो हमें चांस मिलेगा बाकी सब टीमों को. हाँ बिल्कुल इंद्रानी, आई डिडंट मीन यू, I mean certain City fans. But yeah, if we have somebody else stepping up and at least dealing with the rest of the field, it can still be a contest for the EPL. ठीक है, head to head against Man City. Tuchel showed that on our day we can beat Pep as well. लेकिन with Haaland, I mean you have to question. देखी जाएगी. Yeah, I think it's the fact that देखिए they have signed Alvarez. I remember Alvarez is not getting games, so I think it's a mentality also somewhere, ambition mentality. जो we used to relate so much with Chelsea. I know it's always there, it'll never go. लेकिन I somewhere down the line feel वो week in week out वाला mentality ना,
coming यार coming वो from Pep. the thing is कि if you think about the mentality thing, if you just rewind a little bit, so Man City were on the cusp of maybe losing focus, and then they bring in Haaland, and suddenly they renewed focus for the next couple of years all over again, right? Because Yeah. there was some question mark कि ये Champions League नहीं जीत रहा Pep, maybe it'll fall apart, right? But that one signing has galvanized the whole project all over again, right? So that's the thing. If you're not moving forward, you're standing still or you're regressing actually. So they let go of Jesus. Uh, they uh, they let go of Sterling, but look who they Mhm. brought in. Like so, that shows you the intent Yep. from the project. Absolutely. We have to see who else can match that kind of intent, right? So Liverpool, you can say has not matched that intent necessarily. Unka jo ek do signings they have they Mhm. have they panned out so far? I don't know. Injuries बहुत हो गई हैं उनको इस I think season. Fabio Carvalho is very young. I think he looks a good player from Fulham जो आया ना, तो वो हाँ अच्छे वो लगे हैं. लुइस का क्या बना? तो इंजर्ड है. हाँ वो इंजर्ड मतलब आई थिंक लुइस डियाज शुड आई थिंक फॉर मी ही इज द फ्यूचर ऑफ लिवरपूल, लेकिन इंजर्ड है तो इट्स फेयर इनफ फॉर देम. भाई ये एमटीवी कहाँ, एमटीवी में आ रहा है ना भाई एल क्लासिको, सब लोग इंडिया में जो है. हाँ, आ गया चलो. जरा other side. Alvarez will get more chances in cup games. हाँ लेकिन आई थिंक इट डिजर्व्स मोर इन माय ओपिनियन, ऑनेस्ट ओपिनियन में बोलूँ तो, जस्ट मेरा ओपिनियन है. ये Sorry, कौन सा who? चैनल लगा दिया मैंने, एक सेकंड. अच्छा मैं कोई राज टीवी लगा दिया भाई एमटीवी की जगह साथ साथ में. आज एमशे मैन, ये अच्छा वाला कमेंट लगा. आज मेसी को बेंच किया है ना शावी ने. भाई मेसी की यादें भाई, बारसा फैंस कभी बोलेंगे नहीं भाई मेसी को. दैट्स अ फैक्ट, बट ही माइट अपेरेंटली गो बैक, हु नोज. You never know. After what happened in the Champions League, they are like, नहीं यार मेसी के नो. मतलब one thing मैं बोलूंगा, Barca have always had that superstar यार. मतलब I still remember Luis Figo back in the day, Ronaldinho. They had a Ronaldo for some time. Then they had who else? Rivaldo. Then मतलब they've had always a superstar creator, which is हाँ something that in this in this squad थोड़ा inexperience है नहीं. हाँ नहीं इस वक्त obviously Barcelona are going through a transitional phase, man. So अभी हम्म. financially they have had so much turmoil. चल रहा है अभी भी और and they're still kind of known as, ठीक है, they have spent money, but they're also known to be in the market for Bosman transfers, free transfers बहुत ज्यादा. So I एक don't और know. चेंज Mikhail, what is this happening bro? Aubameyang, he's not had a good game, I must admit. He's hardly been in the game anyway. Gallagher coming on for Aubameyang, so looks like oh man, don't tell me, are we playing a false nine with Sterling? ब्रोया ने क्या गलती की है सोच रहा होगा बेचारा. I don't understand यार ब्रोया को क्यों नहीं maybe if I were to be hypercritical, तो आर्सेनल I don't स्कोर है know. तो. He looks like he skips leg day, at the gym a lot. So maybe he needs to build up a little bit more. But उसने जो उस दिन गोल किया था, that showed you कि he's deceptive. Like वो लगता नहीं है कि he has it in him, but he does have it in him in dangerous areas. But I would Yeah, have he is. वही बात है कि अभी इस वक्त we need a person in midfield more than we need a person up front. अच्छा बाय द वे साका हैज स्कोर्ड फॉर आर्सेनल पीपल. भाई साका है मेरे एफपीएल टीम में. just saying. Thanks Mudit for confirming that he scored. यार FPL देखे हुए भी अरसा हो गया, पता नहीं क्या चल रही है. हाँ मैं you know what, मैं I think you were there in the chat ना, by the way. Ziba was there in the chat ना, in the I panel. was enjoying that So we FPL. were helping him out build the team, and you won't believe Michael what I did. The person who hosted the stream, the person who's trying to help Ziba, after the stream मैंने भूल गया खुद का डेडलाइन का, मैंने अपना टीम नहीं बनाया. टीम सेटअप है मेरा भी यार, वो लाइक वही नहीं लाइक लेकिन वो सब सब्स्टिट्यूशंस एंड कैप्टन वो सब होता है ना, आई डिडंट इवन डू दैट. हाँ तो कैप्टन अगर आप सेट ना करो तो पिछले वीक का चलता है ना.
हाँ एग्जैक्टली लेकिन अभी उससे मेरा तो वो हालैंड मैडिसन था कैप्टन पिछले एंड वीक। दैट्स इट एंड इंशाल्लाह। हाँ हालैंड तो है ही लेकिन एक टीम में लेफ्ट फील्ड किया था थोड़ा जस्ट टू काइंड ऑफ गेट द डिफरेंशियल। तो वहां पे मैडिसन मेरा कैप्टन था और हक दिया उसने। हाँ मेरा ही केन विल गो। कैप्टन है एक और टीम में, मैं अब क्या कहूँ। लेकिन अच्छा अब चेल्सी के मैंने डिफेंस में चेल्सी डाला हुआ है थोड़ा सा। आई थिंक माउंट एक टीम में है। यार चैट मजे ले रही है यार। चैट बहुत मजे मजे कर रही है। आई नो न्यूट्रल्स स्पेशली समटाइम्स इवन आई आई लव वाचिंग मैचेस न्यूट्रल। अभी चेल्सी की टेंशन है ना मेरे को तो इसलिए मैं इतना कमेंट नहीं कर रहा। भाई चैट बहुत मस्ती कर रहे हो आप लोग। मैं बोल रहा हूँ करो करो आराम से करो आप। अरे ये रेसलिंग मैच हो रहा है यार। एस्टन विला गोइंग डर्टी। लियोन बेली विद प्रॉपर पुश ऑन RLC but RLC come on, well done, we get the free kick. Do you think Potter is exploring best Chelsea 11 chemistry? Oh, that might be a thing. Look, the chemistry is something that we always underrate. And okay, यहाँ पे talking about chemistry, Mount का अच्छा chemistry हो रहा है with an Aston Villa player और उसको मिलना है yellow 100%. That is for Mount. अरे कुलीबाली को दिया है. I thought Mount fouled it. Again, I know I'm ahead, MyKyle. लेकिन कुलीबाली विद एन इंपॉर्टेंट चैलेंज टू जेकब रैमजे। भाई जेकब रैमजे ना पिट गया है इस गेम में। आई हैव टू कमेंट द गाई। फर्स्ट चिलवेल टैकल आई थिंक वाज ऑन जेकब रैमजे जहां तक मुझे मालूम है। चैट करेक्ट मी। जेकब रैमजे टुक दैट चैलेंज फ्रॉम चिलवेल और नाउ ही टुक अ चैलेंज फ्रॉम कुलीबाली। तो बिग अप टू जेकब रैमजे यार टू एबल टू होल्ड दैट। इज अ यंग गाय। लेकिन अगेन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा एल क्लासिको में अभी तक 0-0 ही है यार। ये बिहाइंड द गोल ये क्या कर रहे हैं यार। मतलब वो एटमोस्फियर दिख नहीं रहा है। तो राइट बिहाइंड द गोल वेयर बारसा आर अटैकिंग इट्स फुल्ली कवर्ड। आई थिंक इट्स प्रॉब्ली अंडर कंस्ट्रक्शन और समथिंग एट द Bernabeu. Imagine Laporta putting Shakira. Oh my god. Oh my god. मेरी हंसी चल चल गई एक सेकंड के लिए बिकॉज केपा ने जस्ट बचा लिया है। हो बट इन एरियल मोमेंट्स ही स्टिल he does not convince me 100%। Mikhail, I must admit that जब एरियल बॉल्स आते हैं ना केपा का आई थिंक म्यूट पर हो आप। Mikhail, are you there? Sorry, I was talking on mute. I apologize. Yeah. Oh, I was. I don't know if you would have said something else, but we might have missed it. No, so I was saying कि Kepa Mendy दोनों are suspect. Neither of them are complete goalies. I think दोनों में problems हैं technically. लेकिन अगर हमारी defense अच्छी खेल रही हो तो usually they're masked. Those issues are masked. अब अगर कैपा को इतना एक्सपोज किया हुआ है, अगर मेंडी को भी इतना एक्सपोज करोगे जितना आज कैपा हुआ है, तो मेंडी विल आल्सो मेक सम मिस्टेक्स, राइट? Yeah, सो yeah. दैट आई थिंक इट्स अनफेयर टू द गोली टुडे टू बी क्रिटिकल, क्योंकि उफ, Yeah. कुलीबाली को कार्ड मिल गया यार। I'm further behind now. क्या हो गया ये मेरी स्ट्रीम को? Hang on. Refresh. Refresh Yeah, I'm going to works refresh sometimes. because I'm more behind than I was earlier. पता नहीं, maybe I'm a little bit expecting too much from Kovacic भी. I think he's looked a little bit leggy आज. I don't know if you agree with that. यार Kovacic. बॉल हमने रिटेन ही नहीं किया for long enough for हाँ, anybody to have shown better form. We are too wide, spread too wide, and asking too much from Kova. And yeah. uh, I अभी think चिलवेल वेल डन यहाँ पे Kova का जो heat एक map मोमेंट। होता है, it's through the middle of the pitch, right? So middle of the pitch में हमारे पास तो बॉल आई नहीं रही ज्यादा देर के लिए. It's mostly going over or through the sides. अच्छा Chilwell had a good moment, huh? Chilwell had a very good moment on the wing, and him and Mount together have won a free kick in a good position. Again, I must admit, in these kind of positions, man, I miss a Giroud and Alonso. The kind of free kicks that they used to take at times. Giroud and Alonso, yes. Yeah, probably from this angle anyway, right foot होता, लेकिन like who's the best free kick taker according to you right now? Your Mount isn't that bad. और कौन हो सकता है? Gallagher, Maybe I think Gallagher, has but I haven't seen him free, do much free हाँ kicks चेल्सी in में नहीं किया Chelsea. है, क्रिस्टल पैलेस में किया था। So between those two, I think is probably maybe Sterling, you can say, but I haven't seen him do much either. Yeah.
I don't know if Oba likes to take set pieces. Maybe he No, can. I've not seen him much as well, honestly. But the Kukurea from the right hand side. Acha, Kovacic is off, people. The moment I say that he's leggy, by what Potter's like, by ho gaya bas tera. Jorginho comes on. Hopefully, some calm lie and we don't get overrun. That's the only. So looks like maybe Gallagher might step back a little bit more in midfield now that Jorginho's come. Hopefully, he does. सच में बोलूं तो we have to keep possession for some time. It's getting tougher. Also, I think Broya should come for Sterling. या एक्चुअली पोजीशन इसके लिए आया है जॉर्जिनो और यहाँ पे ओ भाई साहब हो गया है आ जाओ भाई मैकायल आ जाओ इट इज द माउंट फ्री किक आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इज इट समथिंग दैट आई एम डूइंग टुडे गोल्ड आई डोंट नो गोल्डन टच और क्या बोलते हैं भाई मैंने अभी भी पूछा हमारा फ्री किक टेकर कौन है भाई आप माउंट स्कोर्स अ बैंगर स्कोर्स अ बैंगर फ्री किक 2-0 या इट इज फ्री किक डायरेक्ट फ्री किक ब्रो जो फ्री किक हमने जीता था अभी तक यार वही हुआ है मैं क्या कहूँ तुम्हें मेरा फीड जो है पीछे चल रहा है Oh, Abhi, and is it for real? We spoke about 2 3 things the last few minutes. Exactly the opposite happened. Exactly. So maybe you should continue that doing नहीं that. What आपने you're doing. you predicted के Kovacic is Uh, coming off. Kovacic wala. Then no, I was just questioning that he looked leggy, and then he took him off, and then I was like, Mount is our only option there. यार But माउंट bhai, वैसे minor confused. माउंट को देखो माउंट को गालियां पड़ रही थी 2 हफ्ते पहले एंड नाउ माउंट इज टर्निंग इट अराउंड He is come back, bro. He's a comeback. I'm telling you, Mount को again just throwing some stats there. आपको मैं हर तीसरे स्ट्रीम में थ्रो करता हूँ. People, brilliant, right? Awesome, awesome goal, bro. Absolutely, what a free kick. Absolutely. what a free hit man oh my वो वुल्स goodness वाला वुल्स के अगेंस्ट था ना लास्ट डे ऑफ द सीजन रिमेंबर रैम्पार्ड के सीजन में जहां हम टॉप 4 ट्राई कर रहे थे ही गॉट अ गोल आई थिंक दिस फ्री किक इज इवन बेटर बिकॉज़ ही गॉट इन द फार पोस्ट goalie तो आई was थिंक nowhere near it goalie was इट like I वाज don't know what to do या प्रॉपर टॉप बिन्स लेकिन अगेन माउंट का बाय सितंबर एंड लास्ट सीजन आल्सो ही हैड 0 असिस्ट 0 गोल्स और लास्ट में almost सबको he पता ही है almost tried to do the David Luiz and Lampard type kick lekin he got some bend on it it was supposed to be the knuckleball type I think delivery lekin it worked I'm not complaining yeah it worked that's the bottom line absolutely we got some breathing space honestly we totally have against the run of the whole exactly entire match both goals entire match even second half में थोड़ा better रहे I would थोड़ा agree बेहतर there रहे हैं लेकिन I'm still seeing issues बट या आज देखना लेकिन कुछ फिर भी यार कुछ ट्वीट्स आएंगे ओबामयांग नंबर 9 फोर्थ मैच जो हुआ था लुकाकू के साथ फोर्थ मैच आई डोंट नो आज आएंगे थोड़ा आई एम प्रीटी श्योर आई होप दैट्स नॉट द केस लेकिन I'm not एनीवे complaining man नो कंप्लेंट्स एग्जैक्टली Mount doing things we've needed him to do Okay, so one of us, Mudit is asking, name one winter target for the top 6 Premier League clubs. Okay, interesting. What do they need? Let's go one by one quickly. चेल्सी से शुरू करते हैं भाई मिकाइल किसको लाओगे यार विंटर में सबसे पहले मिडफील्डर डीएम नहीं यार रीस जेम्स के लिए we need cover हाँ रीस जेम्स के लिए तो डेफिनेटली वी नीड कवर वो लेकिन I think इज that's देयर a समवन crisis this is a crisis right now because every match we will be making experiments on the right हाँ wing और बाई चांस खुदा ना खास्ता कल को वापस से हो जाता है देन वी आर इन द सेम पोजीशन if या we आई get one एग्री more injury on the right flank we're basically cooked Yeah, so I agree with you there. So I think I would actually go for two, as in I know that one, but I think Zakaria is quite clear, Mikhail. It was a panic, simple, just to keep the fans happy. Almost, you would say, nahi? I would think it's just to keep the agent happy. कोई agent था जानने वाला जिसको commission देनी थी. They हाँ. signed a player for no reason. But you know I don't know. Maybe Tuchel had some plan for him, but I don't see it. But midfield में यार the point is we know we need somebody in midfield. But किस कौन who is available that's reasonably priced and can do the job. Yeah, that's the main issue right now, the availability. And then Again, what kind of midfielder are you going to get? Are you going to get a CM or are you going to get a DM? no, we need a proper DM in my opinion. I think the fact that Jorginho is that, but without legs. We need someone with that with legs. Simple as that. Or forward passer. So I think one player जो हम almost ला ही रहे थे, who's basically Edson Alvarez of Ajax, but he's not had a good month
इस मंथ में आप देखो तो चैंपियंस लीग में दोनों ही मैचेस में he's not had a very good, in fact nowhere close to good. But I know that I watched enough of Dutch football to say that he's a decent player, but is he that level जो हमें चाहिए? Honestly नहीं. तो availability is an issue. Rice अभी नहीं आने वाला, for all people thinking he might. He will not. As much as I don't mind Rice objectively as a player. I think he's probably the best option Yeah. for us. But we wasted 98 million on Lukaku. Why can't we waste 98 million on Rice? Maybe, right? It won't be as big a waste, is what I'm trying to say. So अरे Real Madrid has scored meanwhile यार. Big news आ रहे हैं. I know Chelsea ने almost concede कर दिया. We've given a corner again. जैसे ही गोल मारते हैं मिकाइल कुछ हो जाता है. Chelsea को पता नहीं क्या हो जाता है. We go into our shell a little bit more, take a lot of crosses which we absolutely shouldn't. But penalty का हमारे appeal हाथ है. में कॉर्नर हो रहा है. Benzema goal, man. Water is wet. Benzema scores again. Love it. That's Love like. it. I don't mind. I mean, between those two, enemy of Barca is my friend. भाई रोनाल्डो नहीं यार, नहीं आने वाला है. हाँ, टॉड बरी थोड़ा ट्राई करेंगे वापस, नोइंग हिम. बट आई डोंट सी रोनाल्डो फिटिंग दिस. डू यू मिकाइल? यार आई यही डोंट सी. प्रॉब्लम है ना कि मुझे लग रहा है कि ये अब दो तीन खबरें आई हैं दैट वरी मी. एक तो ये कि दे वांट टू स्टार्ट द वो क्या शो है बिहाइंड द सीन्स या क्या ऑल और नथिंग और अरे व्हाटएवर. ऑल और नथिंग, अरे वो क्रेजी ब्रो, तो ट्रस्ट मी. दैट combined with the links to players like Mbappe and Ronaldo, and I'm just like this they're more after the showbiz side of the business. गोल व्हाट हो अ गया. मिस स्टर्लिंग ग्लोरियस अपॉर्चुनिटी था, हेडर था, मैं तो लेकिन कॉर्नर देख रहा हूँ. ओके नहीं, उसी कॉर्नर से शायद काउंटर ही हुआ है. अच्छा. तो ओ मैन, कम ऑन ब्रो, स्टर्लिंग. आई नो सिटी फैंस आकर बोलेंगे बोला था मिस करेगा चांसेस. Coutinho's coming on. Oh my goodness. Yeah, actually he's been average bro after वो ओबामयांग जो आर्सेनल में किया था ना आफ्टर, और साला इन लिवरपूल टू सम एक्सटेंट यू कैन आर्ग्यू. Coutinho has done that with the I didn't Aston. It's even not been realize good. that he's still with Villa. Okay, so Yeah. but Well, he had a good impact last season towards the end when नहीं ठीक Gerrard है. आए थे ना. I think he needs to rebuild his own career. So ठीक है. Yeah. Fair enough. So और भाई, और टॉप 6 क्लब्स में और कौन जाएगा बाकी? आई बिलीव दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड, I know Yeah, that a what lot a of cross links by come. Gallagher, man. Yeah. Sterling, okay, it was a good header, but off target, man. Come on, you got to get those on Yeah. target. Like he had maybe a half a second extra than what he anticipated, I guess. Like I don't understand how Sterling got to a header ahead of their center backs, but it happened. Yep. Yeah, it did And it happen. was open goal. He had the right idea. He was going for the side of the goal, like in off target. Yeah. अच्छा, yes, Mujit, I think Manchester United might look for a striker. I genuinely believe that they were going for Sesko. Lukaku's in the वो भी जा market. रहे. I'm hearing Lukaku's in the market. Oh, okay. Cut price is available. चलो बैक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड भी हो जाए वापस से. नहीं मारेंगे मैनचेस्टर फैंस, आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दैट. दे विल लर्न अ लेसन देन मोर देन अस, इन फैक्ट यू कैन आर्ग्यू एट टाइम्स. लेकिन कोई नहीं, आई डोंट थिंक इट कैन बी एज वर्स एज व्हाट वी डिड. रियलिटी वही है. भाई बाकी टॉप, मतलब लिवरपूल तो डेफिनेटली नीड अ मिडफील्डर. वहां तो एवरीवन विल से दैट मिडफील्डर चाहिए उनको, एक प्रॉपर डीएम चाहिए. अब एंडरसन. लिवरपूल का सीजन जिस तरह जा रहा है, something has to change. हाँ, वही उनका भी सेम है ना, जो जिसने, जैसे हमने जकारिया को साइन किया था, उन्होंने आर्थर को साइन किया था. Loftus-Cheek, one touch away from a goal shot, man. Oh, that was Yeah, such a nice good. move. Loftus-Cheek has had decent, second half. Loftus-Cheek, मतलब I बहुत. think this season he's been playing good. उस Yeah. पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए. बस we need to kind of give him the space to grow into his own game. See, but that is the thing ना, उस मोमेंट में भी मतलब where are other people around Loftus-Cheek? मतलब हाँ, there कोई नहीं should be था. an He was option. just running himself. He ran through the channel himself. तो वो एक रीडिंग ऑफ द गेम ना भाई. कुलीबाली with a very important challenge. I was thinking भाई second yellow नहीं हो जाए इतना जल्दी. Imagine if Koulibaly gets a second yellow after coming on a half time, bro. यार, yeah.
Yeah, I Scary. wouldn't be surprised. My दो defenders are on yellows. I don't understand Potter why he kept Chilwell on, because that's making me nervous for sure. And Jorginho, yet again, there's not a single player, Mikhail, जो क्रॉस को रोकने की कोशिश भी कर रहा है. When we know that that is our Achilles heel, you know, defending crosses. I have no idea. And Aspi आज खेल रहे हैं wing back, और all of a sudden Jorginho looks injured, and he's not looking good. Or is it gamesmanship from Jorginho knowing him? अब देखते हैं. I'm hoping it's not an injury. Definitely, even though it's Jorginho, I don't want anyone to be injured. Absolutely, भाई सब लोग बता दीजिए क्या क्या लग रहा है भाई. मतलब why do you think Chelsea को इतना luck मिल रहा है? That's what the question should be, in terms of not conceding in the last 3.5 games now, despite giving chances away. Is it the opposition is bad, or is it basically Kepa, good, or a bit of good, both? I don't know. good hustle by Koulibaly to Yeah, it was a good one, clear but that. very important tackle ना वो एक second वाला. यार वो इनके वही जो वो players, नहीं, वही मोमेंट मैकल में बोल रहा था ना, जो आपको याद है राइट सेंटर बैक में जो जूमा खेलते थे ना, तो जूमा हैड दैट थिंग इन हिम to get to those tackles, which is kind of underrated for Zuma, in my opinion. I don't know. Zuma positionally in a back four, Zuma made mistakes too. But Yeah, Zuma I used to like for his offensive contribution more than defensive. And yeah, yes, set pieces, में he was a good threat, person to have for aerial, definitely. Yeah, for aerial. very good leap and a good height plus strength He plus did have a good leap in him. Yes. of course, and he came. आपको याद है तो Manchester United, ironically, he got injured against Manchester United, and that was a bad injury. So him coming back, I don't think that's something that we've given him credit. But I agree. Like we started playing out from the back वाला चीज होने लगा ना, तो Zuma slowly but steadily kind of became a But misfit Zuma with we that. sold, so Zuma's not coming back. It's not like a loan or anything. So, Yeah, so it's a proper Zuma's sale. gone. Zuma's gone. But I'm sure there's other options available here. We can Cucurella bhi हमने पकड़ लिया ना, so I'm sure this ownership, like when they go after somebody, at least they give it a, a good run. बाकी आगे Yeah. player आए ना आए, that's a different problem. Like financially, I think they've been willing to spend. कोई अच्छा option अब इनको देखना चाहिए, लेकिन I just don't want us to become a media circus, man. Uh, Chelsea has not been about showbiz; it's been about results on the pitch. So Unfortunately, did you see Drogba's comment? I avoided reading into it because I don't want to get anti-ownership too much. But क्या बोल रहा था? Can you tell me? He basically said that see Chelsea, no matter what higher and fire वाला चीज होता था, but we always had some principles, like certain things, like people not getting fired at the lowest of levels. That used to be the last thing in Chelsea ever, and now, यार like वो say I think वो physios. जो medical staff में जो firing हुई है वो I think that was because of the Fofana transfer. मेरा अपना like anecdotal जो observation है वो ये है कि I think Okay, that वो जो उसका जो medical हो रहा था and history. then Mhm. he had to fly out to the US. It sounds like कि उसको fail कर दिया था medical में. So then they went around him and got their own doctors to say okay to Fofana. और उस चक्कर में वो जो Hmm. फॉल आउट हुआ है उसमें यूएस ओनरशिप हैज वेरी नो नॉनसेंस. वो either you're with them or you're out. So Right. वो I think पावर स्ट्रगल चल रही है क्लब में in that sense कि they are trying to. I don't blame them. Like if you're gonna set up a new project, a new team, then you need people that are on board that are not resenting the changes, right? Change is not easy. Human nature, by nature, people resist change. Right. So it's almost better to just start fresh. Like, how many changes can you make in an organization, in a team? Sometimes it falls apart if you make too many changes too soon. And we could argue we have made a lot of changes. Like पूरा आपका back office तो पूरा गायब हो गया. It's all new. हाँ, It's, मतलब it's वही है ना, it's मतलब not even new. There is nobody. It's a gap. basically there has to be some continuity somewhere, is what Drogba I think probably alluded to. कि Yeah, यार वो actually check. I think Drogba का check. check की वजह से I think the Drogba was unhappy because check was a major. Czech was like a neutral in this. Czech was a player's
representative in the club hierarchy, right? So Yep. especially from that generation. So that did not sit well with anybody, but वो check खुद छोड़ के गया. I don't think they wanted him to leave. हाँ मतलब वही है ना, रिपोर्ट ये थे Lekin कि चेक नाखुश था ना, certain. maybe he was pushing for Lukaku to come back. Maybe that was the problem. I don't know. I believe Anthony is cooking. Mudit, thanks for sharing with us against Newcastle. Yeah, Jorginho ने आके थोड़ा settle तो किया midfield को मेरे ख्याल में. यार वो एक वॉइस है, मतलब आई नो दैट यू ही इज नॉट समवन दैट यू वुड लाइक से वाओ ऑन द बॉल एटसेट्रा, यू नो, सो मेनी टाइम्स बहुत कम करता है दोस पासेस व्हिच एक्चुअली इज केपेबल ऑफ नहीं, मोर देन in दैट. this context, game में we just need to hang on for a few more touches in the midfield, right? So I think he's helping with that. Like you remember na, मतलब why was Gilmore appreciated at Chelsea? In my opinion, the few times that he played, he was appreciated because even at his age, he was someone who exactly knew the next pass, he know the positioning, वो orchestrate करता था for others. Yeah, well, you have it or you don't, right? So, Yeah. players like Lampard, Fabregas, Gilmore, you can say was trending towards that kind of a style. They could play on the turn, and they already knew where the ball was going to be Yeah, they. sent. तो वो आपका होता है ना कि you kind of constantly keep scanning the pitch behind you, around you. वो either Mhm. Jorginho doesn't do that. Jorginho is closed from that side behind him, so he just passes towards his own goal. Wow, Because he, people, bhai, if anyone does not praise that pass from Ruben Loftus-Cheek, please, यार, भाई, as much as I know हम एल क्लासिको देख रहे हैं, मॉड्रिच का पास हम बोलते हैं to Rodrigo last season quarterfinals. But this was a fantastic outside of the foot pass by Ruben Loftus-Cheek, and Sterling almost got it there, if not for the Villa keeper, of course. But Southampton 1-1 हो गया against West Ham for people interested. And yes, so for people joining, भाई Mount scoring a brace यहाँ पे. Hopefully जो भी join कर रहा है like कर दिया stream को. Okay. अच्छा अभी भी 1-0 ही है. आई एम जस्ट वाचिंग लिटिल बिट ऑफ एल क्लासिको भी साथ साथ में. पीपल, यस, मैंने वो भी डालना था ना स्कोर, मैं भूल गया डालना. चलो डाल देते हैं. oh my goodness, Sterling थ्रू बॉल अच्छा था वैसे, लेकिन स्टर्लिंग के बारे में क्या आपका ओपिनियन है यार? इसका फर्स्ट टच के बारे में टच भी नहीं हुआ. He didn't even get नहीं to. देखो, स्टर्लिंग फॉर मी, द वे चेल्सी हैव बीन ट्राइंग टू प्ले हिम, दे हैव ईदर प्लेड हिम ऑन बेसिकली अ रोल जहां पर उसको ज्यादा डिफेंसिव ड्यूटीज है, और वी हैव प्लेड हिम जहां पर he is getting the ball and he has to then recreate for himself and score. He is a person who should be on the run. तो अगर आप you have a person holding up, Sterling should be the guy who should be on the run, or he has a better finish than most others. I'm not saying he's the best, लेकिन वहां पर you need him. I don't think we have used him facing forward to the goal as much than what we would I have think liked. we are asking him to do multiple jobs, and Yeah, in exactly. that we're losing something, because Yep. he's not It's being so bad. utilized Wow. in the way he can be most dangerous. अच्छा ये यहाँ पर चेल्सी के फ्रंट लाइन में हाँ, हमेशा हमारा ये चैलेंज रहा है कि we ask too much from our attackers, because we expect everybody to be a Drogba or a Costa. what lead score. Oh, अरे I hope it's a legit goal यार. I know it's just half time वहाँ पे. I know match was abandoned for a few minutes, right? तो वहाँ पर अभी half time ही हुआ था, if I'm not wrong. एंड हाफ टाइम के बाद में पैट्रिक बैमफोर्ड एक्स चेल्सी मैन केम ऑन फॉर लीड्स, लेकिन मुझे लिखने नहीं रहा, मुझे माय स्ट्रीम इज स्लो और व्हाट, आई डोंट नो, लेकिन देखते हैं व्हाटएवर हैपेंस. आपने देखा वो लॉफ्टस चीक वाला पास, लेकिन To Sterling? या दैट आउटसाइड ऑफ द फुट वाला, मैन, दिस वाज लाइक, मतलब लॉफ्टस चीक, आई थिंक इट्स अबाउट अ कॉन्फिडेंस आल्सो, राइट, समवेयर डाउन द लाइन यू Yeah. आर हैविंग कॉन्फिडेंस ऑफ प्लेइंग हिम इन दैट मिडफील्ड टू. अगर if we किसको कार्ड मिला, अमाउंट को कार्ड मिल गया, oh my god. हाँ, ये दोनों साथ में गैंग अप कर रहे हैं, गैलेगर और अमाउंट. Yeah, सिस्टमैटिक फाउलिंग. last 10 minutes hai, we just need to see them through and get the result. I don't care Yeah, how we're playing. that's all we need. It's going to be a scrappy result. Let's just get the win. Oh, man, Sterling, well done. He kept the थोड़ा ball. physicality बढ़ाई है Come on, हमने well, भी. what a pass. Oh, Sterling, nice shot. लेकिन this was a good attempt by Sterling. Well played. आपको दिखेगा in few seconds, but
अच्छा, फ्लैश स्कोर इज द फास्टेस्ट. ओके, या दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फ्लैश स्कोर. आई बिलीव. मैं देखता था फ्लैश स्कोर में देखता था टू बी ऑनेस्ट, बट वहां पर ना द थिंग इज इट ओपन्स वन मोर विंडो सब होता है, तो फॉर अ कंटेंट क्रिएटर बिकम्स लिटिल बिट क्लमजी टू शो इट ऑन स्क्रीन. तो दैट्स द रीजन आई डोंट शो इट. लेकिन आई हियर यू, वो मैं ओपन रखूंगा मे बी. थैंक्स फॉर दैट एज ऑलवेज. भाई अभी तक नहीं दिखाया यार footmob.com तो लीड्स का. ये क्या हुआ है? डिसअलाउ कर दिया क्या गोल मुझे चैट में? क्या लीड्स का गोल नहीं अलाउ हुआ? पता नहीं, मेरा तो दिखा रहा है कि नहीं हुआ अभी तक गोल. आई डोंट नो, लेट्स सी. डगलस लुइस एंड गैलेगर माउंट हैविंग अ बैटल. अभी ओल्ड इंग्लिश स्टाइल कर रहा है भाई माउंट. देखिए माउंट इज लाइक गेट्स हिज बॉडी एनीवेयर एंड एवरीवेयर ब्रो. Sterling had a मतलब good कांट chance, man. Come on, you पीपल got to do क्वेश्चनिंग more हिम. with from those आई हैव टू क्वेश्चन situations, हिम. Sterling. ये हमारा थोड़ा फॉरवर्ड लाइन में ना कंप्लेसेंसी है कि when we get that ability, that clear shot on goal, सीधा गोली को मार देते हैं. राइट. अच्छा, बाय द वे गैरेथ साउथगेट, नो दैट इट मैटर्स टू अस मच, लेकिन ही इज देयर इन द क्राउड. नाइस क्रॉस यहाँ पे. स्टर्लिंग स्कोर कर दे भाई प्लीज. नहीं किया, नहीं किया. कोई नहीं. नाइस डिफेंडिंग बाय यंग आई बिलीव. लेकिन गैरेथ साउथगेट बीइंग देयर, डू यू थिंक अ लेट रश ऑल ऑफ अ सडन लॉफ्टस चीक हैज अ चांस इन द इंग्लैंड टीम? जस्ट ऑफ ट्रैक तो Yeah, पूछ रहा हूँ. honestly, I'm very selfishly gonna say I don't want him in England because एग्जैक्टली, आई he's gonna वांटेड द he's सेम. gonna get injured and we're gonna lose him again. So अभी खेल रहा है Chelsea के लिए this season we need him. So let him be, let him progress. We don't want him burning out or getting fatigued and getting injured again. ट्रू ट्रू. तो अरे मेरा ये स्टैंड एक्चुअली सारे चेल्सी प्लेयर्स के बारे में है. बाय द वे, इट्स नॉट जस्ट फॉर Loftus-Cheek. I don't like any of our players playing for England. That's very selfish of me, but that's how I am. Because what happens is invariably our players get injured on international duty. नहीं नहीं, But ठीक है, World Cup आ आई रहा है, I हियर get यू. it. World Cup आ रहा है, I get it. I don't want to say कि I don't want them playing representing at the highest level. I do. I just don't want to see injuries. So the thing is कि इंग्लैंड की मिडफील्ड में कौन ऑप्शंस हैं? वही हैं, केविन फिलिप्स है और वो भी इंजर्ड है. आई इंजर्ड है नो वो. इज, He's बट not available. या कैलन फिलिप्स हैज बीन इंजर्ड फॉर अ गुड व्हाइल नाउ. तो फिर आपका यही रह गया आपका वेस्ट हैम बेलिंगम और वाला राइस इज व्हाट दे आर प्लेइंग राइस स्टार्टिंग. एंड. बेलिंगम, बेलिंगम एंड राइस. तो बेलिंगम के आई थिंक बेलिंगम मोमेंटम वाइज probably is a better name, but Loftus-Cheek can do a job. I'm not saying he can't. I'm very selfishly going to protect Loftus-Cheek नहीं, द because रीजन आई वाज जस्ट आस्किंग दैट, क्यों मैं बोलता हूँ, बिकॉज अगेन इतने सारे राइट बैक्स मिसिंग है इंग्लैंड के लिए, राइट? और ही कैन प्ले राइट विंग बैक जो साउथगेट लाइक्स एज वेल. तो प्लस ही कैन प्ले इन मिडफील्ड, तो ही गिव्स यू दोस टू ऑप्शंस. तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ही माइट जस्ट बी थिंकिंग, आई फियर दैट, although I don't want that either. I don't want it, man. I can guarantee you he'll get injured on if he goes for the World Cup and actually plays. No, no, exactly. Knowing Loftus-Cheek even more so, and वो knowing he's made Chelsea as of well. glass. उसको उसको he's gonna get injured. अभी खेल रहा भाई है तो ब्रोया खेलेंगे. कमिंग ऑन फॉर 2 मिनट्स यार, ये थोड़ा सा बेइज्जती हो गया यार. मतलब कम ऑन, एज मच एज किसका? आई लव द ब्रोया कमिंग ऑन नाउ, 88 89th मिनट में आ रहे हैं यार. कोई नहीं, वो तो टाइम वेस्टिंग सब हो सकती है मे बी, बट हाँ बट I don't know, man. Broya needs to stay patient. I think he will do great things if given the minutes. So we just have to persevere with him, and he has to persevere with. हाँ, उसको मतलब ऑब्वियसली हम विल बी टॉकिंग ऑन मिडवीक का गेम के बारे में, लेकिन मैन मतलब मैनेजमेंट थोड़ा सा अच्छा हाँ, चाहिए और चाहिए. और आप यू राइट, देयर मे बी द फैक्ट दैट ही इज लुकिंग एट ब्रोया स्टार्टिंग इन मिडवीक. Hopefully, यू नेवर man, नो. because that's all he needs to do is just balance it. I don't mind if he's not picked for every game, but then give him some minutes somewhere, right? So that it it it, it, it evens out. It's a राइट. big squad. Everybody wants game time. You can argue some people deserve more game time than they get. So it's a balancing act. वहाँ पे man management comes in. ठीक है, it is what it is. ओके, यहाँ पे एक गंदा चैलेंज आई बिलीव ऑन थियागो सिल्वा, बट कुछ दिया नहीं गया. रेफरी प्लेइंग ऑन. मैं एक सेकंड में, मेरा दूसरा स्ट्रीम अटक गया है तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिफ्रेश इट.
Oh man, I hate Tata player, whatever it is. Liverpool win will be good for us. Koulibaly changed the game. Darren Bolter. They are injury scare again, man. Don't tell me. Thiago Silva this time. क्या हो गया भाई? I think उन्हें एक challenge डाला Dendonker and him had a 50-50 kind of a thing. वो तो ठीक है, as long as वो it's not one of those किसी ने चैलेंज नहीं किया और वंजर हो गया. That's more scary. वो हिट्स वगैरह तो Yeah, लगती yeah, रहती that's हैं. true. That's That's okay. true. Hopefully it's not Since as our bad. arrival of Potter, I'm seeing 18-19 RLC. I don't know why. मतलब अभी भी गोल स्कोरिंग में 18-19 में at that point he was even scoring goals. That's one aspect that he'll surely work on a little bit more. I hope यार so. वो चक्कर ये था कि 18-19 में he was being played as a The foil 4-3-3. or around Hazard. So he was Yeah. almost like emulating a Hazard in where the areas of the pitch he used to play in and how Well, he used he to has those runs in him. He has those overlapping play. things in him. तो पर वहां या पर उसके बाद से हमने उसको वहां पे खेलने नहीं दिया और हमारा यू कैन आर्ग्यू के स्टाइल बदल गया. वी डोंट हैव दैट फ्री रोमिंग role midfielder. there. Yeah, yeah, Now yeah. we focus on a high press more. उसमें हमें थोड़ा सा इंडस्ट्री चाहिए वहां पे. That's why Mount gets so much game time because we need somebody there that can hustle for 90 minutes. So not necessarily how Loftus-Cheek plays. I'm not saying it's wrong because if you look at Messi के बारे में भी यही कहते हैं कि he's walking for most of the game, right? But then when he moves, he moves. So you can argue that running for the sake of running is pointless sometimes. So Haaland का भी देख लो आप तो Haaland reads the game and he's not running the whole game. He slows down, tries to read what's happening and then find a gap, find a run. Um, so there's no right or wrong there. It's just about what fits the squad, what fits the need of the manager, the philosophy, the tactics on the day. Yep, yep. But अच्छा it's यहाँ always पर ना nice. It's always nice to see Steven Gerrard. Um, लूज एब्सोल्युटली यस ब्रो. मतलब मैं तो वापस से रिपीट करता हूँ, स्टीवन जेरार्ड इज ओवररेटेड एज अ मैनेजर. आई विल से इट. हाँ, नहीं वो मैनेजर छोड़ो एज अ प्लेयर एज अ मैनेजर I like to see his face when he's facing Chelsea no matter. आज पता नहीं, हम देखा वी डिड हु एम आई ब्रिलियंट, एक हु एम आई हुआ था ना आज. यार तो वो एक्चुअली उसमें मैं इतना लेट उठा कि I had to नो आई choose कैन between इमेजिन, वहां तो बहुत जल्दी था. I had तो to उसमें choose अगेन यू सी. between the Who Am I and the pre-game. तो मैंने फिर या pre-game दो डाल नहीं, दिया. जो स्टीवन जेरार्ड का एक था वहां पे एक मोमेंट वी हैड पुट 11 वाला ना, उसमें people don't realize that actually it was the latter part of his career. Steven Gerrard was played in front of the middle too. By the way, Real Madrid score one more, bro. Valverde, bhai, what an engine he is, bhai. Valverde scores and it is 2-0 to Real Madrid. Barcelona in the bud, man. You have to say, man, as much as I know Barcelona fans won't like it. Like, I was just saying, yeah, Lampard, na, towards the end, I think maybe MyKyle will back me. Mourinho के जो I think 2013-14 season Lampard actually still played central midfielder as a deep line playmaker as well as a tackler, नहीं? And I still look back to that Lampard mentally in my mind's eye. He used to always be scanning the pitch behind him, around him. So when he did get the ball, he was able to transition so fast. Okay, it was almost at par with Fabregas' level of distribution from that part of the pitch. The Fabregas को हमने pivot में खिलाया. So Fabregas was that magic. He would just unlock defenses with that one pass. So Lampard and his chemistry with Drogba back in those days. I think Drogba था तब. I could be wrong. But Drogba नहीं नहीं है. Drogba he come back the following season again. लेकिन हाँ, अच्छा, I but think still that Lampard has season that ability. Dembaba was there. So Lampard knew before receiving the ball where the ball was going to be sent next. So he had that ability to scan the pitch always before receiving the ball. So you can argue that Jorginho is slightly lacking in that. He doesn't play the game that way. You can say that Gilmore played the game that way, where he kind of knew what he was going to do with the ball before he got it. Yep. So Loftus-Cheek का ये है कि Loftus-Cheek can create a little bit of space on the ball because of his physicality once he gets it, and he can drive forward a little bit like Kova does on the turn. So I'm hoping that some of this starts gelling into a style of play that he can avoid injuries but also be consistent in performing in that role. It's not ideal role for him playing in a six. Like, if he's given some license to move forward, I think it suits him. Especially Yeah. हमारी right side पे हमारी
generally speaking, if you take Reece James out of the conversation, we don't have a lot of bite on the right side of the pitch. Reece James injured, he's already out, so we absolutely don't have too much to talk about on that side. So Loftus-Cheek playing through on the right side of the midfield, driving through the right side of midfield. I like seeing that. Yeah, by the way, I know that by El Clasico में Real Madrid fans are excited to the next level. I can imagine. Or yes, Darren, don't worry. I think Thiago Silva should be fine. I don't think he's as bad as what it looked firstly. Uh, yeah, Aston yeah. Villa Aston Villa player injured हो गया यार. Mings है Mings, कौन? Mings. अरे मिंग्स तो वही है ना मतलब Feelings hurt हो गई. he's one of those players यार who's again मैच बहुत खत्म ही हुआ इंजरी कि नहीं हुआ अभी? मैच नहीं अच्छा नहीं, इंजरी टाइम पता नहीं एक्सटेंड हो क्यों गया. हाँ इंजरी की वजह से शायद they have extended the time a So little they bit. should take him off the pitch and continue the game. I mean, टाइम जाया कर रहे हैं. अच्छा यार गोल वोल नहीं हुआ ना मुझे तो आपका अगर आगे चल रहा है तो स्ट्रीम मैन यूनाइटेड न्यूकासल अभी भी यार चल रहा है मेरा तो वहां पर अगेन यहाँ पर एक लॉफ्टस चीक विद सम ब्रिलियंट रन्स इन द सेकंड हाफ यार मे बी जस्ट मे बी मिकाइल जी. ओबामयांग को निकाल दिया राइट अपन तो मे बी द फैक्ट इज इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट ऑफ सेइंग टू लॉफ्टस चीक भाई यू बी द अटैकर एक false attacker through the middle with your runs and get your get the wide men into play more जो Yeah, Aubameyang नहीं especially कर पा with रहे थे Gallagher being there too, right? So yeah it's almost like they're trying to create that overload in that part of the pitch where they have players that can do the same thing. yeah अरे भाई अभिषेक बिग अप यार आपको अभिषेक गॉट इट एब्सोल्युटली राइट आई नो दैट एंड यस अभी हो गया फाइनली स्टीवन जेरार्ड के चेहरे पर जो लुक था आई लव दैट एब्सोल्युटली लव दैट लुक आई स्वेयर इट मतलब वो एक होता है ना जो प्रसन्नता मिलती Smoldering. है He's smoldering. He's like, my nemesis. No, This मतलब again, I must say that he's a fantastic individual in terms of his playing ability. Fine, fair enough. लेकिन I don't know why, for whatever reason, for me, he gets that extra, by default. nice run by Loftus-Cheek, man, Yeah, into the soft corner. box. But कोई नहीं यहाँ पे हो गया यार मेरा तो full time यहाँ पे Mason Mount with a brace and Abhishek getting it right. Yes, absolutely. And as things stand, all of a sudden, yes, I know Real Madrid fans तो exalt कर रही है, but भाई आपका तो रोज का है हमारा नहीं है 4 हफ्तों के लिए Mikhail, how did we manage to get a clean sheet? Please, अगर if someone can explain me how we managed to get a clean sheet in that game, if not for I, Kepa. this result is completely against the play of the game. We scored Yeah. 2 goals when the game was completely going in the other direction. Hats off to Mount. Single-handedly, he kept us. He got us the goals, but hats off to Kepa. I think equally or more Mhm. importantly, he saved more goals. He saved probably 7, 8, maybe even 9 goals in this game that were blinders that were amazing. So I think second half, the defensive changes really worked. The defensive organization helped, and this kind of tells you, right, there is a role for Aspi and Koulibaly to play in this lineup. It's not like they're not up to it; they are up to it. We just need to figure out how to set up against teams. Right. Good Or result, man. even brilliant, Mikhail. The news coming is like Mudit also confirmed. हाँ हमारा मेरा stream finally it has stopped. And Manchester United. Yes, again as an opposition fan, I have to say that I'm definitely happy. The fact is they've dropped points. Arsenal, on the other hand, basically are looking like they might get 3 points. So that is not great news अभी के लिए. But again, we are focusing on Chelsea for the time being. And yes. हम बात करेंगे about the El Clasico as well. Barcelona next 3 fixtures: Villarreal, Bilbao, Bayern. Oh my God! Despite Mason's 2 goals, my man of the match is Kepa. Anshul, I think I'll go with that as well. मतलब, would you say despite Mason's goal, would you go with Kepa? Is that so important or Mason? It's a tough one. I would say that Kepa, without his heroics, we would have been embarrassed today. So Mhm. it would, but second half, man, we kind of turned it around a little bit. We had a better showing, but first half, man, Kepa kept us in the game, and that could have been an embarrassing scoreline at halftime. Yeah, actually, again मैं यहाँ पे अपडेट करता था कौन से फुल टाइम के स्कोर सो पीपल नो
what is happening for people जो सब matches नहीं follow करे. By people, again, Chelsea have won 2-0 away to Aston Villa and Manchester United have drawn 0-0 against Newcastle at home. Having said that, यहाँ पर मैं quickly दिखाना चाहूँगा what has happened. Let me actually try and remove this. Okay, watch अभी के लिए remove कर देते हैं, clock जो है अपने सर के ऊपर. लेकिन मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ एस्टन विला चेल्सी का जो रेटिंग दे रहा है अपना वेबसाइट. लेकिन भाई सेकंड हाफ में क्या चेंज देखा मिकाइल आपने, जो बिकॉज ऑफ व्हिच वी स्टार्टेड टू विन मोर बॉल्स? व्हाट डू यू थिंक, इट वाज जॉर्जिनियोस कामनेस और वाज इट द फैक्ट दैट कुलिबाली केम ऑन, थोड़ा सा सिक्योरिटी मिला? व्हाट वाज I think द both मेन of them रीजन? together, plus the fact that they didn't come out and press us higher up in the pitch, and that gave us some breathing room to kind of just pass the ball around, get 3, 4, 5 pass sequences. जो कि नहीं हो रहे थे first half में. We couldn't put together a sequence of anything. It was just one-way traffic. Mostly we would just clear the ball and they would come back at us, and clear the ball and they would come back at us. So I think it's just settled the nerves. I think it was a brave choice to keep Chilwell on the pitch after halftime and taking Cucurella off. Like Chilwell was on a yellow, but it paid off in the end. He was able to see out the 90 minutes, but it got a little stressed. Uh, We did. Stressful because they were playing on that edge where any foul, any challenge could have been a second yellow at that point. But Chilwell he saw through an important 90 minutes in his own recovery and his own comeback into match fitness. So I'm happy for that. Good result. Hats off to Mount. Two excellent goals. You can't take anything away from Mount and what he's doing in the past few games. We need to see this being mirrored by some of the players around him as well. We can't just ride one player, but I'm here for it. Today he got us the 3 points, and we're in the top four as a result, I think now. या अगेन यार, बिग अप टू जस्ट स्पोर्ट्स जो ज्वाइन किया हमें. जस्ट स्पोर्ट्स यार, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा. अगेन नो डिसरिस्पेक्ट यार, मच लव फॉर यू टू कम ऑन, लेकिन द फैक्ट इज यू आर टेलिंग मी टू टेक द चैट. आई डोंट नो यार, मतलब आई डोंट नो, यू आर कमिंग अप 1 सेकंड और आप चैट कर रहे हो, टेक माय चैट. मतलब हम सभी कमेंट्स दे रहे हैं भाई. हम वन बाय वन वी आर कमिंग टू इट. वी कम एंड टेक एवरीथिंग. अगेन आई डोंट थिंक एवरी कंटेंट क्रिएटर इज पॉसिबल टू टेक एवरी कमेंट. आप रहिए, आप बात करिए. वी आर स्पेंडिंग टाइम, वी डू अ लॉट ऑफ चैट्स ऑलवेज जस्ट स्पोर्ट्स, सो डोंट जज अस ऑन दैट. लेकिन बिग अप आपको, आपका भी चैनल, आई नो that. But we are now discussing the game. We'll come to other things as well. Absolutely. We'll try to stick to the topic for timing like we always do. Much love to you. Chaloba 6.9. Okay, Abhishek बोल रहे हैं. Honestly, मतलब अभिषेक, आप don't go by Howard's rating. Again, I'm telling you, Abhishek, this is a misprint. It's not a true rating. But what would you rate Chaloba, to be honest? Today, Chalaba wasn't bad. He wasn't great. He did the job. I Yeah, think. मतलब that's what is required from Chaloba. नहीं तो मतलब honestly speaking, मतलब Yeah, but what does that mean? I think if Mount doesn't have the game that he has, we wouldn't have had much to show for our day today. So in that context, I'm not trying to be too cynical, but I don't think in terms of moments he did too much today. He did a job, so I would give him probably 6.5. मतलब अराउंड द रेटिंग व्हिच हैज हैपेंड. अभिषेक एक्चुअली वही अब बस हम बोल रहे हो, लेकिन मतलब फॉर मी डिड ही स्टैंड आउट, डिड ही हैव टू डू दैट? प्रॉब्ली नॉट. बट फर्स्ट हाफ में मैं बोलूंगा अभिषेक दैट व्हेन वी वेंट फोर एट द बैक एट टाइम्स, वहां पर आई वाज सीइंग अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ अटैक्स गोइंग. यस, उसका अलोन नहीं था जॉब, बट फॉर मी he's still improving. But Havertz, yeah, definitely 1.7. Anshul, वो मैं disclaimer डाल दिया हूँ, that is a mistake from the website. MyKyle has corrected it already. और yes, by the way, Just Sports यहाँ पे पूछ रहे थे, is it is it possible Ronaldo, Oba and Raheem Sterling play a 4-3-3 with Ronaldo as a left winger? Come on, which year are you in, Just Sports? मतलब I don't even want to go to MyKyle there, because I think Just Sports भाई, आप एक sports content creator हो. अगर आप बोल रहे हो Ronaldo playing as a left winger, sorry bro, much love to you, but I think you're Drogba living को in भी a ले different आओ, era. ड्रॉगबा को भी ले आओ, नल्का को भी ले आओ, वही टोरेस है को ले मतलब आओ, भाई, रोनाल्डो प्लेइंग एज अ स्ट्राइकर भी आजकल कॉस्टा को दैट ले पेस आओ. वी आर क्वेश्चनिंग, एंड यू आर टेलिंग लेफ्ट विंगर भाई. मतलब कम ऑन ब्रो, आई The वोंट एक्सपेक्ट point दैट is, फ्रॉम I यू. get it. Like Ronaldo is going to be, he is
Ronaldo, but you can't expect 90 minutes from him every game at this level anymore. I feel, Yeah, yeah, especially not on a high press, right? So then you have a yeah. luxury player basically. Okay, you can probably do that too, but then it kind of begs the question that what are you trying to accomplish? Like Mhm. it's not like we're in the title race necessarily right now. We're trying to be. I think we're in a top four race, realistically speaking, and anything that comes after that is a bonus. Whether it's a cup or if we're able to do something, in the league, I don't think we. I think it's premature right now. We're nowhere near the top of the table Yeah, exactly. in terms of the consistency needed to be at the top of the table. And also, like, अभी भी work in progress big time है about, even Potter is not sure about what exactly works for him, what does not. So jury is out in terms of a lot of players. I know अभी भी हम खुद question कर रहे हैं Havertz को इतना minutes क्यों मिल रहे हैं? I have no idea. I have no answer for that, to be very honest. But it is what it is. Like, ठीक है, Havertz is like in and out, on off type of player. Like in today, whatever they had in plan, it didn't work because we just didn't have the ball in those areas in the first half of Mhm. the. So he was basically waste of space. So at that point, either he drops back into midfield and tries to but the way Aston Villa were playing and the way we had set up, midfield was not even in the picture. It was just going, over and over and over back into our box. So the halftime changes were needed. I actually was hoping he would make changes in the first half even, because Kepa was keeping us in the game. I don't know how we saw out that phase of the match where it wasn't that Villa were playing that great. It just was that we had such huge spaces in midfield. They were Mhm. just walking through us over and over and over again. They were not doing anything fancy, anything special. And we are lucky. Kepa, hats off to him. He kept us in the game in the first half. Second half, mein, Potter came out with changes. Aspi and Koulibaly came on, and I think Jorginho. I don't know if he came on right away, but Jorginho also came on, and suddenly, you were talking, okay, it's a little bit backward sideways, but it just gave us that breathing space to kind of get the ball, keep the ball, and get out of that constant panic defending mode that we had been stuck in for large portions of the first half. Yeah, and I and, think and again, मतलब, it's credit to थोड़ा सा मतलब Loftus Cheek as well, because Loftus Cheek kept the ball really well and ran with the ball very well. in terms of moments. I think when Loftus-Cheek gave me three, four, five different moments in the game where I was impressed by what he did in those situations and was able Mhm. to progress the ball. Did not really materialize into anything after that, but not necessarily his fault. Some of the crosses that he passed on were cleared by the defenses for corners and whatnot. So you can't really blame him for that. But just that energy in midfield to drive through the midfield, to drive through the middle of the pitch, to drive through, beat the press, and then come out with the ball through it. These are positive things, and I like to see it. Kovacic usually does these things, but on the left side of the pitch. So on the right side of the pitch, it's a different dynamic to have somebody driving with the ball. Jorginho never drives with the ball through the right side of the pitch. So it's nice to have that kind of change, and that then gives the ability for maybe a Chilwell to ghost in from the left, right? But we still haven't gotten those connections working, that synergy going too much. It will come with time. Yeah, bilkul. And yes, by the way, I know that there are a couple of Real Madrid Barca fans in the chat. Yes, people saying we मतलब फरहान बोल रहे हैं, glad Rafinha was hijacked. We dodged the bullet. Again, it's literally what, not even 10 games into the season. But again, I won't mind that if that happens for reality. Farhan, you know that as a Chelsea fan, Kepa was awesome, world class today. Absolutely, Ajinkya, you have to say Kepa ने मतलब हमारी इज्जत बचा ली. मैं तो इतनी ही नहीं मतलब बोलूंगा कि यार it's about 3 points. फर्स्ट हाफ में लिटरली हमारी इज्जत लूट रही थी यार, मतलब आई वुड से दैट मच. We got away with it. That score line does not tell the story. It could have been a bloodbath. First half, we could have been down 5 goals. So I don't know. I don't know why it took us till to get to halftime to make changes. We should have made changes early on. I think थोड़ा सा वो pride भी होता है manager का कि I put a starting lineup. I expected to do something. So, but it wasn't working in the first half, and we're lucky that we were not down 2 3 goals, multiple goals. It could have been worse. I think Ajinkya has a point about being leggy. I think हमने बात ही की थी about Kovacic. Kovacic actually looked really leggy, I must say. Maybe even Chilwell defensively, लेकिन Chilwell का I think match fitness is still not the 100% far from it. तो
I would still, as in wait for him. लेकिन I know यहाँ पर oh my god, भाई अंचल कंट्रोल I know खुशी हो रही है, खुश तो बहुत होंगे आप आज, लेकिन आप कंट्रोल लेकिन कोई नहीं. I know what you're saying. Rafinha and Dembele just cannot play together. यार एक मैं बहुत ही सरप्राइज हूँ. Xavi, no, week in week out he's doing the same mistakes again and again. ये एक चीज है. Under Lampard we used to say, as much as I like Lampard, मैं इसलिए relate करता हूँ कि there are certain things that the manager you just see and still you don't change ना. मतलब somewhere down the line it is either that you're not learning it or simply it's an ego. I don't know what to say. I don't know. Traditionally, Mikhail, आपने भी बहुत देखी generally, but Barcelona are a club which tend to kind of always मतलब एक होता है ना DNA of the club, that उनके जो positives है they focus on that rather than looking at basically the opposition and horses for courses. But do you think Barcelona, considering जो हुआ है in the last season and a half, I think they need to probably be a little bit more defensive, नहीं? Yeah, I honestly don't follow Barcelona because it brings back too many bad memories. I don't enjoy them. I appreciate the what the place Barcelona has in the world of football and the game, and what Xavi is trying to do there, as trying to bring them back to the highs of his playing era. But you're right that at some point there is probably a lack of tactical nous. नहीं, He hasn't it's been a almost manager. biased. मतलब यहाँ पे allegation ये है मिकाइल, that when you have basically Ferran Torres for example, वो तो clear है Man City से गया था, and he is someone who can play a false nine, means he's someone who has that ability to score a goal as well. I don't think they've used him enough. Or I know Rafinha, they paid the big bucks, but putting, like, tactically, if you think about it, putting two left footers in against a Real Madrid who kind of, that on the break they are like crazily good. So somehow, that's not matching up for me week in week out. यार किसको खिलाओगे वहां पे फिर आप? वो वही है, मतलब यू नीड टू हैव एक राइट फुटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. और आप देख सकते हो दे हैव वेरी गुड मिडफील्डर्स यार. अगेन पेड्री, गावी काइंड ऑफ पीपल कैन प्ले वाइड, क्योंकि वो दे ब्रिंग यू दोस टैकल्स, दे ब्रिंग यू द मिडफील्ड मेंटालिटी. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बेसिकली इज यहाँ पर थोड़ा सा, आई नो द फ्लैम्बॉयंस, आई नो एवरीथिंग दैट बारसा प्लेज एंड दैट्स बीन द Cruyffian वे ऑफ फुटबॉल, लेकिन समवेयर डाउन द लाइन pragmatism is what he probably would have done better in this week, especially जो दोनों बड़े बड़े गेम्स थे अभी तक. आई नो सेकंड हाफ अभी बाकी है, बट जनरली स्पीकिंग, talk about it against Inter Milan as well. I really felt that. Let's see. Abhi, there's time for Barcelona to try to come back into the game. This is where the experience will either show Xavi, to be alert, which I'm sure he is. He's a capable guy, but Ancelotti is not a joke either. So, and Real Madrid, the way you said it, they play on the break. Not a lot of teams right now in world football are playing at that level, right? So they are lethal, and they kind of know how to do it. Regardless of how the pace of the game is going, the momentum is going, they know how to. And we saw it in the Champions League run last year, where they when they need it, they're able to dig in and get that moment of brilliance, individual brilliance, and that synergy that they have between their attacking pieces on the pitch. But Benzema and Lewandowski, it's I would expect something from Barcelona. Yeah, again, मतलब it's a good timing as well for Benzema's point of view and Real Madrid's point of view, क्योंकि कल बैलन d'Or है, and yes, people will be covering that as well, भूलना मत. तो बैलन d'Or में pretty sure इस बार तो Benzema will be the winner, as much as we know that it will not get cancelled. Lewandowski, I know you were unlucky. That was so bad. Exactly, it was like almost भाई नहीं दे रहा है भाई, कैसे दे Like, अपन एक it's like non Spanish player को. when you say that you're playing a weak opposition or you're playing a 10-man opposition, you can only play what's in front of you. He only played that season what was in front of him, and just because other Exactly. leagues were locked down, he was punished and not given the Ballon d'Or. Very, very undeserving. Like, we've known that there is a certain politics of the European game, if not the world game, the FIFA करेक्ट. अरे organization. विशाल बहुत अच्छे से यहाँ पे पुट Which करते हैं, was मतलब एग्जैक्टली विशाल, दैट्स माय पॉइंट. देखिए समवेयर डाउन द लाइन व्हेन यू आर इन दैट सिचुएशन, स्पेशली आपने मतलब यू हैव पुल्ड सो मेनी लीवर्स ऑलरेडी ब्रो, मतलब यहाँ पर वी कैन नॉट मतलब हाइड दैट फैक्ट. तो यू नीड टू हैव एक सेफ्टी मैकेनिज्म.
कंसिडरिंग उनके पास इतने इंजरीज थे, तो डिस्पाइट दैट जस्ट बिलीविंग, आई अंडरस्टैंड बिलीविंग इन अ फिलॉसफी, हम काफी बार कुछ ज्यादा ही चल जाते शेल में, एज अ चेल्सी फुटबॉल क्लब आई हैव डन दैट, आई हैव सेड दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स. But Barcelona, at some point, you have to say the other side also. You have to be ready for that, as in setbacks as well. लेकिन शायद मैंने देखा है आपका कमेंट मैंने लिया भी था, शायद आप कमेंट 2 बार क्यों करते हो समझ नहीं आता मुझे. मच लव टू ब्रो अगेन. मैं ले रहा हूँ कमेंट्स अब एक बाय एक, बट अगेन ज्यादा स्पैम मत करिए, बिकॉज व्हाट हैपेंस अदर सब्सक्राइबर्स गेट अ लिटिल बिट पिस्ड ऑफ. मुझे ये फीडबैक मिला इसलिए बोल रहा हूँ भाई. दिस इज द बेस्ट वे ऑफ गिविंग यू फीडबैक, बट होपफुली you get through that lineup. हम देख सकते हैं क्विकली व्हाट लिवरपूल आर डूइंग, बट माइकल आपको अगर लेट होता तो बता दीजिए यार, मतलब आई नो इट्स अर्ली मॉर्निंग. Yeah, I'm gonna beg leave actually. Yes, या but प्लीज प्लीज but प्लीज. तो thank you मैं for अभी having me थोड़ा, on. मैं सेकंड हाफ देखकर इवन आई एम गोइंग इन द स्ट्रीम, आई वॉच एल क्लासिको, मतलब नॉट दैट आई लव बार्सिलोना लूजिंग, डोंट गेट मी रॉन्ग पीपल, बट भाई हाँ मैं तो थोड़ा देखूंगा नहीं, आराम से. that's fine. El Clasico is El Clasico. I'll probably keep one eye on it as well. But या I should get going. Thank you for having me on. अरे Scrappy ऑलवेज. win today. The scoreline doesn't tell the story, but I'm here for it. Another 3 points. The Potter bandwagon continues rolling on. We're in the top four for now. I don't know how the rest of the weekend goes for games and where we are at the end of it. But we're आई heading in थिंक the अभी right अभी के लिए direction. जाते जाते मैं आपको दिखाई देता हूँ, जस्ट मे बी यूल फील बेटर इवन मोर. आई एम जस्ट सेइंग, आई नो दैट आर्सेनल भाई एक पेनल्टी मिस कर दी लीड्स ने, लेकिन भाई टॉप 4 है. आई नो टॉटनम वन एंड दे सेलिब्रेटेड एज दो उन्होंने चैंपियंस लीग जीत गई है, वो अलग चीज है. लेकिन आई थिंक स्लोली बट स्टेडीली वी आर एटलीस्ट एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, व्हाटएवर, राइट, एंड आई वुड टेक दैट. नहीं That's the right way to put it. Yeah, we're putting a sequence of wins together. राइट. They're not always convincing necessarily, but it's the right direction, and that's what we want, and we can take that away, and hopefully in midweek, try to learn from that, and maybe see a change in starting lineups and see how that helps. बिल्कुल बिल्कुल है, एब्सोल्युटली बिग अप टू मिकाइल. चलो मिकाइल, अब द चेल्स एब्सोल्युटली, एंड मिडवीक गेम्स भी है. आई नो मिडवीक तो एज इन बिकॉज ऑफ टाइम डिफरेंस इज नॉट पॉसिबल, बट होपफुली विल मीट अप वेरी सून एज वेल, एज यू नो. Thanks, bro. एंड टेक Thanks for केयर having ब्रो. me on. Uh, ऑलवेज. Take care, everybody. Cheers. Bye. ओके भाई, मिकाइल ओपी हो जाए एवरीवन इन चैट. एंड यस, एज मिकाइल इज टेकिंग लीव, हम देखेंगे भाई सेकंड हाफ, थोड़ा हम न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे एब्सोल्युटली ऑफ द बार्सिलोना गेम away to Real Madrid. More goals might rain in the second half cause we know what Madrid does. वही यार, मुझे लगा भाई ये बैकग्राउंड चेंज हो जाए थोड़ा. एक सेकंड दीजिए, मैं बैकग्राउंड चेंज करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अभी यार फोकस चेंज होगा. ऑफ कोर्स वी आर आल्सो लुकिंग एट दैट गेम, लेकिन अभी थोड़ा सा कौन सा बैकग्राउंड डाले मैं देखने दीजिए. मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड. यस, शायद मुझे पता है आप वेट कर रहे थे अपना लिवरपूल लाइनअप, वी विल बी लुकिंग एट दैट एज वेल. हम थोड़ा वहां भी रिएक्ट करेंगे होपफुली, बट लेट मी सी. अरे भाई कहाँ गया मेरा लाइनअप, कौन सा डाले यार. चलो एल क्लासिको टाइम डाल देते हैं, क्या बोलते हो. लेट्स पुट दिस बैकग्राउंड पीपल. भाई इसको बोलते हैं जादू, इसको बोलते हैं जादू. हाउ डू यू फील दैट, लेट मी नो. आई होप दैट्स फेयर. तो हाँ, आई अग्री विद दिस स्वामी विवेकानंदा रिसर्च सेंटर. आई डेफिनेटली अग्री द वे थिंग्स आर गोइंग. Okay, and sell your old veteran. Start exploring La Masia. One generation of youth was already destroyed during Bartomeu time. Please destroy current lot. Enough of experience which fail in big games. Well, Vishal, मतलब are they learning every game? That's the only question. Are they learning? Maybe these losses will make them learn. Is it the hard way? Especially in my opinion, La Liga is almost, मतलब it's imperative that they win. La Liga अगर नहीं जीते तो क्या ही जीते, मतलब वो वाला सीजन हो जाएगा. Yes, they will invest in Jan. We know that despite the debts, but anyway, by big up absolutely by Mikhail ko big up absolutely big up. Much thanks Mikhail again. Always love the conversation with Mikhail. Mikhail OP in the house हो जाए भाई सब लोग. City's goal difference is 24. It's high time we consider Premier League as a Farmers League as well. Abhishek भाई, लेकिन अभी भी आर्सेनल टेक्निकली आर ऑन टॉप. आई नो बोलने की बात है, बट दैट्स अ रियलिटी whether you like it or not. हाइप फॉर सिटी एट एनफील्ड. ओके, लिवरपूल एट एनफील्ड. चलो ये वाला देखते हैं, मैंने वो भी दिखाना है साथ साथ में. मैंने उसका बैकग्राउंड तैयार नहीं किया है इसलिए मैंने उसका नहीं डाला है, बट होपफुली दिस बैकग्राउंड इज गुड एज वेल. कम ऑन भाई, ये दिस इज व्हाट इज बाय द वे. मीनवाइल शुरू हो गया, तो मैं वहां पे क्लॉक शुरू कर सकता हूँ जल्दी से. लेट मी जस्ट स्टार्ट द क्लॉक बिफोर आई एम टू लेट, बिकॉज फॉर वंस आई एम नॉट लेट. यस,
भाई मैंने सेकंड हाफ का क्लॉक शुरू कर दिया, दैट इज ये क्लॉक चल रहा है अभी रियल मैड्रिड का, रियल मैड्रिड वाला मैच का क्लॉक चल रहा है, एवरीवन हु आर वंडरिंग व्हाट इट इज। तो ये सेकंड हाफ हो रहा है, चलो मैं अभी आराम से देख रहा हूँ टीवी पे, और मैं लिवरपूल का लाइनअप दिखाया हूँ अभी, लेट मी सी। तो भाई ये अपना क्लॉक हो रहा है, भाई लिवरपूल का लाइनअप मैं दिखाने वाला हूँ वापस से इन अ मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी जस्ट पुट माय फोन टू चार्ज। और भाई सब लोग जो भी आए पहले तो लाइक कर दीजिए भाई, लाइक काफी कम हो रहे स्ट्रीम्स में, भाई आप लोगों ने चेक की आज वापस हुए मैं भी किए हैं भाई, काफी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए। बेसिकली वी आर लाइव फॉर लाइक एवर ऑलमोस्ट, लेकिन कोई नहीं, विल हैव मोर पीपल, मजा आएगा यार एज अ न्यूट्रल तो और भी मजा आएगा। एंड रियल मैड्रिड बारसा फैंस आप बोलिए यार, हाउ आर यू फीलिंग? रियल मैड्रिड फैंस विल बी ओवर द मून, आई नो, लेकिन आ जाइए, मतलब आई वुड लाइक टू नो योर थॉट्स एज वेल। ओके बैकग्राउंड ओपी, थैंक्स थैंक्स यार स्वामी विवेकानंद रिसर्च सेंटर, डैम अंकित भैया जादूगर भाई वही वही करते हैं अपन, इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी, तो वी हैव टू बी रेडी फॉर इट। अभिषेक thumbnail, you look like a serial killer who's about to kill a man okay okay, बट जादू कुछ भी आई नो, ज्यादा बोल दिया, कोई नहीं। लुक एट मैन सिटी स्टार्टिंग 11 एंड द बैक फोर, दिस इज थर्ड डिफरेंट बैक फोर लाइन इन लास्ट फोर मैचेस, वाओ इंद्रानी, दैट इज द थिंग, डिस्पाइट दैट दे डू इट। चलो लाइनअप वापस से दिखाई देते वाइल रियल मैड्रिड बारसा शुरू हो गया है सेकंड हाफ। तो लिवरपूल मैन सिटी, पीपल भाई व्हाट आर यू कॉलिंग यहाँ पे अगेन? एक थोड़ा क्वेश्चन मार्क था, विल फर्मिनो स्टार्ट और विल डार्विन नूनेज स्टार्ट? फर्मिनो हैज गॉट द नॉड बिकॉज फर्मिनो ने किया है बेटर, थोड़ा सा ज्यादा कंपेयर टू डार्विन नूनेज इन द रीसेंट वीक, क्योंकि डार्विन नूनेज माय ओपिनियन काफी इंप्रूव किए हैं, बट साला आफ्टर दैट फास्टेस्ट हैट्रिक इन द चैंपियंस लीग हैज स्टार्टेड एज वेल, व्हिच वाज एक्सपेक्टेड। बहुत ही इंटरेस्टिंगली राइट बैक, ऑल द लिवरपूल फैंस जो मैं पर्सनली जानता हूं, गाली दे रहे थे क्लॉप को कि भाई प्लीज डोंट स्टार्ट द गाय हु इज ऑन हिज पेंशंस, एंड दैट इज व्हाट मिलनर इज। और यू कैन आर्ग्यू द फैक्ट इज मिलनर कैप्टन है इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं। हार्वी एलियट, मिलनर, ओ माय गॉड, दिस इज अ प्रॉपर टारगेट एरिया इन माय ओपिनियन। लेकिन इंटरेस्टिंगली रॉबर्टसन शुरू की है, नॉट शिमिकास, बट आई थिंक रिमेनिंग काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड है। मैन सिटी जैसे आई थिंक चैट ने बोला ऑलरेडी, बैक फोर भाई अकांजी has got a lot of minutes than I anticipated। सच में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था अकांजी को इतने मिनट्स मिलेंगे इतना soon, but again injuries have played a part because of Stones, Walker, and of course Sergio Gomez getting that midweek red card, हो सकता है, you know, he wasn't confident of starting as a left back। मुझे लगा था maybe he starts at left back in a big game once, you know, who knows, or Aki, you know, being a center back, लेकिन Akanji has worked brilliantly to some extent, and others भाई they pick themselves on form, I think they pick themselves। तो अल्वारेज थोड़ा अनलकी है to be on the bench, but I think it's a very good bench। तो based on that bench and bad start, what are you all saying? भाई ट्रेंट is actually on the bench। ट्रेंट इंजर्ड थे ना मेरे ख्याल से, तो ये क्या हो रहा है? ट्रेंट है बेंच पे, बहुत इंटरेस्टिंग। आई डोंट नो इफ इट्स अ मिस्टेक और व्हाट। ड्रेक कर्स इज रियल हिट, यार कर्स वर्स छोड़ो यार, मैं तो बोल रहा हूँ टैक्टिक्स मैन, मतलब आप अगेन मतलब for me, Sergio Roberto had a decent first half in that game against Inter Milan. Today you're using him as a right back, then you're playing Dembele, Rafinha, Barbar as your left wingers and right wingers when you know that you need a plan B. I don't know what is that. Yeah. Defensively also it doesn't really help you. So he's not strong enough to maybe drop one of them is what I'm guessing. That's what मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे। Okay. Arsenal, I love their optimism. Busquets, PK destroyed their legacy. They should already have left the club. By Busquets, I don't agree. PK, I agree. PK, I agree. Busquets, it's not easy to replace him. हाँ, whether he should have started हर एक game नहीं. Whether Barca ने जो किया mistake about not signing someone else as a replacement, जो साथ साथ में bed in हो, वो yes. But I don't agree with the fact that Busquets should have been let go. It's not easy to let go after जो ट्रांजिशन सीजन हुआ था, स्पेशली अंडर कोमन, आपको पता ही क्या हुआ था, राइट? लेकिन अगेन आई एम सीइंग रियल मैड्रिड हैविंग द बॉल, हु वुड हैव इमेजिन दैट, आराम से रियल मैड्रिड कीपिंग द बॉल इन सेकंड हाफ एज थिंग्स स्टैंड। बारसा फैंस नो मोर, थैंक यू फॉर क्रिश्चियनसन चैट्स। ओके ओके भाई, कोई नहीं, इंजरी है, इंजरी हैज गॉट टू प्ले विद इट। सिटी 3-0 विक्ट्री, 3-1 विक्ट्री बोल रही इंद्रा, नहीं रहा है, बाकी लोग भी बोल दीजिए। मुझे भी लगता है यार सिटी हैज टू विन दिस गेम। लिवरपूल हैज टू विन, लेकिन जीतेगी सिटी इज व्हाट आई एम कॉलिंग, दैट्स माय कॉल। आप लोग बताइए व्हाट डू यू ऑल थिंक अबाउट इट? पुयोल, इनिएस्टा, जावी न्यू दैट दे नीड टू गिव यंगर लॉट द चांस।
Foden will exploit Elliot and Milner. बिल्कुल बिल्कुल, I think that is a area that attack करेंगे. लेकिन talking about attack, भाई बेंजेमा ऑफ द लेफ्ट विंग ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मेंडी आराम से करे डिफेंड विदाउट एनी प्रेशर. तो यू हैव टू गिव इट टू रियल मैड्रिड एंड एंचेलोटी. यहाँ पे दे नो देयर गेम. मतलब मैं सच में बोलूं, इसी पॉइंट पे अगर बारसा होती ना, हाँ रियल मैड्रिड पोजीशन रख रही है और चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यार ओपन एंडेड हो रहे हैं. तो दैट इज व्हाट आई वुड कमेंट डॉन कार्लो फॉर दैट. सिंपली पुट, गैलेगर एंड कोवा गेटिंग फ्रीडम विद राइस बिहाइंड देम. अरे ब्रिलियंट ब्रो, ब्रिलियंट. भाई मैं तो बोलता हूँ राइस विद एनीवन भाई. इवन मैं बोलता हूँ इवन व्हाई नॉट इवन मेसन माउंट एंड कोवाचिच एंड मेसन माउंट एंड गैलेगर दोनों. मतलब क्योंकि एज मच एज वी से दे हार्ड वर्कर्स, वही हार्ड वर्किंग अटैकिंग में भी हो सकता है ना डेरिन. तो आप सोचिए, तो दैट इज समथिंग दैट वी नीड एक्चुअली. बेंजेमा में शॉट और गोल. भाई खत्म खत्म, टाटा बाय बाय हो गया भाई. बेंजेमा प्रूव्स दैट ही डिजर्व्स द बैलन डोर. बेंजेमा ने फाड़ दिया भाई. बेंजेमा ने फाड़ दिया है. क्या किया ये? ऑफसाइड है क्या? आई थिंक वीआर चेक कर रही है. नहीं है यार ऑफसाइड. विनिशियस ने खेला था बॉल, ऑफसाइड नहीं है शायद. सर्जी रोबर्टो तो शायद उन्हें ऑन साइड प्ले कर रहे हैं. दैट इज बेंजेमा आई एम टॉकिंग अबाउट. बहुत ही अच्छा फिनिश था, बहुत ही बढ़िया फिनिश. टर्स स्टेगन द मैन इन फॉर्म कुछ नहीं कर सके उस मोमेंट में. अरे ऑफसाइड दिया गया यार. अरे यार जल्दी ओवर रिएक्ट कर दिया मैंने. चलो कोई नहीं. होता है. इट हैपेंस. हु विल बी द गोल्डन बॉय? यार डेफिनेटली हम कल वापस से बात करेंगे, जस्ट प्रीव्यूइंग दैट. लेकिन आई बिलीव who will be, it should be Musiala, and I think this time it will be Musiala as well. मतलब होंगे यार Musiala. मतलब as much as Pedri is look brilliant in games, Barca as a totality क्या affect किया Barca को? I don't think so he has as much compared to what Musiala has done to Bayern Munich. ये मेरा है थोड़ा सा ओपिनियन. आप लोग बोलिए. एक और टाइमर लगा दे लो पॉसिबल. यार एक और टाइमर मुझे लगाना आता नहीं है, मैं सीख लूंगा वो भी. इंद्रानील बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन कोई नहीं भाई. वो वाला मैच कब शुरू है? लेट मी जस्ट सी. वो वाला मैच शायद 9 बजे शुरू है क्या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? एक सेकंड मैं देख रहा हूँ. ओके आई थिंक हाँ वो वाला 9 बजे शुरू है. ओके तो लिटरली 4 मिनट्स आर लेफ्ट. कोई नहीं. Again, let me take, but we played better and our defenders were injured. Give Javi time. यार again मतलब that I agree with it to some extent that अगर वो डिफेंडर्स होते, इन माय ओपिनियन ऐसे रिजल्ट नहीं होते. वो भी मैं अग्री करता हूँ. बट हाँ, it is also an excuse. We cannot deny the fact कि यार they were clear. मतलब इवन फर्स्ट लेग अगर इंटर मिलान बोल दो, प्लान बी कहाँ था? प्लान बी आपके पास था फेरन टोरेस. वो था बेंच पे, नहीं आया फेरन टोरेस. तो दैट वाज अ मिस्टेक. कैसी बहुत लेट आए थे. देन इन द सेकंड लेग, यस यू कैन आर्ग्यू द डिफेंस वाज एन इश्यू. लेकिन अगेन मतलब यूजिंग Rafinha and Dembele the way that they were used, there was arguments as whether that's correct or wrong. In my opinion, it's more about Inter Milan playing better. लेकिन आज क्या हुआ है? आज again he's made the same mistake about using the Rafinha Dembele together, using Sergio Roberto as the right back. I know injuries you can again say, but अब they should have done something else. Maybe they would have just got 3 in the back here. I'm just saying. Madrid are doing good, but the thing is we are also playing too bad. Otherwise we would not. Yeah, exactly. मतलब that's what इसलिए हम criticize कर रहे हैं यार विशाल. Barcelona deserves some criticism as well. No two ways about it that Inter Milan played brilliantly. Madrid obviously अच्छा खेल रही है as a team from quite a while. In fact, when it matters. Barcelona when it matters नहीं कर रही. That's a problem. एक mentality है, एक होता है that are they sure of themselves on the pitch. ये भी मुझे questionable लगता है थोड़ा सा. But I don't know यार. आज तो भाई मतलब गावी also not starting. थोड़ा सा मुझे लगा था they'll do more with De Jong being there. Bellingham बेलिंगहम का मिल सकता है. बेलिंगहम को मिल सकता है. नहीं लेकिन यार अगेन मतलब इफ यू सी द लार्जर पिक्चर, व्हाट हैज डॉर्टमुंड डन एज अ क्लब?
मतलब I would still say it's Musiala ना, मतलब मुझे लगता है again Xavi is not good manager. People have to understand he's not a bad manager as well. What I would say is that the manager जो learn कर रहे हैं job पे अभी भी he is learning on the job. That's what I would say. But again, people, yes, you might wonder, भाई बहुत लंबा हो गया, Chelsea का review भी करना था and all that. I'll probably come out with the review कल सुबह because there's so much going on. But हाँ, the idea is मैंने commit किया था तो भाई एक बार commit कर दिया तो भाई कि अपने का भी नहीं सुनता, वो वाला चीज है ना. तो मैंने commit किया था that I will also continue with El Clasico, इसलिए हम कर रहे हैं. लिवरपूल मैन सिटी हम कंप्लीट नहीं कर पाए, वो डिपेंड्स. अगेन आप लोग ला दो भाई, होपफुली अगेन पीपल, इफ यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब, ब्रिलियंट. अगर आपने नहीं किया प्लीज कंसीडर डूइंग दैट. देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट, वेरिंग कंटेंट हमारा आते हैं दोनों चैनल्स में, सो डू चेक इट आउट. यहाँ पे थोड़ा विंग प्ले खेल रहे बार्सिलोना फॉर चेंज. लेट्स सी हाउ दे डू. जावी इज ओवररेटेड. ओके, इंटरेस्टिंग. Which national team managers you see leaving after World Cup, irrespective of the performance? I 100% see that France Deschamps का टाइम आ गया है, एंड हो गया है. डेशॉम्स एक तो है डेफिनेटली, सैंटोस एक है पोर्चुगल के, डेफिनेटली उनका भी मैं देख रहा हूँ. और कौन है यार नेशनल टीम मैनेजर, पूछ रहे हो ना आप? Yeah, then you can argue that Scaloni also wasn't supposed to be their manager, वो बन गया यार because of performances. तो मे बी इन केस अर्जेंटीना नहीं जीतती है, हाँ इरेस्पेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस बोले लेकिन आप, ओके. तो आई थिंक इट्स गॉट टू बी सैंटोस, साउथगेट एंड तीसरा नाम कौन सा लिया यार मैंने? साउथगेट, सैंटोस एंड डेशॉम्स. बाय द वे वर्ल्ड कप कंटेंट भी आ रहा है यार, एब्सोल्युटली. शॉर्ट्स तो हम ऑलरेडी शुरू कर दिए. ओके अंकित, रेट दिस मिडफील्ड. अरे जैक इन द हाउस, थैंक्स. सीडीएम मैकलेले, लैम्पार्ड एंड माटा. Okay, but I would still prefer someone like Balak. I feel that while Lampard obviously is underrated on his strength, Balak ka strength, SCN ka strength was another level, bro. So it's a very good midfield with Mata being there, the creative element देंगे. But for me, Lampard kind of can do both the jobs. So इसलिए I would rather want a more steely element वहाँ पर. Milner ahead, yeah. पता नहीं यार, मिलनर अगेंस्ट फोर्डन, आई डोंट नो. ही वाज इंजर्ड अभिषेक, लेकिन बेंच पर नेम्ड है यार. हाँ 100% नहीं होंगे टू स्टार्ट इज व्हाट माय गेस इज. बट स्टिल आई एम सरप्राइज्ड दैट मिलनर हैज बीन द चॉइस because people wanted two left backs playing as full backs, Raj. Most of them. Louis Van Gaal, as in Louis Van Gaal is brilliant, bro. Absolutely brilliant. Gabriel red card. Oh my god, मैंने मिस कर दिया क्या? मैंने मिस कर दिया वो. हाँ यार, सिटी वेयरिंग येलो, इंटरेस्टिंग. भाई मैं लगा रखा हूँ अभी, मेनली एल क्लासिको लगा रखा हूँ, लेकिन आई थिंक शुड आई चेंज इट टू द अदर गेम, मेन गेम? लेट मी नो पीपल. अगेन आई विल बी देयर फॉर द एल क्लासिको, व्हाट आई कमिटेड, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए. एंड आई नो आस्टन विला चेल्सी हम कवर कर दिए ऑलरेडी. Yeah, and people who are watching now, no, matlab, I need some feedback, bro. Why is it that people feel that we talk shit and not coming? पता नहीं यार मुझे, वो people who subscribe and then vanish, वो मुझे लगता है rather not subscribe. Only for those people, that is यार. Anyway, I know watchalongs मैं खुद नहीं जाता था, to be really honest, because I love the fact that आप लोग मुझे support कर रहे हो, because भाई you rather watch with your earphones and just watch along. So I understand that totally. बट ऐसा नहीं कि यार द सेम पीपल आर नॉट गोइंग एल्सवेयर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, ब्रो. तो ये मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन इन माय माइंड व्हिच आई एम होपिंग दैट आई गेट एन आंसर टू. बट एनीवे, Rafinha going off, Ferran Torres coming on for Barcelona, of course. By massive changes, Gavi coming on, Jordi Alba coming on, Busquets is off. Oh my god, Busquets is actually off. Red card changed to yellow, no penalty. Oh my god, man. आर्सेनल, अरे लकी ब्रो. अभिषेक, मैं एक्चुअली सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को यार, आई फॉरगॉट फॉर व्हाटएवर रीजन. नहीं, बट इट्स गॉट ओवरटर्न्ड, जैक, आई बिलीव. आई नो जस्ट वन मोमेंट, लेकिन सर्टेनली इट्स अ क्वेश्चन मार्क फॉर मी. अगर आर्सेनल को टाइम एंड अगर लक मिल रहा है, आई डोंट नो ब्रो, समथिंग्स गॉट टू गिव. इज इट फॉर रियल कि भाई जो हमने मीम शेयर किया था अबाउट पेप ग्वार्डियोला, जस्ट गिविंग अपने क्या बोलते मेंटी इन आर्टेटा 2 players एंड जस्ट भाई जा और फिर चैलेंज कर, मजा आएगा, वो वाला चीज जो है ना,
पता नहीं यार, मुझे देखते हैं भाई। मेंडी इज काइंड ऑफ that wall on the left back यार. I would love to see Rudiger come on. I know injured है, but I would love to see him come on. Interesting रहेगा. Modric is balling bro. Modric is balling. अच्छा, लिवरपूल सिटी वाला थोड़ा एनिमेटेड है सीन्स, कोई नहीं. अच्छा, अगेन अभी आई थिंक मेंबर्स आर वाचिंग राइट. आई कैन सी अ कपल ऑफ मेंबर्स. भाई मेंबर्स अभी बोल दीजिए यार, व्हेन डू यू मतलब डू यू हैव अ गुड टाइम? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बोलना, इस हफ्ते में हम कब कर सकते हैं हु एम आई विद द मेंबर्स, if at all we do. And our plan is that we'll have a couple of content creators who are also members to be there along with me in the panel to begin with, and slowly but steadily we'll have others as well, and you'll be part of the chat. लेकिन अगेन उसके लिए सब मेंबर्स को आना पड़ेगा साथ में, and yes, people can become members as well newly, no problem with that, which will be brilliant. गावी ने एक टैकल डाला है, आई थिंक स्ट्रेंथन तो किया है भाई गावी ने, आई मस्ट से ही इज मसल्ड डेफिनेटली, ये बोलना पड़ेगा. लेकिन भाई 98 मिनट गेम है यार, ये लीड्स आर्सेनल क्या हो रहा है मैन? बैडनेस खत्म हो गया क्या मैन? आर्सेनल स्टिल टॉप ऑफ द लीग, पेन्स मी टू से इट. लिवरपूल वाओ, क्या हुआ? डिड आई मिस समथिंग? तो प्लेइंग वाओ क्या? अगेन मैं एक ही चीज देख पा रहा हूँ यार अभी, टू बी ऑनेस्ट मेरा बैटरी डेड हो गया दूसरे डिवाइस में. लेकिन कोई नहीं, इफ आई एम ओपनिंग टैब मैं आपके कमेंट्स नहीं ले पाऊंगा, दैट्स द मेन प्रॉब्लम. तो अभी आराम से खेल रहे हैं यार. यू नो व्हाट, लेट्स पुट द अदर गेम. दैट्स व्हाट आई वुड डू नाउ. थोड़ा देर के लिए लेट्स पुट द लिवरपूल गेम. लिवरपूल और मैन सिटी डालते हैं, देखते हैं क्या होता है वहां पे. यार पीपल क्या प्रेडिक्शन नहीं आई आप लोग से? बाय द वे, लिवरपूल मैन सिटी सब लोग प्रेडिक्ट नहीं किया, आई डोंट थिंक सो. यहाँ पे हैंडबॉल का अपील है अगेंस्ट हावी एलियट बाई एकी, बट दिया नहीं रेफरी ने. साला ऑन द रन, बट आई डोंट थिंक इट इज गुड इनफ. अगेन पीपल भाई जो भी ज्वाइन करे, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस स्ट्रीम, सर्टेनली हेल्प्स. भाई हालैंड स्कोर कर देना है बस, अगर ऐसे एज इट इज सिटी जीत रही ना, स्कोर कर देना. कैप्टन है मेरे. आई नो लास्ट वीक तो हगा था आपने थोड़ा बहुत बाय योर स्टैंडर्ड्स बिकॉज ऑफ मी ट्रिपल कैप्टनिंग यू, बट लेट्स होप दैट ही गेट्स इन समथिंग राइट. और यस, पीपल आर ज्वाइनिंग. ये क्लॉक है सेकंड हाफ का ऑफ एल क्लासिको, जो बैकग्राउंड है फॉर अ रीजन. अंकित यू टेल मी, गैब्रियल इज मेकिंग मिस्टेक ऑलमोस्ट एवरी गेम अगेंस्ट फुलहम, लिवरपूल, यूनाइटेड. देखिए गैब्रियल इज दैट काइंड ऑफ गाय हु विल गो फॉर दैट टैकल नो मैटर व्हाट. नाउ उसमें लाइक अ कूलीबाली फॉर अस, ही इज वन ऑफ देम. तो वो यू आर सेंसिंग कि वहां पर इफ दे गेट दैट टैकल रॉन्ग और दैट चार्ज रॉन्ग, इट विल बी अ येलो कार्ड और रेड कार्ड. तो ही हैज दैट, और वो एक चीज हैज सूटेड आर्सेनल. द रीजन बीइंग, इस सीजन में भी इतना नहीं, लेकिन इन द पास्ट सीजन बेन वाइट यूज्ड टू प्ले सेंटर हाफ. तो फॉर मी दैट इज अ गुड कॉम्बो, ये मेरा ओपिनियन था. बट हाँ, नॉट ग्रेट. मैं उनको नहीं डालूंगा एट द वेरी वेरी टॉप लेवल. एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू देयर. अभिषेक बोले 3-3. वाओ, अभी तक तो नजर नहीं आ रहे ऐसे आसार. जैक बोले 2-2. इंटरेस्टिंग. ओके, यहाँ पे रियल मैड्रिड का भी कुछ हुआ तो नहीं है अभी तक. मैन आज तो क्रेजी हो गया यार. मतलब आई एम लॉन्ग, सो लॉन्ग. आई नो पीपल अदरवाइज आल्सो विल बी, लेकिन वो लोग शुरू किए होंगे 5:30 बजे राइट. मैंने शुरू किया था इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 4 बजे. 4 बजे से मैं नॉन स्टॉप हूँ भाई लाइव. आई जस्ट रियलाइज ब्रो, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वन डे मैच ब्रो आई एम प्लेइंग टुडे. टॉकिंग सोल कंटिन्यूअसली ना, थोड़ा सा थक गया हूँ. भैया एनी कंटेंट क्रिएटर इन द चैट? तो कोई कंटेंट क्रिएटर है और जो फ्री है तो आ जाओ यार थोड़ा बहुत. जस्ट अ लिटिल बिट टायर्ड बट वी लव इट. अरे नेथन इन द हाउस भाई, नेथन इन द हाउस. नेथन आर यू स्ट्रीमिंग? आई नो यू आर स्ट्रीमिंग पहले. अगर आप स्ट्रीम नहीं कर रहे हो अभी तो आ जाओ यार, अगर फ्री हो तो बताइए मुझे, चैट में बता दीजिए. मेरा फोन एक्चुअली मरा हुआ है अभी तो चैट में बता दीजिए. अगर आप फ्री हो तो आ जाओ थोड़ी देर के लिए. अप्रेटेड 1-4 अर्लियर. FPL इन मड ऑल ब्लैक. सबका FPL इन द मड यार, ट्रस्ट मी.
अरे आशीष यार, नाइस नाइस, आई नो रिजल्ट तो अच्छा नहीं लग रहा. आई डोंट थिंक बारसा इवन लुकिंग लाइक कमिंग बैक. दैट्स द वर्स्ट केस. मतलब that's something that I know it would pain you as a Barca fan, but reality is that Real Madrid are next level mentality. नहीं 3 आवर से नहीं, उससे पहले हुआ एम आई भी किए थे अपन. 1.5 घंटे. 4.5 घंटे हो गए पूरे. इनफैक्ट ज्यादा हो गई, यहाँ 3.5 घंटे हो गए, बट कोई नहीं. ये फ्रेड को खेलते हुए देखना मेरी बीपी बढ़ा देगा. कोई नहीं, मतलब होता है, दैट हैपेंस. एवरी टीम हैज देयर, मतलब एक होता है ना, एक डेंजरस एलिमेंट जो, भाई मत कर, भाई मत कर, हो गया बस. I'm free this week anytime for FPL stream. Okay, nice nice. भाई FPL स्ट्रीम हम करेंगे, कब करें यार? ट्यूसडे नाइट गेम है ना. कल तो बैलेंडोर की स्ट्रीम होगी एवरीवन, जस्ट जो सो दैट यू आर लिस्टिंग. कल तो बैलेंडोर की होनी है. कल वापस से 2 स्ट्रीम्स हो जाए, दिन कर सकते हैं अपन. बैलेंडोर का होगा लेट रात ना, तो वी कैन डू अ स्ट्रीम बिफोर दैट. व्हाट डू यू थिंक पीपल? कल एक स्ट्रीम हो जाए एक और. वील ट्राई एंड डू एन FPL स्ट्रीम कल ही. देन मेसन फ्री किक गेम ही, लैम्पार्ड गोल वर्सेस एवर्टन FA कप. अरे भाई मेसन फ्री किक, इन माय ओपिनियन काफी टाइम हो गया विद द राइट फुटर गेटिंग दैट गोल. एंड फॉर मी द लास्ट राइट फुटर जिसने मारा था गोल ऑफ अ फ्री किक फॉर चेल्सी, ये एक ट्रिविया क्वेश्चन हो सकता है भाई. आई थिंक इट वाज मेसन माउंट हिमसेल्फ. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. आई फील दैट लॉन्ग सिटिंग इज अ मेडिकल स्टूडेंट. ओके ओके, अभिषेक मेडिकल स्टूडेंट है, अच्छा मुझे पता नहीं था यार. नाइस नाइस. बट कोई नहीं. यहाँ पे अगेन आई थिंक रियल मैड्रिड बार्सिलोना में तो यू वुड एक्सपेक्ट नाउ जस्ट रियल मैड्रिड विल बी प्रोफेशनल इनफ. लेकिन आई थिंक बार्सा ट्राइंग टू अटैक, बट दे आर गेटिंग काउंटर अटैक्ड. बेंजेमा मैन, वो मूड है, ही इज इन द मूड. बेंजेमा इज इन द मूड अगेन, लुक्स लाइक इट. भाई पेड्री गेटिंग बॉल्ड बाय मॉडरिच फॉर अ मोमेंट. लेकिन यार लिवरपूल मैन सिटी, आई डोंट नो आप लोग वॉल्यूम के साथ सुन रहे हो. ऑनेस्टली मैं 10 मिनट में थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ. आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ मच मोर हेवी मेटल फुटबॉल. आई नो लिवरपूल हैवंट बीन दैट साइड, लेकिन बाय बोथ साइड आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल बिट मोर. मतलब दैट फ्रैंटिक गेम ना अभी तक नजर नहीं आया मुझे. अनलेस आई एम वाचिंग अ डिफरेंट गेम. डू लेट मी नो अगर यू थिंक अदरवाइज. आई फील दैट वे. What was that, bro? Milner, oh my god. Did you all watch that? भाई Milner tried to keep the ball inside, हक दिया उसने, चलो होता है, और फिर एक्टिंग कर रहे कि उसी का बॉल है. What नाटक, bro? Oh, that is funny almost. Come on. That's almost stupid, bro. As in, you think referee is what? A baby or what? Valverde का क्या गोल? अरे भाई बिल्कुल. मतलब आपको उसी मोमेंट में मुझे याद है, आई थिंक बेंजेमा वाज वेटिंग ऑन द राइट साइड फॉर अ पास, लेकिन वैल्वर्डे जस्ट टुक इट. वो कॉन्फिडेंस ऑफ द मैन, ब्रो. और वैल्वर्डे आप देखिए, आप मिडफील्ड में है, विंग में है, ही इज एवरीवेयर. वैल्वर्डे इज एवरीवेयर, और प्लस ही स्कोर्स गोल्स. सो यू कैन आर्ग्यू ही विल बिकम वन ऑफ दोस गोट्स इन दैट पोजीशन, सच में बोलो तो. बट हाँ, इट्स टू अर्ली टू से, बट अभी के लिए लग रहे हैं एब्सोल्युटली दैट लेवल. ओके. बार्सिलोना तो भाई आई डोंट थिंक दे आर एबल टू डू एनीथिंग. आई एम ट्राइंग टू स्विच, दोनों ही गेम्स के बीच में स्विच कर रहा हूँ, ठीक है. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. चलो यहाँ पे काउंटर का चांस था फॉर लिवरपूल, बट कुछ हुआ नहीं उससे. अच्छा, बाय द वे पीपल, आई नो यू माइट थिंक भाई अपने को क्यों बोल रहा है. आई एम जस्ट शेयरिंग एज फ्रेंड. भाई आई हैव जस्ट स्लेप्ट 2 आवर्स एज वेल, जस्ट टू शेयर विद यू. तो आई एम लाइक रियली सच में बहुत टायर्ड हूँ. तो आई विल ट्राई एंड फिनिश इट आफ्टर एल क्लासिको, क्योंकि मैंने कमिटमेंट दी है. दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. बट अगेन इफ एनी कंटेंट क्रिएटर आते तो बढ़िया रहता साथ में. वही है, मतलब टुडे एवरीवन इज स्ट्रीमिंग, सो आई कैन अंडरस्टैंड, फेयर इनफ. रियल मैड्रिड आराम से खेल रही है यार. अरे भाई मैं वो आराम वाला गेम नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूँ ये अभी लिवरपूल मैन सिटी थोड़ा बहुत. यूनियन बर्लिन लीडिंग अगेंस्ट डॉर्टमुंड. भाई बुंडेसलीगा, is it going to be the next Serie A coming back again with competition?
I want to know your opinion in UCL final. Yup, Hankes was overconfident by taking Muller out. नहीं, ऑनेस्टली वो टैक्टिक कोई भी मैनेजर करता उस मोमेंट में, सच में बोलता हूँ, कोई भी मैनेजर करता. आई डोंट थिंक इट वाज ओवर कॉन्फिडेंस. इट वाज अबाउट बेसिकली जस्ट ब्रेकिंग द गेम, गेटिंग सम say an extra minute to kind of get your senses right. हाँ, experienced player, why do you take him out? But Jack, I would say that definitely uh, मैं यार डिनाई नहीं करूंगा भाई. इवन एक प्राइम मुरीनी होता, ही वुड हैव डन दैट. आई हैव दैट ओपिनियन. बट यार, वी हैव अ न्यू मेंबर, आशीष भाई. वेलकम टू द फैमिली ब्रो. आशीष, अभी बोल रहा हूँ आशीष, आपने तो मुझे मैसेज किया काफी बार ना. तो आशीष, आपका तो है मेरे पास इंस्टा आईडी. तो आशीष को मैंने ऐड करना है अपने एक मेंबरशिप जो ग्रुप है अपनी इंस्टा में. और आशीष, कोई नहीं, अपन सब मिलेंगे साथ में वेरी सून. हाँ, मतलब मैच तो ऐसे भी देखता ना देवेश, आप लोगों के साथ देख रहा हूँ. मेरा ये थिंकिंग है, मैच तो ऐसे भी देखना ही था नो मैटर व्हाट. हाँ, लेकिन वही है, लाइव स्ट्रीम करते हो ना, तो यू आर स्पेशली व्हेन यू आर अलोन ना, अभी जो हो रहा है कंपेयर टू जो लास्ट 3 घंटों के लिए हुआ है, तो एफर्ट ज्यादा लगता है. दैट आई अंडरस्टैंड एब्सोल्युटली. हाँ यार, मॉडरिच, आई डोंट नो व्हाट टू से यार. I don't know what to say. By Modric, how can someone actually improve as the age goes on? I have no idea. Modric, Benzema, the other way around, bro. पता नहीं क्या खिलाते हैं भाई डॉन कार्लो. बट हाँ, आई मस्ट से पेड्री, आई एम अ ह्यूज पेड्री फैन. मैं झूठ नहीं बोलूंगा. आई एम अ ह्यूज पेड्री फैन. द गाय इज अ बॉलर. नॉट अ बारसा फैन, नॉट अ रियल मैड्रिड फैन पर से, लेकिन हाँ, डेफिनेटली अ ह्यूज सम प्लेयर्स के फैन हूं मैं. लाइक देयर मेंटालिटी, देयर एफर्ट, देयर स्किल, that is there for everyone to watch. Even Gavi for some moments, I think he's brilliant. आपने देखा था जो मिडवीक में गावी ने बचाया था जेको का गोल, ऑलमोस्ट कमिंग फ्रॉम वेयर. एंड दैट इज व्हाट यू नीड, मेंटालिटी इन यंगस्टर्स. और एक गुंडोगन विद अ शॉट, लेकिन भाई आराम से कैच कर दिया एलिसन यहाँ पे. एंड मीनवाइल यहाँ सब्स्टिट्यूशंस हो रहे हैं इन द बारसा, और सॉरी, द रियल मैड्रिड बारसा गेम. आई बिलीव फाटी हैज कम ऑन. तो दैट्स इंटरेस्टिंग. Okay, my brother gave me money and I saved it from buying membership. I just went all billing. अरे भाई आशीष, मतलब I cannot thank you enough, bro. Again, it's not about the money, it's about the gesture, bro. क्योंकि आशीष and all the other members को मैं shout out देना चाहूंगा भाई. Jack in the house, I can see Abhishek in the house, and of course all the subscribers as well. लेकिन special shout out है because I know that at some point in time, I am glad that आप ऐसे मूव नहीं होते जस्ट बाय बेसिकली सर्टन पीपल हु देखते भाई एट सम पॉइंट वहां पर वॉचिंग कम होती है. यहाँ पर क्या ही तो जानता है बंदा, बट यू एक्चुअली डोंट जज मी ऑन द फेस. और आई लव दैट फैक्ट. एंड ऑफ कोर्स जस्ट सपोर्ट इट मैटर्स. यहाँ पे पेनल्टी शाउट है फॉर बार्सिलोना, बट नो, इट इज अ गुड टैकल फ्रॉम रियल मैड्रिड, आई बिलीव. अरे हैज रूडिगर कम? एक सेकेंड, मुझे रूडिगर जैसे क्यों लगे वो. हैज रूडिगर कम ऑन द पिच? नहीं, रूडिगर नहीं थे. इट वाज मिलिटाओ प्रॉब्ली. कोई नहीं, लेकिन हाँ, अगेन थैंक्स लॉर्ड आशीष. बिग अप आपको, एब्सोल्युटली बिग अप टू जैक एज वेल, लाइक आई सेड. एंड आई कैन सी अदर्स एज वेल, members especially, and of course Darren, Abhishek are in the house. Again, shout out to everyone who's here as well. I'll be honest, that Drogba goal was one of the best headers in world football that technique he had. Exactly. So I don't think it was about the substitution. It was about just Drogba doing what he did. And of course, the ball that Mata delivered, the corner that Torres won. Come on, वो भी मिलना चाहिए. Thiago Silva also, Ankit. Yeah. अरे सी ए थिंग. ओके, कौन से मैच ये हो रहा है? आपके जो बैकग्राउंड दिख रहा है ना देवेश, उस मैच का हो रहा है बेसिकली. ये सेकंड हाफ हो रहा है, सेकंड हाफ ऑफ एल क्लासिको में अभी हुए हैं. सेकंड हाफ में 28 मिनट सेकंड हाफ का वॉच टाइम है बेसिकली. तो मैं मीनवाइल, एक सेकंड भाई, आर्सेनल फुल टाइम हो गया, मैं बोलना भूल गया. आई नो हो ही गया था ऑलमोस्ट उस समय भी. ओ मैन, आर्सेनल टॉप ऑफ द टेबल, गेट ऑन द वीक. कितना ट्रोल लेंगे भाई अपन. अरे क्यों? तारक मेहता को उल्टा चश्मा वाज बोरिंग? अच्छा, तो आपने पहले नहीं देखा डेरेन? आई एम सरप्राइज्ड. आप अगेन डोंट जज बाय 1 or 2 एपिसोड्स ब्रो. वॉच एक प्रॉपर लाइन से देखिए, आप 7-8 देखिए, आप समझ जाइए. यू विल गेट द पहले. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओवर द इयर्स नो, आई हैव नॉट वॉच्ड सो मच देन व्हाट आई वॉच्ड मोर रिसेंटली. सच में बोलता हूँ.
हाँ, तो इसलिए मैंने वही है देवेश, मैंने उसका एफटी नहीं डाला ना, मतलब वो आई थॉट इज अंडरस्टूड एज रियल मैड्रिड एफसी बार्सिलोना, और बैकग्राउंड उसका डाला है, तो आई होप इट्स फेयर, नहीं? तो ओके, कामाविंगा कमिंग ऑन। रियल मैड्रिड, व्हाट टैलेंट ब्रो भाई, कामाविंगा गोल्डन बॉय एनीवन? क्या लगता है, मिलेगा नहीं मिलेगा? बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा यार कल। आई थिंक गोल्डन बॉय इज समथिंग व्हिच एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर, क्योंकि सब लोगों को पता है बैलन डोर कौन जीतने वाला है। दैट विल बी द बिग डील, ऑफ कोर्स उनके 11 पिक करते हैं वो सब। ऐसे ही होते हैं, आई नो दैट। भाई एक आपको याद है लास्ट टाइम ही था शायद, हाँ लास्ट टाइम ही था ना, मेंडी को दिया गया था बेस्ट गोलकीपर समथिंग, एंड वो यासीन ट्रॉफी, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और द अदर वे अराउंड, मेंडी को पिक किया था टीम में आई थिंक, एंड यासीन ट्रॉफी मिला था डोनोरुमा को। आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, इट वाज लाइक जोक ब्रो, सच में। कर्टिस जोन्स अपना मुंह क्यों छुपा रहे बैकग्राउंड में यार? लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, टॉक अबाउट बोरिंग टेरेन, मुझे लिवरपूल मैन सिटी गेम थोड़ा सा अंडरवेल्म हुआ हूं मैं इस हाफ में, आई मस्ट से। ये मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग लाइक क्रेजी रेस, आई नो लिवरपूल हैवंट बीन दैट टीम, बट मैं एट एनफील्ड आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट। देखते हैं सेकंड हाफ और टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ होगा। यहाँ पे मैन सिटी क्रिएटिंग अ चांस एंड फोर्डन विद द बॉल, नहीं, एकी विद द बॉल, बैक टू De Bruyne ने मारा शॉट लेकिन गया लिवरपूल प्लेयर who has cleared it in Elliot. Okay, very interesting that again people, भाई जो भी ज्वाइन कर रहा है, do not forget to like the stream, absolutely would love it. अगर आप लाइक करिए भाई, लाइक्स बहुत ही कम हुए, पता नहीं व्यूज कितने हुए होंगे, बट आई वाज होपिंग दैट लाइक्स और भी ज्यादा हो जाए, वी कैन गेट टू एटलीस्ट, वी डिजर्व 100 लाइक्स इफ नॉट मोर। या एग्जैक्टली, आई थिंक शेयर किया था किसने, अभिषेक ने, लेकिन हाँ दैट्स फॉर रियल, मैंने भी सुना है। देखिए यार, मैं वो गेम मतलब आई विटनेस तो नहीं था उस गेम का, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ओके भाई, 200 टारगेट था भाई, अपने 65 भी नहीं रीच किए, एम्बैरेसिंग, बट कोई नहीं। रफीना इतना अर्जेंसी में क्यों रहता है बॉक्स से बाहर से मारने के लिए? भाई इसलिए होता है देवेश, मुझे लगता है बिकॉज रफीनिया को करेक्ट स्पॉट में खिलाते नहीं है जावी इनफ। वहां पर जावी का बायसनेस बोल दो, जावी का ट्रस्ट बोल दो, ज्यादा है टुवर्ड्स अ डेम्बेले, नॉट दैट डेम्बेले डजंट डिजर्व समथिंग, लेकिन मुझे लगता है अ बिट टू मच ट्रस्ट करते हैं डेम्बेले को। आई फील ही शुड नॉट ट्रस्ट हिम एज मच, रफीनिया शुड गेट अ लॉट ऑफ चांसेस इन दैट साइड, और वो दे कीप चेंजिंग, वो इट्स नॉट गुड फॉर देम। मेरे लिए शुड बी वन और द अदर, दोनों नहीं खेल सकते, सिंपल एज दैट देवेश। तो वो लाजमी है कि वो ज्यादा ईगर हो जाएंगे। भाई मॉडरिच गोइंग ऑफ एंड गेटिंग अ स्टैंडिंग ओवेशन, आई बिलीव सो। What a performance, bro. Luka Modric coming off and Kamavinga coming on. Look at that smile on the face, and that tells you all कि भाई जो मॉडरिच ने किया है आज, बाप रे। लेकिन arguably Cruz had a better game, नहीं, in terms of passing. अरे यार, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। रफीनिया या प्रीमियर लीग सूट्स हिम बेटर। नहीं, आई थिंक बारसा टीम में भी आई सॉ हिम, आई नो इट वाज प्री सीजन, लेकिन अच्छा किया था यार, काफी अच्छा किया था। आई थिंक ही वो फिट हो सकता है, इट्स जस्ट दैट ही इज नॉट बीन प्लेड इन द राइट विंग इनफ कंसिस्टेंटली, लॉन्ग इनफ इन गेम्स, बहुत ज्यादा स्विच कर रहे हैं, तो समहाउ यू नो ही इज नॉट गेटिंग एग्जैक्टली पासेस, केमिस्ट्री बन नहीं रही है, बट लेकिन हमने देखा था ही कैन डू दैट फ्रॉम दैट विंग। क्रूज को रिटायर होने से रोकना पड़ेगा। नहीं यार, आई थिंक, अरे ये गोल होना चाहिए था बारसा का, मिस कर दिए। आई थिंक लेवेंडोव्स्की विद हाफ चांस, यू कैन आर्ग्यू, आई थिंक मोर देन हाफ चांस ऑफ द राइट विंग, एक क्रॉस आई थी और रादर पास आई थी, और ही शुड हैव स्कोर्ड माय ओपिनियन, बट कोई नहीं। अभी कितना टाइम बाकी है यार, एक सेकंड देखिए, चलो 10 मिनट और बाकी है, 10 मिनट कंप्लीट करके जाएंगे यार अपन। यस, हाफ टाइम तक नहीं मैं ढकेल सकूंगा लिवरपूल सिटी, बिकॉज आई नीड टू हैव ईट समथिंग एज वेल। लेकिन हाँ, अगेन मच लव यार पीपल, आई कैन नॉट थैंक एवरीवन इनफ भाई, आई ऑलवेज डू। लेकिन अगेन आप लोग जानते हो यार, मतलब हम क्यूरेटेड कंटेंट भी बहुत लाते हैं, होपफुली यू नो वी गेट टू दोज नंबर्स दैट वी यू नो रियली सीक विद ऑल योर हेल्प एज वेल, ऑफ कोर्स इट्स इफ वी ग्रो यू ग्रो, तो वही है, सिंपल सा पॉइंट है, एंड वाइस वर्सा। विल यू वॉच टुडे मिलान मैच? भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, इतना मैडनेस रहा है ना आज, मतलब आई एम सो टायर्ड ब्रो, सच में बोलूंगा। लेकिन इंटर मिलान विनिंग 2-0 इज समथिंग दैट मैंने नोटिस किया है, एंड दैट इज नॉट ग्रेट न्यूज, लेकिन यू नेवर नो, इंटर मिलान माइट नॉट बी कमिंग बैक, आई डोंट नो। वॉच तो करेंगे यार, हम वॉच करेंगे, वॉच अलोंग नहीं करेंगे।
क्योंकि कल भी हम करने वाले हैं लाइव। जावी भैया ने अच्छा गिफ्ट नहीं दिया मुझे, अरे कोई नहीं यार, जावी गिविंग मी लैम्पार्ड वाइब्स। भाई देखिए लैम्पार्ड डिफेंसिवली इश्यूज थे, जावी का आई वुड से इट्स ऑलमोस्ट द फैक्ट दैट थोड़ा सा ईगो में बोलूंगा, बहुत ज्यादा मतलब reliance on certain players and not going a little bit pragmatic is a little bit issue. Talk about Lampard. Lampard को पता है when he goes to Everton उसको क्या करना है, and that's what he does. Not that he's got results, but I'm just saying. तो I think Xavi is still learning on the job as well. भाई उसका first big club है यार. Al-Sadd you not really say them right as much as you would like to, but reality वो है, European football is different, especially बारसा, जो उन्होंने खुद में बोला है दैट देखिए बारसा में कोच होना इज अ लूज लूज सिचुएशन, आपको नहीं मिलने वाली है, इट्स अ क्या बोलते हैं, थैंकलेस जॉब। जावी आउट, अरे भाई नहीं नहीं, इट वुड बी अनफेयर, आई बिलीव इट्स अनफेयर भाई। अभी भी इट्स अ फर्स्ट मैच दैट दे लूजिंग इन ला लीगा एंड दे लूजिंग, लेट्स बी ऑनेस्ट। लैम्पार्ड का एक अंदर एक चीज वो चांस पे खेलता है रिस्क लेके। नहीं वही है, यू नीड टू चेंज थिंग्स अ लिटिल बिट। आई नो मिडवीक में ट्राई किया था जावी ने टू गिव क्रेडिट टू हिम, बट इन माय ओपिनियन डेफिनेटली जावी नीड्स अ लॉट ऑफ एज इन लर्निंग, एंड ऑफ कोर्स दिस टीम आल्सो भाई काफी यंग है, तो यू कैन आर्ग्यू दैट एज वेल। माय क्लासिको प्रेडिक्शन इन द मड MyKyle क्या ही तो बोलूं यार। रोबो मैन मिस यार, रोबो मिस लुक्स लाइक, मैं तब उस सेकंड में शायद दूसरा मैच देख रहा था, फरहान टोरेस ऑन राइट विंग मच बेटर देन, वाओ दैट्स अ वेरी स्ट्रांग कमेंट, मेसी इज गुड कमिंग फ्रॉम अ बारसा फैन। भाई मुझे लगता है ना रफीनिया को कंसिस्टेंटली आप खिलाओ ना राइट विंग में, आई थिंक he'll do a brilliant job. It's just the fact कि डेम्बेले को ज्यादा ट्रस्ट दिया जा रहा है कंपेयर टू रफीनिया, और बहुत एंशियस इसलिए हो रहे हैं रफीनिया। फरहान टोरेस एज मच एज वो खेल सकते हैं राइट साइड में, आई स्टिल बिलीव दैट यू नीड समवन मोर डायरेक्टनेस, तो वहां पर फरहान टोरेस विल हेल्प मोर ऑन द लेफ्ट विंग इन माय ओपिनियन। अगेन आई थिंक इट्स टाइम टू स्टार्ट फरहान टोरेस और फाटी, 100% अग्रीड वहां पर। तो जावी को जज मत करो, सामने एक स्ट्रॉन्ग हाथी है, इट्स ओके यार। हाँ मतलब मैं बोलूंगा डेफिनेटली जावी आउट इज नो, लेकिन जावी क्रिटिसिज्म यस, मतलब ही इज नॉट, मतलब दूध का धुला नहीं यार, सच में बोलिए, मतलब क्लियर है दैट ही हैड अ फेवरेटिज्म समवेयर, बट इंजरीज यू कैन आर्ग्यू यस, बट डिस्पाइट दैट भाई आप नेगेटिव हुए थे फॉर अ सेकंड इन दैट इंटर मिलान गेम व्हेन यू वेंट बैक टू 4 एट द बैक। सिर्फ एक मैच हारेंगे तो ओके, वर्स्ट डिफेंस 15 16 18 19 19 20 चूज वन। चेल्सी का पूछ रहे हो ना डेरिन भाई, चेल्सी का तो 15-16 से वर्स क्या ही तो बोलोगे। हाँ सारी के अंडर भाई वी वर टेरेबल डिफेंसिवली, नॉट दैट लैम्पार्ड के अंडर वी वर ग्रेट इधर, वहां भी, बट लेकिन लैम्पार्ड के अंडर आई थिंक इन डिफेंस ऑफ लैम्पार्ड I would still say that by lot of players first weren't signed, and then when they were signed they were very new. Plus Kepa in the form that he was in. I think Sari ke under Kepa was good, but despite that, I think we considered 6 against City. I remember, bhai. But हाँ, it has to be 15-16 for me. बारसा गोल हो गया, अरे मैं मिस कर दिया यार भाई, इज अ कमबैक कमिंग ओ भाई मैं मिस कर दिया मैन, वही होता है ना जब आपका चार्ज नहीं होता एक डिवाइस। कोई नहीं, मैं बाहर तब तक वही यही देख रहा था मैच, लेकिन ओके चलो आई गॉट अ चांस टू सी दैट फाइनली यार, लकीली भाई। फरहान टोरेस क्या बोला था मैंने यार, फरहान टोरेस इट्स टाइम टू स्टार्ट फरहान टोरेस, आई वुड से, हाँ नॉट जस्ट वन गोल के लिए, पर जनरली मैं बोल रहा हूँ कि वो डायरेक्टनेस इज समथिंग दैट दे नीड मोर इन माय ओपिनियन, एटलीस्ट नॉट 4-0। विशाल गुड वन चूज वन, डॉन कार्लो चेल्सी और जोजे चेल्सी, विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट आई वुड गो विद जोजे चेल्सी ऑफ द फर्स्ट एरा, लेकिन डॉन कार्लो इज वेरी क्लोज। हाँ लेकिन आप बोलोगे विच वाज बेटर टू वॉच in terms of basically just footballing skill wise, then it would be Don Carlo, but which I would pick any day Jose, because I thought generally that was a better balanced side, or again I loved watching that, of course मेरे favorite players भी थे उस समय comparatively, Javi is making okay Barcelona Spanish national team, there वहां पर विशाल थोड़ा सा स्पेकुलेशन है कि इट मे नॉट बी राइट। आप देखिए ऐसा नहीं है कि यार ही हैज नॉट यूज्ड पीपल आर नॉट इंटरनेशनल्स फॉर स्पेन यार, तो थोड़ा सा बायसनेस दिखा है, लेकिन डेम्बेले के प्रति बहुत बायसनेस है, डेम्बेले इज नॉट स्पेनिश,
ओके, यस बिल्कुल, मैंने अभी देखा भाई, फरहान का नाम लिया और गोल। आज पता नहीं हो रहा यार, दूसरे चेल्सी के स्ट्रीम में वो ये हो ही रहा था। मैंने कोविचिच का नाम लिया, सब्स्टिट्यूट किया उसको, देन मैंने बोला कि यार चेल्सी में मेसन माउंट के अलावा भाई और कौन है राइट फुटर फ्री किक, और मेसन माउंट ने लिया, स्कोर कर दिया उसी सेकंड में। दैट लिटरली हैपेंड, एंड यस पीपल, आई एम नॉट इवन जोकिंग, माइकल वाज देयर इन द चैट, मुझे याद है एकदम। Want to report Memphis Depay takes a salary from Barca and plays for Dutch national team. Oh my god. I don't know what to say there, but I think to be fair to him, he's had a lot of injuries as well, nahi? थोड़ा सा soft bias है, Dutch bias, but I must say यार, finally Xavi का जो moment था भाई, Mendy should have done better. Would you argue that Ferland Mendy? I think he should have. थोड़ा सा एक moment के लिए Ferland Mendy was switched off. So you can argue that, लेकिन again nice finish, nice positioning by Xavi. Sorry, Xavi बोल रहा हूँ मैं, कहाँ हूँ यार, Ferran Torres. Xavi pitch पर नहीं आया, people for them wondering, but please tell me someone, how is Sergio Roberto still on the pitch? How was he on the pitch by first leg में? Second leg में when he was actually doing better, then he changed him back to right back. Few people kind of want Sergio Roberto as a right back. I have no idea. Yes, you don't have a right back, then just go back three. Simple as that. That's what you need to do. चलो यहाँ पे लास्ट 4-5 मिनट बाकी है, अभी भी गोल होने वाला है। अरे भाई, गोल होने वाला है। इज इट अ पेनल्टी? ओ माय गॉड, व्हाट अ फिनिश। मैंने अगेन इट हैपेंड, पीपल सर्जी रोबर्टो का नाम लिया और ही वाज देयर। ऑलमोस्ट ही वाज देयर। वाज इट अ हैंडबॉल? One second. Oh no, it was very harsh, not a handball. Mendy ka was in natural position. लेकिन भाई फ्रैंकी डियोंग, what a ball bro, what a ball. और फाटी, nice try bro, I must say, nice try. अरे यार, absolutely, Matt was right, man. Matt is really late, I know, in your place, but big up to Matt, absolutely big up to Matt. Again, Matt has been one of them जो हमेशा, not just from now, हमेशा has been saying, and yeah, I know he's a Kepa lookalike, or rather the other way around, but Matt has always backed Kepa. But अभी भी Matt, I would say that only thing मैं थोड़ा सा अभी भी I'm a little bit concerned about is when the ball goes inside the box, in terms of those crosses, where he's handling them. Okay, the warrior Rudiger coming in, and look at his attitude, the way he's coming in. और जरूरत भी है अभी, Benzema going off, Asensio coming on. Interesting. So they are going a little bit defensive. लेकिन I think कोई भी manager करता है इस moment में. I think it's just about few minutes left. And Benzema also has not been 100% match fit overall अभी तक भी. So that's, I would say, penalty नहीं है. Handball, nahi, it was hit his shoulder, and that too, even the shoulder was literally clinging to his chest. जो बोलते हैं ना, that is what it was. मार्श रूडिगर, या बिल्कुल. चलो, Matt believes that he still gets better of the opposition. But you have to give to Kepa. Bhai, Kepa actually today, not only did he save us losing points, but in my opinion, he saved us the disgrace that we would have got. Trust me, it would have been a battering in that first half if not for Kepa. I agree there, absolutely. But again, it's just a few games now. Give him that confidence. Hopefully, he gets that back as well, big time. यहाँ पर एक फ्री किक हुआ है for whatever reason. What is happening? Or is it an off the ball thing? क्या हुआ है यहाँ पर? भाई, it's a penalty. Penalty shout for Real Madrid. Okay, not a penalty यार. Come on. भाई, अगेंस्ट एरिक गार्सिया, रोड्रिगो का आई थिंक अपील था. नहीं यार, मेरे लिए नहीं है पेनल्टी, रियल मैड्रिड का. बट वी आर इज आस्किंग हिम टू टेक अ लुक, और व्हाट? डोंट टेल मी. ओके, फर्स्ट दे चेकिंग ऑफ साइड. अरे पैर टच हुआ यार एक एंगल से. अरे 100% है यार, पैर ऊपर उसके फुट पर था. हाँ, वो ज्यादा नाटक किया, दैट इज रोड्रिगो, वो मैं जरूर बोलना चाहूंगा. इट वॉजंट एज बैड एज हाउ इट लुक्ड, बट भाई था यार, पैर टच ही नहीं हुआ. हिज फुट वॉज देयर ऑन टॉप ऑफ हिज फुट, दैट इज रोड्रिगोज फुट फॉर जस्ट अ सेकंड. और इज दैट इनफ? इट इज इनफ. या
he won the ball. Rodrigo won the ball and Eric Garcia ने स्टेप किया है clearly on Rodrigo's foot. तो भाई बारसा का जो कमबैक का होप था looks like it's going out of the window. Yeah, it is a penalty, people. It is a penalty. भाई साहब, that's offside. बोल रहे हैं मेसी इज गोट, लेकिन यार लगा नहीं मुझे, सच में बोलो तो एंगल पता नहीं ढंग से दिखाई थी कि नहीं, मुझे नहीं लगा। हाँ, वो एक्टिंग जरूर किया है, लेकिन कोई भी फॉरवर्ड करता है सच में बोलो तो। हाँ, अनलेस योर मेसन माउंट, जस्ट सेइंग मेसी इज गुड, आप गुस्से होंगे आई नो। भाई ऑफसाइड लेवल लगा मुझे तो, आई डोंट नो। हाँ, लग तो रहा भाई। Mark Kukurea has as a left center back can work but didn't work so well today, so we had to adjust. The balance of the team is something we have to look at and find solutions. भाई solutions ये है कि भाई आप लाओ एक DM, you need a cover. By midfield is missing in games. Rodrigo taking the penalty because obviously Benzema is off the park. That's going to be interesting. Rodrigo भाई अच्छा रन अप लेते हुए कुछ तो, और भाई ऑलमोस्ट एक टच कर दिया टर स्टेगन ने, लेकिन नहीं। It is a Real Madrid goal and looks like it is a Real Madrid win as well on the night, despite a late effort from Ferran Torres goal for Barcelona. I think it's enough to say कि यार El Clasico this time belongs to Real Madrid, or in my opinion, is it too early to say that Real Madrid are favorite for the La Liga? I don't know. I would say it is probably not too early. That's my opinion. ये मैंने nothing too much about the team, about his role in the team. He works so hard. That is Mount. He has the quality, the ability to score assists. Thanks, Darren, for sharing it. Please show me your evil smile. क्या ही तो बोलूं यार, लेकिन ऑनेस्टली सच में बोलूं यार, मुझे चाहिए था एक प्रॉपर 3-all with 2 red cards kind of ड्रामा गेम, सच में बोलूं तो एल क्लासिको, दैट्स व्हाट आई एंटिसिपेटेड। मतलब वाज इट दैट हीटेड, बोलिए आप लोग। आई डोंट थिंक इट वाज दैट हीटेड, सच में बोलूं तो। हाँ, रियल मैड्रिड हैज बीन क्लास, especially I think Modric and Kroos did really well in my opinion. Personally I feel that they have ruled that midfield. Maybe that is the reason. Or of course, when you have a Valverde or Benzema, by Valverde with his engine, तो and the kind of finish he had, भाई बोलना पड़ेगा आपको। अभी भी मैच चल रहा है यार, रेफरी बंद कर दो अब, और क्या खिला रहे हो। गोल हाला मैड्रिड सुपर रोड्रिगो, अरे वन ड्रामा नहीं था। हाँ, मतलब वही है। भाई रियल मैड्रिड फैंस आर एक्सल्टिंग भाई, ऑब्वियसली भाई दे विल बी सो एक्साइटेड अभी, कंसिडरिंग कि लास्ट बार क्या हुआ था सैंटियागो बर्नाब्यू में, इट वाज 4-0 रिमेंबर, एंड दैट इज व्हाट दे हैड टू टेक फ्रॉम सो मेनी मंथ्स बैंटर, जो भी बोलो। यस, दे वन द लीग, बट दे वन द चैंपियंस लीग, लेकिन फिर भी आई थिंक वी नो दैट बार्सिलोना फैंस दे डिड ट्रोल, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। ऐसा नहीं कि दूसरे भी नहीं करते, वो लोग भी करते, लेकिन रियलिटी ये है दैट रियल मैड्रिड को देना पड़ेगा क्रेडिट। ये क्या हो गया, जस्ट गॉन यार, यार हाँ यार, रियल मैड्रिड ने पेनल्टी जीत ली थी। इट वाज अ एरिक गार्सिया फुट चैलेंज ऑन द फुट ऑफ रोड्रिगो विद द पेनल्टी, पुट्स इट इन डिस्पाइट टर स्टेगन गेटिंग अ टच, क्लोज था लेकिन कोई नहीं। भाई अपन ना बारसा रियल मैड्रिड वाला गेम, और अदर रियल मैड्रिड बारसा का मैं रिव्यू अभी नहीं दूंगा, दैट रिव्यू आई विल प्रॉब्ली बी गिविंग इट लेटर ऑन, आई होप दैट्स फाइन। I'll probably release a video कल, is what I'm guessing. अभी यार मैं I'm literally live non-stop from 4 p.m. just so you all know. तो I'll take a little bit of rest अभी, and होने वाला है अभी गेम बस, and I'll end the stream अभी, right? But हाँ, again big shout out भाई, सब लोग लाइक कर दीजिए, बाई चांस अभी तक नहीं किए, will mean a lot to me. Yes, कल हम करने वाले बैलन डोर कवर, do not forget that. Before that I'll try and do an FPL stream or a preview stream generally for the Premier League of Tuesday night onwards. लेकिन हाँ, मैच खत्म हो गया है। लास्ट एल क्लासिको 4-0 था क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अरे बाय देवेश, एब्सोल्युटली सिटिंग माय बेड एंड डिडंट मूव अंटिल द फाइनल विस्टल बिकॉज़ आई डिडंट वांट टू जिंक्स। हाँ, होता है भाई, डेरिन मेरा भी होता है काफी। या आज चेल्सी का मैच मिस किया, टॉड बॉली मुझे माफ नहीं करेगा। ओके, कोई नहीं यार आशीष, वापस से देख लीजिए आप। लेकिन हाँ, एज थिंग्स स्टैंड भाई, हाला मैड्रिड विल बी द टॉक ऑफ द टाउन अभी के लिए। नॉट दैट आई एम सेइंग दैट, लेकिन वो रियलिटी है। बारसा लॉट टू लर्न, आई मस्ट से, एटलीस्ट दे केम बैक ट्राइंग, तो क्रेडिट वेयर इज ड्यू। लेकिन आई थिंक जावी नीड्स टू गो टू द ड्राइंग बोर्ड। अगर बाय चांस वो लूज करते हैं एनी मोर गेम्स इन द ला लीगा, खत्म, दैट्स व्हाट। हाँ, लॉट ऑफ डेब्ट दैट दे टेकन, दे विल इन्वेस्ट इन जनवरी आल्सो, मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा।
But again, much love to everyone. Congratulations to Real Madrid fans. Congratulations to fellow Chelsea fans. He's just about scraping a victory despite the scoreline, flatters us. लेकिन हाँ, always good to get clean sheets no matter how. Kepa, big up, absolutely. Bhai, congratulations to Arsenal. As much as I hate to say it, लेकिन they are top of the table, absolutely. तो देना पड़ेगा. Again, where the credit is due, we cannot deny that. But हाँ, Manchester United losing, dropping points is not great. That's something that maybe is an issue with them. Stop start जो हो रहा है. But a lot of others जो हम cover कर रहे थे, I know Liverpool भी है. हम उसका वॉच अलॉन्ग हमें कमिट नहीं किया था, लेकिन कोई नहीं, अभी तक 0-0 है. तो आई लेट्स होप दैट वी हैव अ गुड गेम, सिंपल एज दैट. चलो अभी के लिए बाय, टाटा, एंड अगेन बाय. इट्स अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी. डू नॉट फॉरगेट द लाइक बटन्स, एंड वी आर बैक लाइव टुमारो एज वेल एज शॉर्ट्स भी कर रहे हैं दोनों ही चैनल में. वर्ल्ड कप जा रही है.